38 participants is there, na? Yes, sir. We'll wait for 2-3 minutes, and in the meanwhile, I'll start the broadcast on YouTube also, and I'll share the link in. I don't want to share the link in the WhatsApp group right now because then the participants won't join the Zoom Okay. meet. So 38 participants is there, na? yeah, sir, the number will increase. I've seen it increasing up to at least 80, 90 in uh, in a The couple of. total number of participants is 144. I think so. Uh, the total participant joined at I think so. Okay, it's 78 or sometimes 80. Yes, Yeah, generally that's the figure we are yeah, reaching. yeah. On the first day, it was close to 100, 110. Yesterday, it was close to 70 to 80 consistently. Let's see how much participation we get today. Good morning, everyone. Welcome to the day 3 of this short-term training program on bringing library services to remote users during COVID-19 pandemic. We today have a talk from Dr. T.S. Kumbar from IIT Gandhinagar. He'll be talking about a very relevant topic on open textbooks, followed by Dr. Jivesh Bansal from Punjab University. He'll be talking about academic integrity and research ethics, followed by Dr. Anand Bairappa from Indian Institute of Sciences, Bangalore. He'll be talking about ebook content providers and ebooks. In the last 1 year or so, I have seen have taken so much importance since students were not in campus. So every librarian was trying to arrange ebooks, especially textbooks for students. So his talk will be equally relevant. Dr. Nabi Hassan will then take care of the last 2 sessions. In the first one, he'll talk about libraries and library professions in the new normal post COVID-19 pandemic. It means, and then session 14, the last session, will be tools for maximizing academic visibility and impact of research output. So we have pretty good talks coming up today. I believe all of you are excited and eager to learn. We have a couple of announcements to be made by Dr. S.S. Choksi before we start on with today's session. Sir, over to you. Okay. Uh, Good morning, Kumbar Saab. Good morning, participants. Myself, Dr. S.S. Chokse from Rajiv Gandhi Praudhogiki Vidyalaya. I am a coordinator of that program. Now, that program is funded by the AICTE, and exams also conducted by the AICTE and RGPV. There is some conditions is there. If you are attending that program, your attendance must be at least 80%. लेस देन 80% हम आपको एग्जाम में बैठने नहीं दे सकते. आपकी अटेंडेंस ये आप श्योर हो, जब भी लिंक ओपन हो आपको अटेंडेंस फिल करना है. हर सेशन की लिंक आपको भेज दी जा रही है. लेकिन इसके बाद भी अभी तक मेरे को ये नॉलेज में आ रहा है कि कई आप लोगों के पार्टिसिपेंट जो हैं आप लिंक फिल नहीं कर पा रहे हैं, जबकि आपको 1 घंटे आपको लिंक ओपन होता है. इस बीच में आपको अटेंडेंस लिंक मस्ट हर सेशन की इंडिविजुअल फिल करना है. इसके अलावा जो कैंडिडेट्स जिनका अटेंडेंस 80% होगा उनको हम एग्जाम्स में क्वालिफाई कर के लिए अपीयर करेंगे. देन जो एग्जाम्स है उसका जो मिनिमम जो है 100 क्वेश्चंस हैं, 50 क्वेश्चंस हैं. एवरी क्वेश्चन हैविंग ए 2 मार्क्स. तो हर प्रश्न के 2 आपको नंबर हैं और आपको 60% मार्क गेन करना जरूरी है. और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको ऑनलाइन टेस्ट होगा जो मल्टीपल चॉइस पे होगा और हर सेशन पे आपको 2 या 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. तो ये आप नोट कर लें कि आपकी अटेंडेंस 80% होना चाहिए. एग्जामिनेशंस में आपको 60% मार्क आना कंपलसरी है.
और ये जो क्वेश्चंस हैं जो मल्टीपल चॉइस के होंगे, और मल्टीपल चॉइस में आपको 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. 50 क्वेश्चंस, एवरी क्वेश्चन हैविंग ए 2 मार्क्स. तो इस प्रकार से टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 100 होगा. So all the participants, I think so, if you have any problems, you have any query, you call in my email address, librarian@rgq.net. I think so, the expert is very knowledgeable. Kumbar Saab is IIT Gandhinagar. He is an expert in in the field of library science and extension of library services now. तो मैं अब आगे कुंबर साहब को कॉल करता हूं. कुंबर साहब, वेलकम टू RGPV AICTE Joint Teachers Training Program for Librarians, and that program is run by the AICTE and RGPV, and it's a pilot project of AICTE. If that program result is very good, at that time AICTE run that programs to all over India in IITs and NITs also. Over to Kumbar Saab. Welcome to Kumbar Saab. Sir, can you please unmute your system? Yeah, okay. Am I audible now? Yes, sir. We can't see you, but okay, I'll just start my video. Is that fine? yes, perfect, sir. Okay, I'll just share my screen before I screen sharing is disabled. Can you please? Can you please try again? Can you please try again? Yeah. Is it visible now? Is my screen visible now? Yes, sir, we can see your screen, but I also request you to disable participant annotations. In order to do that, please click on the More button. You will find it close to share screen. Okay. This Close to is share screen. You will find a More button with 3 dots. so that is okay. Click on that, and you will find disable annotations by others. So I've just clicked on that. Is it? I don't know whether it's working. I'm not able to make out. I'll just expand my this one. 1 minute. Okay, more with the orange color. Oh, disable participants annotation. Okay. Thank you so much, sir. The platform is yours. Thank you. Okay. Thank you. So if you also allow me, I'm sorry, but I do have your profile with me, and I understand many of the participants already know you from your previous talks, and you are a librarian of highest stature in the country. But if you allow me to please also introduce you to the participants. Dr. T.S. Kumbar, he's currently engaged in Mr. Mohit, you can be brief, I think. Yeah. I'll take just 2 minutes, sir. So, Dr. T.S. Kumbar, for those who are meeting Dr. T.S. Kumbar for the first time, he's the librarian at IIT Gandhinagar, engaged in setting up state-of-the-art library services. Prior to this, he has worked as the chief librarian at DA IICT Gandhinagar, where he has set up the library services from the very beginning. He has also worked with Infinite Center as Scientist D, where he initiated a number of new programs, including Soul Software, e-resources consortium, union catalogs, electronic thesis and dissertations, document delivery services, retrospective conversion, and more. Before moving to implement, Dr. Kumbar worked as assistant librarian at IIT Bombay, supervised serials information services. He holds PhD in library sciences from Gulbarga University, for which he also received the gold medal. He's a recipient of Fulbright Fellowship in Library and Information Technology, American Library Association Fellowship, Canadian Faculty Research Fellowship. He is also a member of IATUL, Special Interest Group for Metrics and Research Impact,
He's also a member of Library Advisory Board, Council of ACM and IEEE USA. Sir, after you. Thank you. Yeah, good morning to all of you, and thank you, Mr. Sharma, for this generous introduction, and thank you, Dr. Chowksy, for giving me this opportunity for the second time to join you on this online platform to interact with colleagues from different institutions who have joined today. And as I said, this is the second time. Last time we were in person at the university to interact with you. Unfortunately, yeah, we are not able to meet you this time, but I think let's meet virtually over this platform. As you know, the topic that I have picked up is on open textbooks. Let me just move on. And some of these, just a little bit of this one introduction. So maybe some of you are already familiar with most of what I'm going to talk, but I think, what I'm trying to do is that give you a quick overview of what is happening in terms of the open e-textbooks all over the world. Okay, and so maybe questions we can take it up at the end. So let me just begin with, before going to the open textbooks, we will just touch upon what is OER, because open textbooks are part of the OER itself. And we will also try to familiarize with the developments that are taking place in the area of open textbook area. I'll be picking up quite a good number of examples from from the initiatives that have taken place all over the world. And also let's learn from which are the ones which are successful projects, and also see how we can use the collection that is part of this open textbook collection. And also and it's since there's a lot that is happening in the area of open textbooks, as the name suggests, these textbooks are open. One need not pay for these resources, but as a librarian, how we can go ahead and explore this collection and evaluate this collection and draw attention of our faculty members so that they can identify which one are suitable. Even if, at the end of this entire presentation, if you are able to, or if your faculty are able to pick up 5 or 10 titles from this entire collection, so I think we will have done a good job. So that's the whole purpose of this one. Unfortunately, most of these projects are from outside, but nevertheless, so if we are in the area of science and technology, many of these titles will be useful. Okay, let me begin with, so what do we mean by open educational resources? So this is a standard definition. 1 minute, how do I put off your this one? Okay, so I'm hiding your photograph. So let me just quickly run through this definition of open educational resources. So open educational resources are any type of educational material that are in the public domain or introduced with an open license. The nature of these open materials means that anyone can legally and freely copy, use, adopt, and reshare them. OERs range from textbooks to curricula, syllabi, lecture notes, assignments, tests, projects, and so on and so forth. So I think I skipped one earlier definition. So the SPARC is an important society which has been working on promoting the scholarly publishing. So they have this definition: open educational resources are teaching, learning, and research resources released under an open license. So when we say open license, it is basically referring to the Creative Commons. So that permit their free use and repurposing. Repurposing is nothing but adopting by others to suit our own context. So OER can be full courses, course materials, lesson plans, open textbooks, learning objects, videos, games, tests, software, or any other tool, material, or technique that supports access to knowledge. So these two are a very broad definitions of open educational resources.
So in nutshell, open education resources are teaching materials which are publicly available online, including textbooks, lecture notes, assignments, tests, audio, video, and animation. So anything that is of a scholarly in nature, which can be used for the academic purpose, which is openly available, we call it as a open educational resources. So textbooks fall under that, under the OER. Now, these resources are available in different formats, and also they are of a different type, as presented in the definitions itself. I will not go into the details. So this is obvious to everybody. And what are the advantages of OER? So it is easy to find because they are open. There is no restriction. They are not under the paywall. Okay, and they are clearly described that they are open accessible material. They are scholarly, and also they are clearly licensed by Creative Commons. There are no restrictions as such as to what you can do with those materials. So it's all clearly mentioned, and these are trusted. Anything which falls under the OER, especially when it comes to the open textbooks, when you really visit some of the important projects, these books are not just, somebody has written it and they are made available. They typically go through the same process that the printed books that go through. So there is a peer review, there is a editing, there is thorough checking before this content is hosted. They are trustable material. So they are easy to be modified because the author and the host themselves allow us to modify and use it to our own context. So freestanding, they are kind of independent. There are no tags attached to it. And as I mentioned, they are copyright free. So they are made available under the open license, that is basically Creative Commons. And they are basically recommended by the universities or someone who has initiated those projects. They have when they have created an open textbook, means our OERs, they are meant to a target group, and even this to whom these are meant have also been described under each OER. Now, why use open educational resources? As you know, particularly open textbooks save students money. You just look at how much each one of us spend on buying the textbooks. If these textbooks are made available on an open access platform, that will save a lot of money and also empower the faculty by giving them more control over their course content, because they get access to this content. They can modify, they can adapt, they can add examples. So basically they can contextualize for their own, to support their own teaching. So there are 5 important R's here when we look at the advantages of open educational resources. One is that author can retain the copyright of the content that he or she has written. Okay, and then it is reusable. You can use many times. There are no restrictions. The way how faculty wants to use in the classroom, they can make changes to that content and use it. So whether it is a chapter or more than a chapter, whatever material they can adopt, whether it is in their presentation, their notes, whichever way they want to use it. And they can also revise if there is some content which can be changed to, which can be updated, which can once again modified. So or take that into a different language, that can also be done. So, and the remix, use more than one, use this OER content or a chapter from a book or whatever it is. You can also remix with many of those other materials, not just the text, but also non-text material. So there is no restriction on distribution. It is easier to, most of these resources, since they are made available under the Creative Commons, they are openly available. We are allowed to redistribute in a way that we want, but one has to be careful about
what is the Creative Commons license permitters. There are 6 different Creative Commons licenses, under which particular license the content is made available. That is something that we need to keep in mind. So it is not that completely you can do what you want with the material that is in the open access module. But I think as long as they are made available under the Creative Commons license, so we need to look at under which license this material is made available. So now, having looked at what is OER, now let's move on. What is the definition of open textbook? So an open textbook is a textbook created using an open copyright license like Creative Commons, as I mentioned, and shared with no or low cost at the point of use for students, teachers, and members of the public. So most of the time, there is no cost actually involved. There could be at some point, some publisher hosts may have some membership fee, which is a kind of a nominal, just to recover the small amount of the cost that is invested. But that goes with the membership. It is not the student or teachers have to pay at the point of use. So then one more definition that is given by the Open Textbook Library, which is the largest collection as of today, is open textbooks are textbooks that have been funded, I'm underlining here, and published and licensed to be freely used, adopted, and distributed. So someone funds the national agencies, non-profit making bodies or universities fund to write textbooks and make them available in an open platform. So that's how this whole momentum is catching up now. Now let's move on. So like traditional textbooks, open textbooks are written by experts in the field. It's not that somebody writes it. It's a faculty who are teaching those respective courses, who are experts in that field, write these textbooks. They also undergo a process of peer review. And each project has its own set of guidelines as to how these material will be peer reviewed, and this varies from project to project. And they go through a professional editing and development. So it is not just it's a keyed in and content is prepared and hosted. There is a professional editing just to make sure that there is a readability, there are no errors, the formatting, fonts, everything is properly used to look like a typical traditional textbooks. So publishers and authors are paid for, the person who writes and the platform which publishes this textbooks are paid for by the funding organization or under a grant from any of the agencies. So most of these are, the projects that I'm going to talk are basically the funded ones. So they do not typically depend on sales to pay back their investment. They just use the money that is given as a funding to create that content and make it available. So it's not sales dependent because they don't sell this material at all. So they are freely made available. And now, why is there an interest in open textbooks? So I'm not going to repeat this slide. I already have said, stated the advantages in terms of the OER. This is more or less repeating the same thing here. I'll just try to skip this. Now, there are, as I mentioned to you, there are a number of notable global initiatives that are happening for the last few years in different parts of the world. So in South Africa, there is an educational project that is funded by Siavula. Okay, it started way back in 2002 itself to share open textbooks. So this may be not at the university level, but maybe started as a school level project. Okay, and provinces such as British Columbia and Ontario in Canada have funded projects to help scale and support university educators in the use and creation of open textbook. So there are quite a few projects in Canada that are ongoing and they are live now.
So Poland also has initiated a similar kind of a program, and also charitable foundations have funded foundations like Havlet, Gates, and Sailor Academy, and many more have been funding and supporting the open textbook development in different parts of the country, particularly US. And the Spark, which is promoting the scholarly publishing, a global coalition aiming to make open the default for research and education. That's the goal of this one. So there's a lot of that is happening in this area. I think it's important for us to track what are these developments and to what extent they are relevant for our own context and how best we can use these resources. Now, I'll start with some of these projects. After giving this background of OER and open textbooks, I'll just move on to quickly, share some details about some of the live projects. Some of you, as I said, may have already used and promoted these among your faculty members. Nevertheless, let's have a quick look at some of these projects. So there is one project, major one, called OpenStax. Okay, and so this is probably the largest project that is happening in the world. This is based in US, and as they say, they are peer-reviewed, openly licensed, and 100% is free. And largely they cover books, almost all areas. Even college level, they have been having the books, and even the 10th 11th standards, for them also they have the books. And these platforms not only offer the collection, they also give tools that they are using for creating the textbooks, and they also conduct the training programs. They also have the guidelines as to how one can go about designing the textbooks, writing the textbook, what it takes to take this one. So this is it's an good example to emulate and look at. And this is started by a university in US, which is called as a Rice University. And yeah, good number of collections are there, and you can see the math, science, social science, humanities, business, and essentials. Essentials are basically self-help kind of books, which are basic books, which are interest to most of the students and faculty members, right? So this is an important initiative to look for. And so many countries all over the world have been using, and I was just looking at, so many libraries in India also have started accessing this collection. In fact, we at our own institute, in one of the disciplines, a couple of books are adopted, particularly in biological engineering area. So that indicates that the books are qualitative, and so there is no hesitation to pick these if they are suiting to our own syllabus. And then there's a larger platform in US, which is called as an Open Education Network. So this is a huge platform where a number of universities, almost 600 universities, are members of this initiative. And they have come together and created an open textbook library, which is very popular. And I think many of you may have seen a lot of writings and announcements and all that. As of now, they already have 830 textbooks which are open. And I think it's good to have a look at this collection and see what is relevant to our purpose. I'm not going to open the books and show you. I think as I'm talking, some of you can browse through this collection, or maybe you can later on, spend some time and see which are the relevant areas on which you have the books here. And yeah, as I said, 600 plus campuses are represented. It is a kind of a membership organization. Each one contribute for writing the books and accessing, so that this platform is sustained, and they continue their activity of getting the books available on this platform. And yeah, okay, some more details about the same platform. And now there is another one platform
This is called Merlot. This is Cal State Universities in US, which has got a good number of campuses all over the state in California. They got some funding from funding in national funding agencies, and they have started this project called Merlot. This also hosts a good number of books covering all disciplines. Basically, these projects have been initiated to meet the requirements of their own large community of students and faculty. But since they are making it open to everybody, and we can always take a benefit of this collection. And you can just see the numbers there. Number of learning resources. This is not just the open textbook platform, but it is a platform for OER. It hosts a good number of open textbooks as well. You can see the numbers there: resources, registered members, member institutions, and the contributions from different people who have contributed to this platform in terms of OERs. Okay, and then yeah, this is how they do the rating also for each material, those who are using these materials. And so they are giving the those who have created, they have given the details, and who is the author, what is the title, and when it was created, and when it was modified, and also end users can give the ratings for these books. So that will also help in assessing the quality of these books. And you can see on the left side, the discipline-wise collection, and also the audience for whom these books are meant, right? And then there is another project by the State University of New York. New York is once again a large state. They have a number of institutions to support the requirements of teaching material. They have created this platform called Milne. I don't know how to pronounce it, but I'm just saying Milne Open Textbooks. This used to be known with a different name, but they have recently changed the name to what it is currently. And so this has, once again, a sizable collection, and these are growing every year. For the last couple of years, I've been tracking, the numbers are going up, and they are adding quite an interesting collection. Okay, there's another platform called EdTech Books. So these are also completely free. This is once again, a common platform where on people can publish the books. So this is a kind of this provides you a catalog of the open accessible books. Sorry, this I think I have inserted in between. So you can see the number of PDFs available, and all of this. This gives you some amount of statistics as to how many documents are available, and also which are available in ebook, and what kind of platform they support, and total number of uses, and all of that statistics. This will indicate that how frequently this material is used. And then, yeah, that's about projects initiated in US. And moving on to the another country, that's Canada. This is once again a state-funded project. This is in state of British Columbia. So they have created almost now 338 open textbooks. These are all part of the larger initiatives. So these are not just the funding for creating the ebooks, but creating an entire range of open educational resources for all the institutions which are funded by the government in the state of British Columbia. And luckily they are making it open to everyone. And so here is another opportunity to make best use of this collection. You can see a book here, Building Blocks of Academic Writing. I mean, this is something which is useful to anybody, and books on IoT. So they are picking up the interesting areas, looking at the large number of students who are taking these courses and creating this content. Now, there's another project in Canada itself that's called Open Library. And this is also, once again, funded by the state of the Ontario in Canada. And so this also is hosting
a good number of textbooks besides other reading materials. And it's a this is part of this same initiative. eCampus Ontario is a larger initiative for the state of Ontario. And then coming to UK, so UK has been discussing about creating e-textbooks and making them available, but they have not made much headway. And JISC, as you know, is one of the national agencies like InflipNet in India. They have actually recently tied up with a platform called Cortex, and for whom they are paying money but making the textbooks available free. But this is not an open textbook platform. But why I brought up this is that so UK is taking initiative to make the textbooks freely available and centrally funded. Uh, you know, this is initiative. And sometime in 2018, they kept on talking about how to go about creating e-textbooks and all that. There was some project, and they had a discussion. They came up with a report. But as of now, under the JISC, I think they have not created a content, but I think they are licensing the content. But for the universities, it seems to be free. Now, this is the same project that they talked about, and there is actually an important report if one wants to look at and what all the issues that they discussed to initiate a project, but it has not taken off as of now. Now, then there is an important publisher, University College of London Press. Now, this is one of the important university press in the UK. They have been making a good number of titles as open textbooks. Not all of their titles are available freely, but I think good number of titles, they are making it open. So this is something, once again, one can look at it, and especially focused on humanities and social science areas. But they do cover science and technology disciplines as well, but but focus is on humanities and social science. Now, University of California Press this is from US. What they do is you pay for publishing your journal articles. A similar way, this platform has been created. You want to author a book and you want to post it on the this platform, and you write a book and make it openly available, and you may have to pay for publishing as an author. So this platform provides access to the free textbooks. So this is a slightly a different model, but as an end user, we don't have to pay anything. We have to just access it. Someone, the university author writes a book, maybe funding comes from their own university or through other projects. The author pays to this university platform for publishing the books available. So and then this is another project, Open Book Publisher. This is once again non-profit making publisher. They are trying to, this is kind of self-publishing. So you pay for publishing your own book kind of thing. So it's a completely different model altogether. Then the Australia has also taken an initiative. They have come up with Open Textbook Initiative. So they have so far about 18 textbooks. This is also a centrally funded project, and some universities are participating, and so others are looking forward to participating, right? So this is basically to cater to the needs of Australian students. But then, access is free for others as well. I was mentioning that South Africa has we initiated a project way back. This is South Africa. Yeah, okay. So this is a Sailor.org initiative. This is an academy which is supporting this open textbooks. And then we have American Institute of Mathematics. They also have identified approved textbooks in the area of mathematics. And these materials are made available. This is a
This is a kind of a professional body which is supporting creating the content and making it available. This is basically the objective is to promote the maths among the college going students. Then here is some commercial entity which is also hosting the e-textbooks. At user end, these books are openly accessible. Quality is something that one need to check, but it appears that this is one of the widely accepted platform for accessing the open ebooks. It has a good number of titles, but once again, I think we have to use our knowledge and skills to evaluate these books. It's not that straight away we can, recommend to our faculty and students. Then there's a platform called Open Culture. I am not sure whether any of you are subscribing to this newsletter. One can subscribe and you keep getting every day some listing, and they also keep adding free textbooks, and they track the list of the textbooks that are available from all over the world, and they list, and this also serves as an important resource. So number is going up from year by year. Okay, then MIT, you all know, they are the pioneer to make their course materials available. And in addition to their own course material, they are also, they have, their own faculty authored books are being made available at free of cost. And then LibTrex is another major initiative in US. This is a public funded, and they already have a 398 textbooks and other related materials. So this is a kind of a voluntary project that has come up, but I think they are getting funding from different resources. Okay, that's about some of these initiatives. I have not covered all of the projects, but I've covered some to show an example that there are very interesting developments to track in the area of open textbooks, and I think we need to look at each one of them carefully and see how best we can use it for our own purpose, how we can promote amongst ourselves. So when there are so many OERs and open textbooks, how do you identify, how do you search these resources? So you know a title, but then faculty recommends a textbook. Why don't you buy 10 copies of this particular book? So now the next thing that is we go to Google and keep searching. So instead of that, so we should use a dedicated search engine created for searching the open textbooks and open educational material. This is called OSS. So this is once again a project funded by some international funding agency, and this actually this particular search engine connects to almost 117 OER websites. So if you have a title and you want to buy 10 copies, the best thing is to use this search engine and see whether are there a similar kind of a textbooks which are much closer to the title that you want to purchase, whether you can really pick and use any of those textbooks that are available on this 117 platforms. So this is a search engine dedicated for searching OER, right? And it has already indexed more than close to 4 lakhs records as such, right? And institutions which are supporting and participating in this whole initiative is 513, and this number is increasing. And this, I'm sure most of you are familiar because we have been talking about DOAJ. So there is a DOAB, and this has got now almost about 34,000 peer-reviewed books. So I'm sure this will also be a useful source for us to locate the books of our interest. If not exactly the same book that we want to buy, but at least somewhat closer to what we want to read and access. And then there is another search engine, that this OER Meta Finder. So this is also an interesting initiative.
somewhat closer to the first one that I mentioned. And then OER Commons, this is more towards schools, high schools, and this also is a kind of a aggregator. Um, uh, it's not a search engine, but it is an aggregator, and somewhat works closer to works as a kind of a search engine itself. So this is an interesting platform to once again explore and see what we can pick up from this collection. And then, yeah, there is an initiative and Open University from UK, and what they are doing is they are conducting the programs, they are training the people who want to write open textbooks, and also they are conducting the training programs as to how to adopt those materials and all that. So, and also they are conducting research in the area of open educational resources itself. So this is an interesting development once again. And then, okay, after having looked at these search engines, let's look at, somebody has come up with how do you evaluate which is a good textbook to adopt. So I'm not going to go into the details. What I'm presenting to you is, or sharing with you, is someone who has a wide experience in the area of designing and making, creating and providing access to the ebooks, has come up with these criteria using which one can evaluate the OER and specifically open textbooks. So this is something that we can always share with our faculty. And if you come across with any material on the web, particularly from some of these major projects, let's use these criteria and evaluate. And if they meet these criteria, probably they are kind of useful textbooks to look at and see whether they can be adopted in our context. So and some developments in as far as India is concerned, and I'm sure maybe you're all part of some of these initiatives, or you are subscribing to this blog, or you have been frequently visiting. This is a broader platform, not much to do with e-textbooks or OER, but basically to push the movement of open access in India, or create awareness. This platform has come up. And so this government of India has set up this platform, NROER. This is supported by the government of India, where you have quite a good number of e-textbooks. Particularly, this is in the context of the schools. Most of the NCERT and state education boards books are made available here on this platform. Now, so this we are all familiar, day in and day out. We have been using this, and so we need to we cannot ignore this platform, because it is picking up all the metadata about the free textbooks that are available within India and outside. I think this serves as a gateway from India to access the OER materials. So I think I'm almost at the end of my presentation. So open textbooks, so this is an emerging area and is an important opportunity, and we need to look forward and track the developments that are happening, because we cannot ignore, there's a lot that is happening. There are peer-reviewed books that are being published. And most of these projects that I have presented to you are very successful projects. They are in 5th, 6th year, or almost a decade old. And the acceptance rate is quite high. If you look at the number of institutions who have adopted these textbooks is quite high. The number is going up. And so cost benefit has been demonstrated by these projects, because they have invested less money, but then made it open to everybody, so that more number of people can benefit from this content. So the models, tools, technologies, frameworks have been developed. So since these are almost kind of 1 decade old, so there are different models that are developed, and so technologies are in place, and frameworks are in place. So
In fact, if you, some of you who are interested to go through a course, I think OpenStax is offering a course. So this is a 10 or 12 weeks course under the in the name of OER. One can look at it and see, they give you a complete overview or landscape of, present you a landscape of what is happening in the area of OER and open textbooks. So all that what we need to do is look at these developments and see how we can make best use of these resources and how we can modify and adopt to in our own colleges, our own institutions to support our teaching and research. So in India, we need to make an effort and see whether such projects can be undertaken and supported. And some of us have been discussing, but still we haven't made any headway. And so this is, this entire area of OER and open textbook, I feel is an important opportunity for us to spend some time and see how we can use these resources like open access channels to create an awareness among our own faculty and see how they can use these materials and how our students can benefit from this entire resource that is being made available at no cost. So I think that is what I wanted to talk to you, and I'm sorry I just had to rush through. So I would be happy to take up any questions that you may have. So Dr. Chokshi and Mr. Mohit, is that fine? Yes, sir. This was very comprehensive, and I'm sure I've never seen such a rich collection of ebook sources um, talked about in a single presentation. So one common request which is coming in the chat box is that most of the participants are asking for a kind of a bibliography of these resources, or a list of these resources, if it can be compiled, or the presentation itself, if it is not much of an issue, can it be shared, and how can we help the participants keep a track Right, of this? definitely. That I'm sorry I was not able to put the bibliography at the end. So I will do that and share. Okay, and in fact that will be useful. Yeah, if you can prepare a bibliography and just post it in the chat box, I am sure people will copy it from here itself, and it will be helpful. I may not be able to do it right away, but Okay. I have a Word document which Yeah. we really shared with Yes. some amount of description about each project. So I Wonderful. think I will share that, and this PPT I will also share. That can also be used. I don't see any problem because I've just taken the screenshots from the respective websites, and that itself is an acknowledgement. Yes, that's true. Sir, one question coming from one of the participants, Dr. Jaideep Mehta, is how can we identify whether the open educational resources are, whether they allow fair use, any copyright restrictions on them or not? So, how do we identify the OER in terms of copyright restrictions? What kind of Creative Commons license should we look for in terms of legality before we display them, or before we aggregate, or before we catalog them on our website? Basically, each site that I shared here, the project or site you may call, the platform on which these ebooks are hosted, they all have given clear guidelines as to what you can do with each of the book that is hosted on these platforms. And there could be some specific guidelines for specific titles. Maybe the authors themselves have put certain restrictions, but I don't think to access and use there are any restrictions. Only when you want to actually modify, redistribute, I would say have a look at the Creative Commons license. So every material that is hosted on these platforms that I presented have a clearly stated
what you can do, what you can avoid doing it. But just to click on the book and access, there are no restrictions. Only when it comes to download, redistribute, or make the modifications, create hundreds of copies or whatever you want to do it with that. Each platform has given the guidelines. Yeah, I think it's important for us to look at that before we venture into making uh, any modifications to the content. Just to as it is using, I don't think there are any restrictions. Okay, so Dr. Kumbar, I mean the environment or the ecosystem of ebooks, at least in India right now, is very chaotic. I mean, if as a library you go and try to procure ebooks, you many times find that some of the titles which are in print are not even available in e-format. The usage terms, some of them are on annual subscription, some of them are on perpetual licensing, right? Some of them restrict number of concurrent users, some of them are open to the entire institute. So it's very chaotic, and which is another reason why there's probably a dire need to go for open textbooks, at least in India. Budget is also, I mean, a concern. So I mean, what challenges do you see it taking up an initiative for open textbooks in India? Any, because I haven't seen any initiative taken up so far. Uh, Yeah. So the challenges that I can see is that who will take that initiative and who will fund, right? That is one thing. And second thing is, then when somebody agrees to write a textbook, and how do you recognize and how do you reward and how do you count that, either for their promotions or whatever, or how do you compensate? One is monetary and second is intellectual effort that they put in. And I'm sure we have reached a point where, uh, you know, uh, whether it is InflipNet or any of the universities which have got a lot of affiliated colleges can always initiate that such a project. So within the IIT system, at least in my own institute, I've been talking to a good number of faculty members that this is the way to go now, and this is how, at least when it comes to the textbooks, right? But I think it's a question of time when we can take up such a project. That is what I see. Uh, yeah. One last question, sir. I mean, how do you see open textbook as a project vis-a-vis, most of these institutes are now compiling open courses, which include mostly audiovisual content, faculty giving a lecture and it's recorded, and um, a series of those talks compiled to form a course. How do Yeah. you see textbooks against that? And if we have to pick one of these two initiatives, isn't open courseware, which includes audiovisual content, a more viable, a more sustainable, and a more engaging medium to go with? I think that's where we have put in our effort so far. All right, Yes. starting with the NPTEL and Yes. SWAYAM and the other platform that where Influent was associated. So all of these have been serving as an alternative to e-textbooks, right? You take a course and the course material is also available. Bit of clippings of your videos are there, and there's course material is available. Not exactly imitating the textbooks, but it's in a different format, right? So we do have a resources. India has created a huge resource, particularly NPTEL. Okay, now I still see that there is a scope. There is a scope for writing open textbooks. Okay, because students are used to using the printed material, Sure. e-textbooks. So I think it's worth trying, that, and I see that there is a scope for doing something there, and see how that goes. Is that the way to go, or what we are investing in on a SWAYAM platform? Is that going to be more successful? So, but I think there's nothing wrong in initiating more than one.
And ultimately, over a period of 4 years, 5 years down the line, you will see which one is going to really, be successful and popular among the student community. Understood, sir. I don't see any other question other than the fact that most of the participants are asking for a copy of the PPT or the list of resources. If you could just share with us, and I'll make sure that when I send the next meeting link to all the participants, I attach your Okay, presentation. Dr. Kumar. I'll do that. I'll do that. Thank Okay. you so much for your time, Dr. Kumar. It was a Yeah. pleasure listening to Thank you, you. and we look forward to your continued participation and guidance in this program. I have another presentation on Saturday. Okay, I'm working on that, and I'll hope to see you on Saturday. And thank you and Dr. Chowksy for giving this opportunity to interact. And I hope the colleagues from the other libraries who are participating found this information useful. And yeah, look forward to interacting with them virtually. Thank you once again for giving this opportunity, and thank you. Thank you so Pleasure much. was all ours. Dear participants, you can now please uh, fill the feedback link provided to you in the chat box. This will be treated as the attendance also for the session. The number has quickly gone up from 60 to about 87 during the session. So I'm happy to see more than 80% participation in this session. I request all the participants to please fill the feedback link. कृपया करके जो फीडबैक लिंक चैट बॉक्स में दिया गया है उसे भरिए और उसी फीडबैक लिंक पे आपकी जो एंट्री है उसको हम एज अटेंडेंस ट्रीट करेंगे जैसा कि चौकसी सर ने सुबह बताया था 80% मिनिमम अटेंडेंस इन द टोटल प्रोग्राम इज मैंडेटरी और 80% अटेंडेंस अनिवार्य है और उसको काउंट करके ही हम आपको क्वालिफाई करेंगे एग्जाम के लिए ये AICTE की नॉर्म्स हैं इसलिए प्लीज जो चैट बॉक्स में लिंक दिया गया है फीडबैक फॉर सेशन 10 उसको भरें ये फीडबैक फॉर्म अगले आधे घंटे तक लाइव रहेगा और उसके बाद हम इस फीडबैक फॉर्म को बंद कर देंगे सो प्लीज अभी इसे भरिए हम अभी Mr. Mohit, can I leave? Sir, I mean, you can stay here for the next sessions, but if you have other engagements, I have other this session is over. And yeah, thank you. And it has been such a great pleasure, to be part of this program. Thank you. Thank you so much, sir, on behalf of AICTE, RGPV, and this entire audience. Thank you. So, dear participants, please fill out the feedback form. We will move on to the next session now. Let me see if Dr. Jivesh has joined. Okay, so I'll get in touch with the next speaker and make sure that we are on time. In the meanwhile, please fill out the feedback form.
Prasanna, there's no issue with the sound. It's just that everyone was on mute because I was trying to contact the speaker for the next session. The next session will start at around 11:45 to 11:50. So we do have about 7-8 minutes with us. हमारे पास 7-8 मिनट है अभी. नेक्स्ट स्पीकर अभी अवेलेबल नहीं है, वो भी ज्वाइन करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन शुरू करेंगे. इन द मीनवाइल कुछ पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जो कि कल के फॉर्म का लिंक मांग रहे हैं. आई एम सो सॉरी, हमने कल का जो फॉर्म का लिंक था वो हमने लगभग आधा घंटे के लिए मीटिंग में छोड़ा था. इफ यू हैव नॉट फिल्ड दैट फॉर्म, आई एम सॉरी, वी कैन नॉट गिव यू एक्सेस टू दैट फॉर्म नाउ. प्लीज मेक श्योर कि आप आज का फॉर्म भरें और जब भी सेशन हो हम उस टाइम पे लिंक शेयर करते हैं तो आप उसी वक्त वो फॉर्म को भरिए, क्योंकि बाद में एक बार फॉर्म बंद करने के बाद हम उसे दोबारा नहीं खोल सकते.
So we do have Dr. Jivesh Pansal with us. Good morning, sir. Namaste. Good morning, ji. Good morning. I am audible? Yes, sir. Loud and clear. We can also see you. Okay, okay, sir. Fine, fine. So I have recently come in touch with the Jivesh sir. He's very pragmatic when it comes to how library should work and about library resources. So other than that, those who are meeting Dr. Jivesh Bansal for the first time today, I'd like to tell you that Dr. Bansal is currently the university librarian of Punjab University in Chandigarh. And he has more than 21 years of professional experience, including 19 years of vast experience of Central Library at Punjab University. He was awarded PhD by Punjab University in 2013 for his doctoral research on information seeking behavior in electronic environment. Dr. Bansal has published more than 24 papers in national and international journals. He has attended a number of workshops, international and national conferences in abroad and India, and also served as a resource person in many of them. So today, Dr. Bansal will be talking about academic integrity, a very important topic, and research ethics. Dr. Bansal, off to you. You have the mic, you have the time. Thank you, Dr. Choksi, for kind words, and I will try my best. So this is Mohit Sharma, your friend from referee. Yeah. Okay, sir. Okay, Mohit. Hello, Mohit. Yes, sir. Hi. So Okay. you have the time. Please share your screen. I am sharing my screen. Okay. Sir, next to share button, you will also find there's a button called More with 3 dots. उस पे भी एक बार click करिए, please. More पे more. हाँ जी, okay. हाँ जी. Okay, just I will. उस पे होगा disable participant annotations. Just a minute. हाँ, take your time, sir. कोई problem. हाँ, उस पे क्या करूँ? Disable participant annotations. Disable annotation for others. हाँ जी, ये कर दीजिए. Annotation for others, yeah. हाँ, ठीक है सर. अब आप अपना. My screen is visible? Yes, sir. Very clear. Okay, my screen is visible. Okay, fine. You can start the PowerPoint show, sir. Yeah. Thank you, sir. Okay. Good morning, friends. The topic of my presentation is academic integrity and research ethics in higher education institutions. You all know that and very well aware about this topic which is going on, and you all know that there is a lot of discussions these days on quality in higher education, topics on predatory journals, topics on plagiarism. So lots of things are going on, because the basic thing behind all these discussion is that why and where we are lacking in India for quality education, for quality higher education, and why Indian higher education is not in top 100 universities. Why any of the University of India is not in the ranking in 100, top 200, top 300, top 200 universities. There is no a single institution of India is not in the top 200 universities, or any IIT, any central funded institutes. And when the authorities started discussing on these topics, that why we are no, first thing, we achieved the quantity. We are at a sufficient level in quantity of higher education. If you will see the publication rate in higher education in India, we are, according to the recent report which is published just 2 to 3 days by ministry, it says that we are now on the number 3rd in the number of publications. But still we are lacking in the quality. If you will, but at the same time, if you will see
academic citation, average citation per paper, yes, the citation impact, we will fall to 10 to 50 and 50th rank. But in the quantity, we have achieved a good gross enrollment ratio. We have, according to All India Survey on Higher Education, the gross enrollment ratio is 26.3% of the total population, and we are very near to touching it to 30%. And we have proposed that in the next 10 to 20 years, we will be around 50% of, we will touch the gross enrollment ratio in higher education up to 50%. And you know that how the methods are changing, and this COVID-19 situation has made many things possible. The exposure we are getting, that you are attending this workshop in online mode and you are interacting with lots. I have learned a lot. I have learned a lot during this period. I can't learn this thing which I have learned in this 1 year in the next 5 years, because we have explored the possibilities. A person sitting at different places or attending the lectures of various. I have also organized many workshops like Dr. Choksi, and I have invited many persons from IITs, from central universities, and we are with this new medium, with this remote medium, with these remote platforms, we have learned a lot that how we can harness the benefits of this scholarship. So this is the basis that but the first thing is that we should have an academic integrity and research ethics. Basically, what is academics? If you will, first we will discuss what is academics. I will cover academic integrity concept, responsible conduct of research, academic dishonesty, consequences of academic dishonesty, plagiarism, UGC policy on academic integrity, which was released on many of you know about that, because you are all our fellow colleagues. You know about this. UGC has made a policy on academic integrity and avoid of plagiarism in 2018. We will discuss later on that. Because anything related to education and scholarship is academics. You all know from that we see, librarians always say that we are academic staff. We are not a non-academic staff. We are not non-teaching staff. And if you will see the UGC regulation, they come that UGC regulations for teachers and other academic staff. In the other academic staff, which categories are covered? Librarians are covered and sports directors are covered. We always say that we are not non-teaching staff because we always deal with academics. We deal with academic matters. We deliver lectures. We give orientation courses. We are doing informal. We are not formally connected to the students. We are informally connected to the students. In every aspect, we are connected to the students. We are helping them. And now the librarians has taken different roles. You know that we are working on plagiarism issues. We are working on academic integrity issues. We are working on responsible conduct of research. So these all librarians are now very dynamic role they are playing. So this is academics related to education and scholarship. What is integrity? The quality of being honest and having strong moral principles. You all know that you should feel integrity to your nation. We always say that we are living on this land. We have taken birth on this land. So we should feel integrity to our nation. We should follow the principles of honest and having strong moral principles. And that is humanity. That is the real religion. We will say that we are Hindu, we are Sikh, we are Muslim. Beyond all these things, we are human beings. We should have strong principles of integrity. We academicians are because if you have heard about one statement, I will discuss one statement with you which are generally discussed in various lectures of Pandit Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister. A university stands for humanism, for tolerance, for all-round development. And if the universities will discharge their duties, it will be good with the nation and the people. Because universities are the institutions from where universities is not a medical college. Colleges are the institutions from where leadership comes. Punjab University has given 2 prime ministers to India, Dr. Manmohan Singh, Inder Kumar Gujral. So 2 prime ministers, many. So you will see, you are also, many of you are from engineering colleges, and many of you are from
IITs and many from technical institutions, you know that what is the level of academics. So they are for all-round development of the nation. Universities, if the universities will discharge their duties, if the university academicians are integrated, they have strong principles of honesty and moral principles, it will be good with the nation and the people. This we have to learn, because these are the basic things which I am discussing with you, and these things should come from within. Until and unless we are we in ourselves, we in himself, if I don't follow the principles of academic integrity, so academics cannot come from me. This lecture cannot come from me, because we ourselves should follow the principles of academic integrity. And what is research? You all know, many of you are PhD students, many of you are writing research papers in various journals, etc. What is research? The systematic investigation into and study of materials and sources, and establish facts and reach new conclusion. By doing research, we establish facts, because this knowledge is a, we will see, this is a sea. ये समुंदर है जो नॉलेज है. हम समुंदर के को चैलेंज नहीं कर सकते. अगर हम समुंदर को चैलेंज करेंगे तो हम खुद उसमें डूब के रह जाएंगे. हमारा काम सिर्फ ये है उसमें एक ड्रॉप ऐड करना नॉलेज के अंदर. हमने उससे पंगा नहीं लेना, क्योंकि अगर आप नॉलेज कोई चीज, आज टुडे वी आर लिविंग इन इंफॉर्मेशन सोसाइटी, इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन. You know about the chemical abstract, you know about the physical abstract, how what is the rate of production of information these days. We are living in the information age. You know how the information, what is the flow of information. As an academician, our duty is just to add a drop to the existing knowledge. If we have added a one drop to it, it will be, that drop will become, that will fulfill our whole contribution. Because my teacher said to me that our aim is to just add one drop. If we are successful in adding one drop to the existing knowledge, that is sufficient for our whole career. This is the level of the universe of knowledge. You have, many of have heard about that paper of universe of knowledge. What is the universe of knowledge? Universe of knowledge is not a small thing. You have heard about the mode of formation of subjects, how the new subjects are emerging day by day. Every day new subjects are coming. You have not heard about certain subjects, bioinformatics. You have not heard about many subjects, artificial intelligence. If I will discuss about this computer engineering. Now there are colleges, technical colleges, who are running 10 types of computer engineering. Computer engineering in Internet of Things, computer engineering in artificial intelligence, computer engineering in softwares. So the knowledge is growing with such a fast speed. So our purpose is just to add one drop to it. As an academician, if we are successful in adding one drop to the existing knowledge, it will be sufficient for us. Ethics, and that drop only we can add if we have the strong principles of academic integrity and research ethics. Ethics means moral principles that govern a person's behavior or the conducting of an activity. Ethics, moral principles, you all know the ethical behavior. Someone 10 to 15 years, I have attended one seminar on ethical behavior, etc. So one person said to me, what is ethics? So ethics, ethics is moral principle that governs a person's behavior in every activity. If you are all librarians, you have to take decisions day by day. You have to purchase books. You have to buy e-resources. You have to do many things. And you have strong, until and unless you will have strong principles of ethics, you can't be successful in your life. You should be impartial in deciding the things. Only then librarians will be recognized in the society. Only then you can make a place in the society. What Massachusetts Institute of Technology says, because these are the common, you can see these things on the internet. My purpose is just to motivate you. My purpose, because I will talk to you in a very broader sense the things.
academic work one carry out at MIT. What Massachusetts? Everyone know why Massachusetts Institute, why is so much have name and fame in this world. Why Massachusetts? Because they have the strong principles of academic integrity. Academic work one carry out at MIT is expected that you will do with integrity and responsible behavior. This is the principle of academic. That is the principle of academic work one carry. Because of these strong principles, Massachusetts Institute has name and fame. Why the Nobel laureates are from MITs? Why the Nobel laureates are from US? Why the top level institutions are from from America? And if you will see, if you have gone through some symptomatic studies and the contribution of USA research, why the USA research, China research is going on? Because they have the strong principles of academic integrity and responsible conduct of research. Because India is publishing papers, but the research impact is low. Because these APIs, etc., they have opened in numerous ways. Overnight, many online journals and these things have started, and we started doing copying because the same time there is this flow of information technologies, and we start copying the things and manipulating the things. But unless and until this is a junk, this is nothing more than you are just wasting your time and energy, and just because we have to learn when this nation observe that what are the problems behind the academics of India, then these types of discussions have started in the universities, this academic integrity and research, and these guidelines were proposed by this UGC on academic integrity and prevention of plagiarism Act. And this, if we will talk about these plagiarism softwares, my son has taken admission in BTech this year, and they have given access to this plagiarism software to a BTech student. Why? Because this plagiarism software is not expected that PhD thesis will be checked in this, because we don't have the level. So we check our PhD thesis into this software. Basically, these softwares are meant for students who are ignorant, who don't know that what this copying can cost to them, that can ruin their career. That only because of that we are doing copying in our research work. The day we will understand that this copying is ruining our nation, this is ruining our society, we will never do copies, because these softwares are not meant for us, because our academicians are not so powerful that they can in one instance judge that this academic work is not proper academic work. These softwares don't have intelligence, they only check the similarity. If you will do paraphrasing, these are not, any software, Urkun, Turnitin never claimed that they are plagiarism detection softwares. They said they are similarity check softwares, because they are not meant for the similarity. They check the similarity because they have the repository behind them, and they check the similarity from where you have copied that material. They only give, because the culture of this country has become of this copying, so these plagiarism softwares can easily detect your copying material. So, but this information technology also has given us many these open source systems. Now all the Indian theses are available on Shodhganga. And if you will, earlier, what people will do, a thesis which was submitted in far off university from in any region, in outside country, they change the topic, and sometimes such kind of plagiarism was also observed in many universities. And I will not name any university. What is the situation is not very good. This is University of Nebraska Lincoln. You are very well know about the library flow span practice. One journal come out from this University of Nebraska Lincoln. Academic integrity is the basis of the university's goal to enable an exchange of ideas and develop new knowledge, and it requires that individual work with and trust one another. That individuals will work with trust. Main thing is trust. If you don't trust, main thing, trust building is not an easy thing. Until and unless you don't have trust on your teacher, that this teacher will not do unfair with me, that this teacher will be fair for all,
this is a mutual trust should be there in the society, and this mutual trust, when this mutual trust will come, when we have honesty and when we have academic integrity. We take recommendations from various scholars for getting admissions in foreign universities. Why these recommendations are considered? Sometimes it was observed that by the foreign universities that Indian scholars, they come out with some false recommendations also, because it is expected that a teacher will never give the wrong recommendations. They are academic integrated people. Only then your recommendation has the value. So this is a trust building exercise. This is a trust building exercise. Academic integrity is a trust building exercise, that my superiors are fair with me and they are equal for all the employees. If we are working in an organization, my boss is equally fair with all the employees. Then only trust building comes in the organization. University of North Carolina, Chapel Hill, you have heard about that. What that the website of this University of North Carolina, Chapel Hill said about this academic integrity is the commitment to and demonstration of honest and moral behavior in an academic setting. Demonstration of honest and moral behavior. This is the most relevant at the university level. देखो वर्ड आप देखिए कि वर्ड को ध्यान से पढ़िए. This is most relevant at the university level. जब आप पहली क्लास में एडमिशन लेते हैं तब भी वो एकेडमिक्स है, परंतु आप बच्चे हैं, आप गलती कर सकते हैं. आपने स्कूल में से कॉपी उठा लाई, आपकी मम्मी कहेगी कि आपने गलती करी है, कल को टीचर को जाकर के बता देना कि आप कॉपी उठा लाए किसी बच्चे की गलती से, क्योंकि आपको समझ नहीं है. कई बार हम क्या करते हैं कि दूसरे का सामान उठा करके, परंतु अगर आपके पेरेंट्स ने आपको उसी दिन नहीं रोका, बेटे आपने गलती करी है, ये आप गलत बच्चे की कॉपी उठा लाए, आप जाकर के इसको मैडम को वापस करो, तो वो जो सिद्धांत है आपका, अगर उसी दिन आपकी डांट नहीं लगी, फर्स्ट लेवल, बिकॉज योर फर्स्ट लर्निंग इज फ्रॉम योर होम. आप स्कूल में जाना कब शुरू करते हैं? 3 साल का शुरू करते हैं, 5 साल का शुरू करते हैं. फर्स्ट क्लास में कब होते हैं? और 3 साल का मतलब यही होता है कि बच्चे को स्कूल में बैठना आ जाए. पहले हम जैसे तो लोग तो 5 साल में स्कूल जाते थे, पहली क्लास में सीधा स्कूल जाते थे, हिंदी मीडियम में स्कूल जाते थे. तो सबसे बड़ी यही है कि मतलब कि अगर आपको उसी दिन नहीं रोका गया, बेटे आपने गलती कर दी, उसी दिन आपकी पनिशमेंट नहीं हुई, तो आपके अंदर वो हैबिट डेवलप हो जाएगी. कल को आप किसी की ज्योमेट्री उठा लोगे, फिर आप किसी की 4 कापियां उठा करके लेकर के आओगे. तो वो चीज क्या है? तो यूनिवर्सिटी लेवल पर जाते जाते वो चीज क्या है कि परंतु चलो ठीक है, बच्चे को तो गलती कर सकता है, परंतु जब यूनिवर्सिटी लेवल पे आप आ गए तब आप बच्चे नहीं हो. नो वन विल से 18 साल के बच्चे को ना, वो जैसे कहते हैं कि 18 साल का जुवेनाइन है, अगर वो कितना भी बड़ा अपराध कर दे, उसकी सजा क्या है? उसको जुवेनाइन जेल में रखा जाता है. और जब 18 साल का हो जाता है ना, आपके लिए, पेरेंट्स के लिए बच्चा है, सोसाइटी के लिए बच्चा नहीं है. वो सोसाइटी के लिए वो अडल्ट है. अगर वो गलती करेगा तो उसको अडल्ट समझा जाएगा. पेरेंट्स के लिए बच्चा है, टीचर के लिए बच्चा हो सकता है, परंतु सोसाइटी के लिए बच्चा नहीं है. वो अडल्ट हो चुका है. और आज की आपको पता है, जब भी कोई बच्चा +2 कर करके करता है, वो 18 साल का हो जाता है. 6 साल से कम किसी बच्चे का फर्स्ट में एडमिशन नहीं होता. तो सोसाइटी आपको एक अडल्ट बिहेवियर एक्सपेक्ट करती है. तो जो यूनिवर्सिटी लेवल है उस पर आपको क्या है? यूनिवर्सिटी लेवल एज इट रिलेट्स टू प्रोवाइडिंग. आजकल आपको क्या देख रहे हो? आप ऑनलाइन एजुकेशन हो रही है, लोग कॉपिंग कर रहे हैं, पेपर हो रहे हैं, असाइनमेंट वर्क क्या कर रहे हैं. मेरे बेटा ने कहा, पापा ये कर रहे हैं लोग, अभी उसने बीटेक में एडमिशन लिया है, बीटेक बीट्स प्लानिंग में. मैंने कहा तूने बेटे नहीं करना, अगर तू करेगा ना तो जिंदगी में, मैंने कहा तूने नहीं करना, चाहे कोई कुछ मर्जी करे. क्योंकि बच्चे को प्राइमरी स्टेज पर आज क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन बांट लेते हैं बच्चे, भाई एक तू करेगा एक मैं करूंगा, आप कॉपी चेक कर लो, उनकी सेम आंसर मिलेंगे. 4 क्वेश्चन है, एक तू कर दे एक मैं कर दूं, फिर बाद में कॉपी कर लेंगे. मतलब कि किसको बेवकूफ बना रहे हो? अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो, किसी को बेवकूफ नहीं बना रहे. इन सिंपल एंड टर्म्स इट रिक्वायर्स एक्नॉलेजिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ अदर. अगर आपने किसी की कॉपी की है, किस तरह की कॉपी की है,
एग्जैक्ट कोटेशन ली है इन्वर्टेड कोमा में। आप सब लाइब्रेरियंस हैं, आपको सबको पता है कि कैसे हमें कोटेशन मार्क लगाना है, कैसे हमें बेसिक, क्योंकि मैं अब मेरा एक लेवल हो सकता है आपसे 2-4 स्टेप में आगे हो सकता हूं, परंतु आप सब लोग बड़े मेच्योर लोग हैं। इट रिक्वायर्स एक्नॉलेजिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ अदर पीपल, फेलियर टू प्रोवाइड सच एक्नॉलेजमेंट इज कंसीडर्ड प्लेजिज्म। अगर आप किसी के वर्क को एक्नॉलेज नहीं करते तो क्या है, वो क्या माना जाएगा, प्लेजिज्म माना जाएगा। मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी सबको पता है, एकेडमिक इंटीग्रिटी, ऑनेस्ट एंड रिस्पांसिबल स्कॉलरशिप, फाउंडेशन ऑफ यूनिवर्सिटी सक्सेस, लर्निंग हाउ टू एक्सप्रेस ओरिजिनल आइडियाज, साइट सोर्सेज। आपको सीखना है मैनेजिंग। मेरा अगला लेक्चर होगा, मैं 30 तारीख को दूंगा अगला लेक्चर्स। आपको खुद लाइबन होकर के आपको आगे शिक्षा देनी है। अगर लाइबन को ही एकेडमिक इंटीग्रिटी नहीं होगी तो आगे क्या पढ़ाएगा? अगर मेरे अंदर एकेडमिक इंटीग्रिटी नहीं है और मेरे को रिसर्च स्कॉलर्स को लेक्चर देने के लिए बुला रहे हैं, तो मैं क्या लेक्चर दूंगा उनको? मेरे क्या लेक्चर मेरे मन से आएगा? जिस कॉन्फिडेंस से मैं आज बोल रहा हूं, क्या मैं बोल पाऊंगा उस कॉन्फिडेंस से अगर मैं चोर हूं? तो यही चीज है, लर्निंग हाउ टू एक्सप्रेस ओरिजिनल आइडियाज, साइट सोर्सेज, कैसे आपने साइटेशन करनी है। आप क्या करते हो, मैं कई बार क्या करते हैं कि आपको ओरिजिनल सोर्स नहीं मिलता, आप किसी की डेफिनेशन को देखते हो और आपने ओरिजिनल सोर्स देखा नहीं, आप रेफरेंस दे देते हो ओरिजिनल सोर्स का। आपने ऐसा नहीं करना। अगर आप पेपर लिख रहे हो, जैसे मैंने अपने गाइड से पूछा, जो मेरे टीचर्स रहे हैं, अच्छे टीचर्स रहे हैं मेरे, मैंने कहा सर ये मैं ये डेफिनेशन देख रहा हूं, मान लिया कि डार्विन ने एक डेफिनेशन कही और वो किसने लिखी, एक लड़का है राजू श्रीवास्तव, उसने लिख दी अपनी किताब के अंदर, राजू श्रीवास्तव ने उस डेफिनेशन को राजू श्रीवास्तव ने अपनी किताब में लिख दिया, डार्विन की डेफिनेशन को। राजू श्रीवास्तव ने डार्विन की डेफिनेशन को कोट किया है, तो आप राजू श्रीवास्तव को कोट करोगे, ये लिखोगे कि डेफिनेशन है वो डार्विन की है, इन राजू श्रीवास्तव की किताब में है, वो मैंने ओरिजिनल सोर्स नहीं देखा। तो आपने सीखना है साइटेशन कैसे करनी है, कॉन्फ्रेंस की साइटेशन कैसे करनी है, जो आपने ओरिजिनल सोर्स नहीं देखा उसकी साइटेशन कैसे करनी है, सारे साइटेशन आपने सीखनी है, तभी आप एकेडमिक्स कर सकते हो। लाइबन से आजकल एक्सपेक्ट, आप पेपर लिखो, अच्छे पेपर लिखो, 2 पेपर लिखना, 1-2 पेपर लिखना पूरे साल में काफी है। अगर आपने अच्छे पेपर लिखे हैं, आपने को पता है यूजीसी रेगुलेशन 2018 आ चुके हैं, उनमें कोई प्रेशर नहीं है लाइबन के ऊपर। आपको पेपर लिखने हैं, अपने प्रैक्टिस के ऊपर पेपर लिखने हैं कि मैंने अपने कॉलेज के अंदर ये प्रैक्टिस शुरू की, उसके लिटरेचर को पढ़ो कि हाँ मैंने रिमोट लॉगिन लगाया अपनी लाइब्रेरी के अंदर, रिमोट लॉगिन के ये प्रिंसिपल, ये ऑप्शंस अवेलेबल थे, ये डिफरेंट लॉगिन वेबसाइट अवेलेबल थी और ये ऑप्शंस अवेलेबल थे, इसमें ये फीचर्स थे, इसमें ये फीचर्स थे, और मैंने उन सब को स्टडी कर करके इसको लगाया और इसमें ये फीचर्स हैं और मेरा ये यूसेज इसका बढ़ गया। इसके यूज करने से मेरी जो ई रिसोर्सेज की थी, मैं रिमोट, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो ई रिसोर्सेज अब घर से इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे टीचर्स घर से रिसर्च करो, तो इससे मेरा क्या है, आई कैन जस्टिफाई अबाउट माई बजट ऑफ ऑन इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज। सो आप डिस्कवरी सर्विस लगाते हो, आप फेडरेटेड सर्च कोई चीज लगाते हो, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए भी मैं अपना यूसेज बढ़ाना चाहता हूं, मतलब कि मैं अपने, क्योंकि मैं 5 करोड़ रुपए ये रिसोर्सेज पे खर्च कर रहा हूं, अगर मेरे बच्चों को लॉगिन, मेरी यूजर्स को घर पे फैसिलिटी नहीं होगी, आज कोविड का टाइम था, तो मैं कैसे जस्टिफाई करूंगा कि वो यूसेज हुआ बड़ा। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने क्या कहा, जो 2018 में है उसमें ये डेफिनेशन दी हुई है यूनिवर्सिटी, अभी मैं उसको पूरे को डिस्कस करूंगा, इज इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी इन प्रपोजिंग, परफॉर्मिंग एंड रिपोर्टिंग एनी एक्टिविटी व्हिच लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, दिस इज द डेफिनेशन गिवन इन दिस। आपको पूरे को पढ़ना है उसको उठा करके, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का मैंने एक स्लाइड भी डिस्कस कर ली है। एक इंटरनेशनल सेंटर फॉर एकेडमिक इंटीग्रिटी है, हैज आइडेंटिफाइड 5 पिलर्स ऑफ एकेडमिक इंटीग्रिटी टू जनरेट पॉजिटिव कन्वर्सेशंस अबाउट इंटीग्रिटी। सबसे पहले क्या है, बट दिस ऑनेस्टी, honesty is the basic principle of academic integrity, you should be honest, all other pillars have linkage to it, whether you are working on a problem set, lab report, project or paper, avoid engaging in plagiarism, unauthorized collaboration, cheating or facilitating academic dishonesty। आपको ये चीजें सीखनी है और इन
इनका पालन करना है। अवॉइड एंगेजिंग इन प्लेजरिज्म, अनऑथराइज्ड कोलैबोरेशन, चीटिंग और फैसिलिटेटिंग एकेडमिक डिसऑनेस्टी। ट्रस्ट, ट्रस्ट इज एस्टेब्लिश्ड। अगर पहले कुछ हुआ है कोई बात नहीं, क्योंकि आदमी एकदम से वो नहीं होता कि मतलब कि आपने कोई गिल्टी फीलिंग की जरूरत नहीं है। सोसाइटी, क्योंकि हम सोसाइटी का पार्ट है। अगर हमसे कोई गलती हुई है, परंतु जब आदमी गलती को पता लग जाए उसको कि हाँ मैं गलत हूं, उसी दिन से उसको सुधारना शुरू कर दो। अनऑथराइज्ड कोलैबोरेशन, चीटिंग और ट्रस्ट, ट्रस्ट इज एस्टेब्लिश्ड इन ए सिस्टम वेयर ऑल मेंबर्स आर डूइंग देयर बेस्ट वर्क। मैंने जो आपसे डिस्कस किया था कि ट्रस्ट तभी आता है अगर आपको पता है कि मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे हम 4 भाइयों के साथ अच्छे से उनका जो बिहेवियर है वो चारों के साथ इक्वल है। मेरे टीचर हैं वो किसी कभी मेरे साथ अनपार्शियल बिहेवियर नहीं करेंगे। मेरे को कम नंबर दिए हैं तो मेरे का मतलब उनको जज किया है कि मेरे अगर जिसको अच्छे नंबर दिए हैं वो डिजर्व करता है। ये नहीं कि भाई हाँ आजकल लोगों में ये भी है, आदमी को देखना चाहिए मेरी वीकनेस क्या है। मान लीजिए सिलेक्शन कमेटी में गई, भाई सिफारिशें चलती हैं, ठीक है मैं मानता हूँ बहुत सिफारिशें चलती हैं। मैं इंडियन सोसाइटी में करप्शन का एक बहुत बड़ा लेवल है, परंतु अगर कहीं फेयर सिलेक्शन हुई है, आपको पता है कि जो बंदा सिलेक्ट हुआ है वो मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट था, तो कभी भी र्यूमर अपने दिल को तसल्ली देने के लिए ये मत कहो कि भाई गलत सिलेक्शन हुई है। अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो। अगर आपको ये पता लग जाएगा कि मेरे में कमी है तो उसको दूर कर लोगे। अगर नहीं पता लगेगा, अपने अंदर कमी देखने की कोशिश करो। अगर हाँ ठीक है कहीं अनफेयर हो तो फेयरनेस होती है, ऑब्जर्व करो उसको, और ऐसा अगर आपको कहीं पे अच्छा चांस मिलता है तो उसको आप अच्छा करने की कोशिश करो, तो सोसाइटी अपने आप ठीक होती चली जाएगी। फेयरनेस गोज हैंड इन हैंड विद ट्रस्ट। एवरी इंडिविजुअल शुड बिलीव दैट दे विल बी ट्रीटेड फेयरली एंड जज्ड बाय द सेम स्टैंडर्ड, जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। रिस्पेक्ट, allow for individual points of view and opinions to be shared. Students show respect by listening to other points of view, being prepared, meeting deadlines. Respect allows for individual points of view and opinions to be shared. सबको रिस्पेक्ट करो। ये नहीं कि भाई मान लिया मेरा स्टूडेंट है, पीएचडी, जब बच्चा पीएचडी करता है तो उसका एक लेवल होता है। ऐसा नहीं है कि वो उसको कोई ज्ञान नहीं है। अगर मैं उसका पीएचडी गाइड हूं तो मेरे को राइट बनता है कि मैं उसको इक्वली मौका दूं, वो अपनी बात रख सके। ये नहीं कि उसको कहा भाग तेरे को कुछ नहीं आता। हमने देखा है, मैंने बहुत चीजें देखी हैं कि कैसे यहाँ पे किस तरह के गाइड हैं, किस तरह के टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स को बोलने तक का मौका नहीं देते। लिसनिंग टू अदर पॉइंट्स ऑफ व्यू, बीइंग प्रिपेयर्ड, मीटिंग डेडलाइंस। जो आजकल बेसिकली क्या चीज हो रही है, ईगो इतनी बढ़ जाती है। मैं लाइब्रेरियन बन गया, मैं डिप्टी लाइब्रेरियन बन गया, मेरी ईगो बढ़ गई कि मेरे जो जूनियर्स हैं वो कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे भाई वो भी, उन्होंने भी लाइब्रेरी साइंस किया है। आपकी अब मैंने जो ये फील्ड है, ये इतना बड़ा वास्ट फील्ड है कि मान लिया मेरे को अभी राजू श्रीवास्तव, मेरे को विजय सिंधे, मेरे को दो नाम दिख रहे हैं फोटो के अंदर, भावना एकदम दिख रही है, भावना गोस्वामी। अगर ये मेरे को कोई बात कहते हैं कि सर मेरे को भी एक नॉलेज है, मैं तभी कहूंगा कि हाँ बच्चे बताओ, हाँ मेरे कोलीग बताओ ये बात क्या है। ये थोड़ी है कि मेरे को सब कुछ आता है, मतलब कि भाई मैं दादा हो गया, मतलब कि मैंने 2-4 लाइनें क्या पढ़ ली मैं दादा हो गया, मतलब ऐसा नहीं करना। Because we are all mature people, I am not delivering to lecture to the kids. I know that these are my fellow colleagues. They are equally learning in day-to-day life the things, and I should learn from them. I should have a chance. I should get a chance to learn from them. आज से जब मैं 5 साल पहले बोलता था तो मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। मैंने लर्न किया है। Responsibility means acknowledging your agency and accountability in daily actions and in responsibility. आपको कहीं से फंड मिला है, आप एक्नॉलेज ही नहीं करते। Acknowledging your agency and accountability in daily actions and in your work. एक्नॉलेज करो हमेशा, जिसका वर्क साइट किया है उसको एक्नॉलेज करो। किसी फंडिंग एजेंसी, आपने देखा होगा कहीं कहीं पेपरों में कि आपको मैंने देखा, मेरे एक टीचर हैं डॉक्टर मनोज कुमार जोशी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। उन्होंने मेरे से एक बार हेल्प ली किसी क्वेश्चनियर बनवाने में, वो पेपर लिख रहे थे, और मैं एक बार गूगल में अपना नाम डाल के सर्च कर रहा था अपना काम, उस मेरा नाम आ गया उसमें। मैंने कहा मेरा तो इसमें नाम ही नहीं है पेपर में। उन्होंने मेरे को एक्नॉलेज किया हुआ था कि जीवेश हैज हेल्प्ड मी इन दिस वर्क। मैं हैरान रह गया, मतलब कि सच्चे लेवल ऑफ एकेडमिक इंटीग्रिटी। हालांकि मेरा उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, मेरा नाम नहीं था पेपर में, परंतु उन्होंने मेरे को बाद में एक्नॉलेज किया, जीवेश हैज हेल्प्ड मी इन फिलिंग अप द क्वेश्चनर्स फ्रॉम सो यूनिवर्सिटीज। तो दिस लेवल, दिस देखो मैंने नीचे लिखा हुआ है इंटरनेशनल सेंटर फॉर एकेडमिक इंटीग्रिटी की है ये, परंतु मैंने वहां से नहीं लिए। मैंने कहां से लिए? इस वेबसाइट से लिए ये। मैंने
ये गाइडलाइंस किसकी हैं? इंटरनेशनल सेंटर फॉर एकेडमिक इंटीग्रिटी की, परंतु मैंने वहां से नहीं ली, वो आज एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर तुम मैं इसको कोट कर दूंगा ना तो मैं फंस जाऊंगा। आपको पता है वेब कितना डायनेमिक है? हम डेट क्यों लिखते हैं कि हमें इस वेबसाइट को इस तारीख को, किताबें तो फिर भी डायनेमिक, इतनी डायनेमिक नहीं थी, नॉलेज इतनी डायनेमिक है। मैंने क्या किया कि किसी वेबसाइट को डाउनलोड, और वो आज एग्जिस्ट ही नहीं करती, आज ही गाइडलाइंस इस वेबसाइट पे एग्जिस्ट नहीं करती, परंतु ये यहाँ एग्जिस्ट करती थी जिस दिन मैंने स्लाइडें बनाई थी 1 साल पहले, 7-8 महीने पहले। तो मैंने लिख दिया कि 5 पिलर्स मैंने यहाँ से लिए, परंतु ये है इसके ओरिजिनल्स तो ये है, परंतु मैंने यहाँ से लिए यूनिवर्सिटी ऑफ लिंक, जो ये वेबसाइट है unl.edu से। ये है इंटरनेशनल सेंटर फॉर एकेडमिक इंटीग्रिटी, इसकी वेबसाइट पे जाकर के देखो, इसको स्टडी करो क्या चीज है ये रिसर्च रजिस्ट्री है, इसका जिक्र इसमें भी हुआ है जो 2018 में गाइडलाइंस आई है। ये मैं पेज है, आप इंटरनेट पे डालकर देख सकते हो, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की जो गाइडलाइंस है 2018 की, उनको स्टडी करिए पूरे को, उसमें क्या क्या है सारे को हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा भी। तो उसमें एक जगह जिक्र हुआ है इंटरनेशनल रिसर्च रजिस्ट्री। हम क्या करते हैं, शोध अभी एक शोध शुद्धि करके एक वो प्रोजेक्ट चला है, एक तो शोध गंगा तक शोध शुद्धि, कि भाई आप कोई भी रिसर्च प्रपोजल बनाते हो तो उसको इनफिलिबेनेट पे अपलोड करिए। इसी तरह से ये एक इंटरनेशनल वेबसाइट है इंटरनेशनल रिसर्चर्स रजिस्ट्री, कि आप कोई भी रिसर्च टॉपिक देते हो पीएचडी के लिए, डुप्लीकेशन से बचना है। मैं एक बार किसी एक प्रोफेसर से बात कर रहा था, बिकॉज आई मीन पंजाब यूनिवर्सिटी, ही इज ए वेरी गुड टीचर एंड ही इज ए मैथमेटिशियन, प्रोफेसर दिनेश खुराना। तो ही डिड सम वर्क, ही वो मेरे ख्याल से वो जो ये प्योर मैथमेटिक्स है उसमें वो काम करते हैं, तो उन्होंने काम किया। तो उन्होंने वो आर्कसीव, आपको सुना होगा कि मैथमेटिक्स की बड़ी फेमस रिपोजिटरी आर्कसीव करके, ARXIV, बेसिकली जो ये रिपोजिटरी स्टार्ट हुई थी उसी से शुरू हुई थी वो, आर्कसीव से ARXIV, मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस की बड़ी फेमस रिपोजिटरी है। तो उसने उसमें डाल दिया पब्लिश करने से पहले। जब उन्होंने उसमें डाल दिया तो एक बंदे ने कहा, एक अमेरिकन रिसर्चर ने कहा कि आई एम आल्सो वर्किंग ऑन द सेम प्रोजेक्ट, और मेरी ये फाइंडिंग है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपकी ये फाइंडिंग है, मेरी ये फाइंडिंग है, इसको मिला लेते हैं और आप डिस्कशन करते हैं और इसको एक ज्वाइंट पेपर बना लेते हैं। तो क्या फायदा हुआ कि पता लग गया कि भाई हाँ, मेरे फील्ड में मैं जो अगला लेक्चर दूंगा यही साइड, वही मेरा उसका बेस है, ये प्रोफेशनल नेटवर्किंग, वो मैं 30 तारीख को दूंगा 10:30 बजे। प्रोफेशनल नेटवर्किंग, आपको पता होना चाहिए कि आप किस फील्ड में काम कर रहे हैं। आपके अगर आप हिस्ट्री देखो कि जर्नल्स कैसे स्टार्ट हुए सोसाइटी के अंदर, जर्नल्स जो स्टार्ट हुए थे वो बेसिकली पहले क्या थे, अब हमें अपने फील्ड के लोग ढूंढने के लिए ना नेटवर्किंग करनी पड़ती है इंटरनेट पे, हमें मैनले पे, जोटीरो पे अकाउंट बनाने पड़ते हैं, हमें रिसर्च गेट पे प्रोफाइलें देखनी पड़ती हैं। परंतु पहले क्या था, स्कॉलरशिप कुछ हैंडफुल ऑफ लोग होते थे और वो अपनी मीटिंग्स करते थे, मीटिंग्स कर करके जो उसकी प्रोसीडिंग छापते थे, दैट वाज द पॉइंट। दोज प्रोसीडिंग्स जो होती थी वो आहिस्ता आहिस्ता कर करके जर्नल का रूप ले लिया, जो हम आज देखते हैं इंटरनेशनल जर्नल ऑफ लाइब्रेरी साइंस, दिस एंड दैट। दिस इज द हिस्ट्री ऑफ हाउ द जर्नल स्टार्टेड। I don't know the exact century because today I have not prepared for that, because I have mentioned it in my research work, that how journals originated. These journals originated, just a minute. These journals originated from that because the proceedings of the meetings of scholars. आप अगर पुराने जर्नल देखो तो क्या मिलेंगे आपको, Proceedings of the American Mathematical Society, ILA Bulletin, Indian Library Association Bulletin, IGLIC Bulletin, सारे क्या है, ये सोसाइटी के पब्लिकेशन है जो नेशनल इंटरनेशनल सोसाइटी है किसी फील्ड की। वही बातें दोबारा रिपीट हो रही हैं। मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी ने क्या कहा, से द रिस्पॉन्सिबल कंडक्ट ऑफ रिसर्च रेफर्स टू द thoughtful and honest adherence to relevant ethical, disciplinary and financial standards in the promotion, design, conduct, evaluation and reporting of research in one's field. In addition to it, there are 4 common values associated with the responsible conduct of research: honesty, accuracy, reporting findings precisely and taking care to avoid errors. Reporting findings precisely, अपनी findings को precise, अगर आप ईमानदार आदमी हैं, अगर मैंने थोड़ा सा भी गलत काम कर लिया तो आपकी आत्मा, आपको सो नहीं पाओगे रात को।
आप सो नहीं पाओगे। अगर आपको एक मैं बता दूं, वो आदमी की इंटीग्रिटी के ऊपर, और जो डेली का चोर है वो कहते मेरा तो प्रोफेशन यही है, उसको क्या पता एथिक्स क्या होते हैं, वो उसको रात को बड़े राम से नींद आएगी। एक बार क्या हुआ, मैं कहीं पेपर दे रहा था और किसी बच्चे ने मेरी तरफ पर्ची फेंक दी, 10वीं का पेपर था संस्कृत का। तो मेरे को मैं परेशान हो गया, मतलब कि भी मैं कभी मेरे पर केस ना बने, क्योंकि मैंने पर्ची कभी देखी नहीं। और जो आदमी पर्चियां चला करके आता हो उसके लिए छोटी मोटी पर्ची चलाना क्या बात है। वो चीज होती है कि आप कितने बड़े चोर हो, मतलब की reporting finding precisely and taking care to avoid error. Efficiency, using resources wisely and avoiding waste. Efficiency, using resources wisely, आपने resources को wisely and avoiding waste. Wastage नहीं करनी, मतलब कि efficiently। ये है कि chemical है, आप लाइव काम कर रहे हो, दफ्तर में है, दफ्तर का प्रिंटर है, यूज करते रहो उसको, एसी चला करके छोड़ जाओ कमरे में। रिसोर्सेज को ईमानदारी से, ऑब्जेक्टिविटी, लेटिंग द फैक्ट्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स एंड इम्प्रॉपर बायस, लेटिंग द फैक्ट्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स, कि आपने क्या करना है कि जो आपका बायोडाटा है वो आपके बारे में बोले, आपको बोलने की जरूरत ना पड़े। सीवी क्यों देखते हैं, मंगवाते हैं पहले कि आपका बायोडाटा ही बता दे कि भी हाँ आपने काम किया। जब हम आपसे इंटरव्यू करेंगे तो बस उस सीवी को हमने सिर्फ स्टडी करना है, हाँ उससे हमें पता लग जाएगा कि बस इंटरव्यू में कितने आधे घंटे में क्या जज कर लोगे, पहले तभी तो फॉर्म भरवाते हैं। बस इंटरव्यू में तो आप ये जज कर सकते हो हाँ इसका अच्छा है, मतलब कि जो इसने बायोडाटा में लिखा है सारी चीजें सच हैं, और वो भी तभी सोच सकते हैं कि सिलेक्शन कमेटी फेयर है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन ने ये देखा, इथिक्स, इंटीग्रिटी, रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबल एंड इथिकल कंडक्ट ऑफ रिसर्च। एमआईटी ने क्या किया इसको प्रमोट करने के लिए, एनकरेज स्टूडेंट्स एंगेज्ड इन रिसर्च टू टेक द फ्री ऑनलाइन कोर्स रिस्पॉन्सिबल कंडक्ट ऑफ रिसर्च। क्यों उन्होंने लिखा हुआ है कि आपको पता है, अगर आप इंटरनेट पे देखोगे आपको बहुत सारे इंटरनेट पे कोर्स मिल जाएंगे, स्वयं पे बहुत सारे कोर्स मिल जाएंगे, प्लेजरिज्म पे, ये वो आजकल क्या है, मूक्स पड़े हैं, ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, अपना करिए इन टू टेक द फ्री ऑनलाइन कोर्स इन रिस्पॉन्सिबल कंडक्ट ऑफ रिसर्च। जो भी एमआईटी में एनरोल होगा उसको एक कोर्स करना पड़ेगा, उसका सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स इन्वॉल्वड इन रिसर्च शुड आल्सो रिव्यू द रिलेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन, आल्सो रिव्यू द रिलेशन ऑफ द रिस्पॉन्सिबल कंडक्ट ऑफ रिसर्च एट एमआईसी, वहां पर रजिस्टर करना पड़ेगा आपको। MSU provides all graduate students a minimum of 6 hours of discussion based training prior to receiving their degrees and annual। आपको पता है जो डॉक्टर्स हैं उनको समाज के बारे में सोशियोलॉजी क्यों पढ़ाई जाती है, क्योंकि वो ऐसा फील्ड है, क्योंकि वो ह्यूमन से डील करते हैं, ह्यूमन सब्जेक्ट से डील करते हैं, कि अगर वो गलत हो जाएंगे तो सारा तो इसलिए क्या है 6 आवर्स ऑफ डिस्कशन बेस्ड ट्रेनिंग कराई जाती है MSU के अंदर टू रिसीव देयर डिग्रीज, ताकि वो जिंदगी में इस डिग्री को गलत इस्तेमाल ना करें। यूजीसी ने ये जो प्रिंसिपल बनाए हैं उसमें लिखा है, रिकमेंड्स हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इंक्लूड द कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ एकेडमिक इंटीग्रिटी इन द क्यूरिकुला। जो हमें क्या है अपना जो सिलेबस बनाना है उसके अंदर बेसिकली हम क्या है, हम आजकल यूनिवर्सिटी लेवल पर पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हम गलती कहाँ कर रहे हैं, हम यूनिवर्सिटी लेवल पर एकेडमिक इंटीग्रिटी पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई, जब बच्चा फर्स्ट लेवल ऑफ यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन कहाँ से स्टार्ट होती है, आपकी सेकेंडरी एजुकेशन के बाद स्टार्ट होती है। जब आप यूनिवर्सिटी लेवल पे जाते हो तब तो आप बड़े मेच्योर हो जाए। आप पोस्ट ग्रेजुएट पे जब पीएचडी करने जाओगे और आपको नकल मारने की आदत है तो कैसे, और आगे तो बेसिकली वो ही चीज है कि अगर आप जब +2 लेवल के बाद ही बीए के लेवल पे ही एक कोर्स लगा दोगे कि भाई हर आदमी को एक कोर्स करना है कि उसको नकल नहीं मारनी, उसको अपनी असाइनमेंट जो सबमिट करनी है वो ईमानदारी से सबमिट करनी है, तो जब वो पीएचडी लेवल पे जाएगा, रिसर्च लेवल पे जाएगा, तो वो कभी नहीं करेगा वो काम। Include the cardinal principle of academic integrity in the curricula and elements of responsible conduct of research and publication ethics as a compulsory coursework. Academic dishonesty, क्या चीज है dishonesty? Research misconduct is fabrication, falsification or plagiarism in research activities or deliberate interference where fabrication is making up data or results and recording or reporting them. fabrication कर दिया, एक पीएचडी करनी है, एक दिन किसी इंस्टीट्यूट में गए, शक्ल दिखाई ताकि लग जाए कि भाई हाँ वो इंस्टीट्यूट में गया था। यही करते हैं हमारे इंडिया में लोग, पीएचडी करेंगे, एक दिन शक्ल दिखाएंगे और क्वेश्चनियर वहीं दे आएंगे, जो वापस आगे ठीक है, नहीं तो आइडिया ले आएंगे भाई हाँ हाँ। अरे भाई वो ह्यूमन सब्जेक्ट है, हर आदमी की अपनी परसेप्शन है। जब मैंने पीएचडी की थी, मैंने 350 एग्रीकल्चर साइंटिस्ट पे मैंने इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर इन इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट पे मैंने पीएचडी की है, परंतु मैं ईमानदारी से कह सकता हूं
कि मैंने 350 साइंटिस्टों से बात की है, वही कॉन्फिडेंस मेरे अंदर है जो आज बोल रहा है। जब मैंने मास्टर डिग्री का प्रोजेक्ट किया था 98 में, तो मैंने एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन द यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी ऑफ हरियाणा, मैंने कोई बहुत बड़ी रिसर्च नहीं करी। इन द प्रेजेंट 4 यूनिवर्सिटियों में मैं गया, वहां से क्वेश्चनियर भरवा करके लेके आया कि भी हाँ वहां पर उस टाइम ऑटोमेशन का फेज था 98 के अंदर कि हाँ वहाँ ऑटोमेशन का कौन सा सॉफ्टवेयर है, वहाँ कितने कंप्यूटर हैं, वहाँ प्रिंटर हैं या नहीं है, वहां पे किस तरह की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, प्रेजेंट स्टेटस एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। मैंने उस टाइम 4 यूनिवर्सिटियों के यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियों से बात की, तो वो जो कॉन्फिडेंस था एज एमलिब स्टूडेंट, मेरे को याद है गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार में है, आपने सुना होगा कुछ लोगों को ने, वहां का लाइब्रेरी ने मेरे को 5 बजे के बाद का टाइम दिया कि ग्यासुद्दीन मुकम्बी थे, फिर वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में चले गए थे ग्यासुद्दीन मुकम्बी। उनको मेरे से एमलिब के स्टूडेंट होते हुए मेरे को उनसे 1.5 घंटा बात करने का मौका मिला। मैंने कहा कि सर आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या हैं, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी 97, 98 और 95 वगैरह में शुरू हुई थी वो यूनिवर्सिटी 92, 93 में। तो वो जो कॉन्फिडेंस था वो बेसिकली उस टाइम पोस्ट डॉक्टरेट करके आए थे यूके से ग्यासुद्दीन मुकम्बी। तो दैट कॉन्फिडेंस, प्लेजरिज्म इज द एप्रोप्रिएशन ऑफ अनदर मैन्स आइडियाज। प्लेजरिज्म क्या है कि दूसरे के आइडिया को, ये नहीं कि मतलब कि प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर ने, आपने किसी का आइडिया चोरी कर लिया और प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर ने नहीं दिखाया। प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर कुछ नहीं है, उसको बेवकूफ बना सकते हो आप, वो आपसे ऊपर नहीं है, आपके दिमाग से ऊपर नहीं है प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर। वो तो सिर्फ जिन लोगों को उसके बारे में नहीं पता उन्हीं के लिए है वो। आजकल लोग बहुत बड़े बड़े इंग्लिश के एडिटर हैं जो प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर की सारी एडिटिंग ठीक कर देते हैं। प्रोसेसेस, रिजल्ट्स और वर्ड्स विदाउट गिविंग एप्रोप्रिएट क्रेडिट। परंतु कई बार हमें मजबूर किया जाता है, हम गलत काम नहीं करना चाहते। जैसे कि एपीआई आया, एपीआई में क्या हुआ, उसके बाद क्या आया, उसके अंदर कैपिंग आ गई। कैपिंग में क्या हुआ कि आप 400 नंबर बनाओगे तब आपके 150 नंबर बनेंगे, आप मजबूर हो गए। मेरे तो कई पेपर हमने अच्छा काम किया था कि जल्दी के चक्कर में प्रमोशन लेनी है, वो ऐसे जर्नलों में छाप दिए ताकि फटाफट छप जाए। हमें पता था कि बाहर के जर्नल में छपाएंगे तो टाइम लगेगा उस पेपर में। हमने एक बार एक पेपर किया बहुत अच्छा, हमने एक कैटलॉग तैयार किया मैथमेटिकली रिसोर्सेज का। मेरी कोलीग हैं तो वो मैथमेटिक्स की लाइब्रेरी में काम करती हैं, तो हमने काम किया, हमने बहुत एक्सटेंसिव स्टडी की। साइंस एंड टेक्नोलॉजी लाइब्रेरी एक जर्नल आता है, उसमें से देख करके कि भी हाँ कौन कौन से वो किस तरह के पेपर लिखते हैं। परंतु मेरे को इमीडिएट प्रमोशन लेनी थी, मैंने किसी ऐसे जर्नल में छपा लिया कि फटाफट वो छप जाए। चलो ठीक है, क्योंकि हमें मजबूर किया कि मैं अपनी प्रमोशन को लूज नहीं करना चाहता था, मतलब कि मेरी प्रमोशन डिले ना हो। तो अगर नहीं वो अच्छे जर्नल, हमें मजबूर किया जाता है कि हम कई बार तो वो चीजें अब दूर हो गई हैं भगवान की उससे। हमें जो ये नई रेगुलेशंस आई हैं इसमें काफी स्ट्रेस जो है लाइब्रेरी वर्क के ऊपर है, जो 2018 में आई हैं। तो हमें ईमानदारी से उसमें स्ट्रेस अपनी लाइब्रेरी के ऊपर काम करना है। तो डेलिब्रेट इंटरफेरेंसेस इंटरनेशनली काजिंग मटेरियल हार्म टू द रिसर्च स्कॉलरली वर्क ऑफ अदर्स। कोई एक आदमी है केमिस्ट्री में पीएचडी कर रहा है, उसका दोस्त है वो एक्सपेरिमेंट लगा के गया, उसमें तो गलत केमिकल डाल दिया उसने, डेलिब्रेट इंटरफेरेंस। उसके पेज पड़े हैं, फाड़ दिए, उसकी 2 फाइलें उड़ा दी लैपटॉप से। डेलिब्रेट इंटरफेरेंस इज इंटेंशनली काजिंग मटेरियल हार्म टू द रिसर्च और स्कॉलरली वर्क ऑफ अदर्स एंड मे इंक्लूड डैमेजिंग और डिस्ट्रॉइंग द प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स सच एज रिसर्च इक्विपमेंट और सप्लाईज, disrupting active experiments और alerting और deleting products of research including data। उसका डाटा डिलीट कर दिया, उसका डाटा खराब कर दिया। आपको पता है हम एम्बार्गो का एक सर्टिफिकेट लेते हैं, जैसे हम पीएचडी की सॉफ्ट कॉपी जमा करवाते हैं अपने यहाँ, तो यूजीसी की गाइडलाइंस है शोध गंगा की कि आपको एम्बार्गो का सर्टिफिकेट लेना है कि अगर कोई चाहता है कि भाई मैंने पेटेंट फाइल किया हुआ इस पीएचडी से, या कोई अभी रिसर्च डाटा मैं लीक नहीं कर सकता, मेरे पेपर पब्लिश होने के लिए गए हैं, तो आपको भी मेरा जो रिसर्च वर्क है वो शोध गंगा पे 1 साल के बाद डाला जाए, तो हम उसको 1 साल के बाद डालते हैं, उसको लोकल रिपोजिटरी में डाल देते हैं उसको। अकॉर्डिंग टू एमएसयू प्लेजिज्म फाल्सिफिकेशन यही चीज है, टेम्परिंग, चीटिंग, शेयरिंग वर्क फॉल्स अंडर द एकेडमिक डिसऑनेस्टी। यूजीसी मैंने बता ही दिया आपको, सबको पता है प्लेजिज्म क्या चीज है, बार बार डिस्कशन कर चुके हैं। एकेडमिक डिसऑनेस्टी कंसीक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, एमआईटी ने क्या कंसीक्वेंसेस किए, अगर हम कंसीक्वेंसेस नहीं बताएंगे, अगर निर्भया के लोगों को सजा नहीं मिलती, निर्भया के लोगों को सजा मिल रही है, जो सोसाइटी में अपराध है, जो हम अडल्ट हो चुके हैं, हमें एकेडमिक इंटीग्रिटी पढ़ाई जा रही है, हमें रिसर्च एथिक्स पढ़ाई जा रहे हैं, फिर भी हमें गलती करते हैं। हमें पीएचडी से पहले एक पेपर पढ़ाया जाता है रिसर्च एथिक्स के ऊपर, फिर भी हम गलती करते हैं, हमें सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि अब हमने डेलिबरेटली हम गलती कर रहे हैं।
These are the consequences which are listed on the MIT website. Academic consequences within a class or research project. अगर आप करोगे within a class, the instructor determines what action is appropriate to take, requiring the student to redo the assignment for reduced grade. उसको reduce, क्योंकि छोटा लेवल है, बच्चा लेवल है, जुविलाइन लेवल है. Assigning the student a failing grade for the assignment, उस पेपर में उसको फेल कर दिया, अगली बार अपीयर हो. Assigning the student a failing grade for the class, उस क्लास में फेल कर दिया. For research project, the supervisor determine what action is appropriate to take. Terminating the student participation in the research project. मैं आपको बहुत बड़ा एग्जांपल देना चाहता हूं पंजाब यूनिवर्सिटी का. हमारे यहाँ एक प्रोफेसर थी, प्रोफेसर ऑफ जियोलॉजी, प्रोफेसर विजय गुप्ता. उनको वो पैलेंटियोलॉजी पे काम करते थे और फॉसिल होता नहीं था, उसको लेकर के पेपर छाप देते थे वो, भी मैंने वहां फॉसिल देखा. इंटरनेशनल रिनाउंड, क्योंकि उन्होंने काम बहुत अच्छा किया, शुरू में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया. एंड ही बिकम ए वर्ल्ड रिनाउंड, इंटरनेशनली रिनाउंड जियोलॉजिस्ट. And then he gained that I can do anything. I should be. He started challenging the international community, and he started challenging the international community not by his academic integrity or by his real research work, by his false research work. There was no fossil, and he creates the imaginary, he writes paper on the imaginary fossils. He started doing the unethical practices. And another very good scientist and who belongs to the family of Birla Sahani Institute of Paleontology, Lucknow में आपने सुना होगा, Birbal Sahani Institute of Paleontology. One person from that family was also professor in Punjab University, Professor Ashok Sahani. And that person recognized him, that this person is doing wrong and start changing the other people's. What he do, then he made a complaint of that person, and his all research work was investigated by the international committee. And they go to the Himalaya region and they started digging whether there is such kind of fossil or not fossil, and there was no fossil of such kind. That was an imaginary. He started creating the imaginary. You don't think मतलब कि there are big blunders in sciences. There are big blunders in sciences. Sometimes we that by speaking high volume words, and because high volume words we become हम बहुत बड़े आदमी बन गए हैं. ऐसा नहीं है. उसको देखिए मतलब की चीजों को. तो वो क्या है कि ब्लंडर मत करिए. वो बहुत बड़ा ब्लंडरिस्ट बन गया, मतलब कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को, लोगों को जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे उनको जैसे कि वो अमेरिका में तो ऐसे जाता था जैसे कि वो लोग चंडीगढ़ से दिल्ली जाके आते हैं, मतलब कि 200-250 किलोमीटर के डिस्टेंस पे अमेरिका जाके आता था वैसे जहाज में. He was such a he gained so much popularity, and he started challenging the international geologist on false credentials, totally false credentials. And that person was punished, and the person who became professor in the age of 32, he was punished that he will remain only teacher, and he will never be given the chairmanship of the department even, and he will never, the person who has to go to the level of vice chancellor or some other higher authority, because he was an intelligent person. No doubt he was an intelligent person. He was a very good teacher, but जो उसका अहंकार था वो इतना बढ़ गया कि उसने बिग ब्लंडर करने शुरू कर दी. ठीक है, लेटर टू फाइल वो आप पढ़ सकते हैं, मेरे को कुछ पढ़ाने की जरूरत नहीं है ये चीजें. आई हैव गिवन सो मच टू यू. उसकी वो जो MIT की वेबसाइट पे जाकर के पढ़िए इनको कि क्या लिखा हुआ है ये, बिकॉज यू आर ऑल लर्नड पीपल. कमेटी ऑन डिसिप्लिन, प्लेजरिज्म के बारे में आपको पता है क्या चीज होती है. वर्ड फॉर वर्ड आपने वर्ड फॉर वर्ड कर लिया, फिर पैराफ्रेजिंग कर दी, उसको मोजाइक कहते हैं. थेजोरस क्या है? पैराफ्रेज. आइडिया को चोरी कर लिया, आइडिया को ऑथरशिप को क्लेम कर लिया किसी की. अब किसी बुक को, सेकेंडरी सोर्सेज को, मैंने जैसे सेकेंडरी सोर्सेज का एग्जांपल दिया था कि आपने सेकेंडरी सोर्स को आपने प्राइमरी सोर्स देखा ही नहीं, आपने सेकेंडरी सोर्स देखा, कोट प्राइमरी सोर्स को कर दिया. सेल्फ प्लेजरिज्म, अपनी एक ही बात को 10-10 बार कहते रहे, मतलब कि ठीक है ना. व्हाट इज सेल्फ प्लेजरिज्म? बताइए आपको सेल्फ प्लेजरिज्म क्या होता है? ये एक वही है कि क्या करते हैं
the practice of an author using portions of their previous writing on the same topic in another of their, मैंने तो ऐसे, I have seen so much papers that one paper a person has published in 2 journals, in the same papers, by changing the name he has published in. If you had made presentation, I make academic integrity and research ethics, I have spoken on this topic 10 times. But when I can speak, I can deliver lectures 10 times on the same topic. But when I have copyrighted it, when I have written copyright material, then you can't do the republish it by your name again. That is self-plagiarism. This practice is widespread and it aims at unintentional, violates the copyright that has been assigned to the publishers. इग्नोरेंस से भी हो सकता है, ये नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आपके जो what is the academic level of India? We are living in a same society, and we have learned the things from our teachers. If they have not given us such a training that how we have to write, how we have to publish, they have come to this stage by these means. How we will learn? They are our trainers. Our parents are our trainers. If they follow, but if a parent is a, अगर पापा ही चोर हैं तो बेटा क्या बनेगा, मतलब कि, क्योंकि फर्स्ट लर्निंग तो घर से ही होती है ना. इग्नोरेंस हो सकती है, लैक ऑफ नॉलेज ऑन द एथिक्स ऑफ स्कॉलरली राइटिंग, पुअर राइटिंग स्किल. टीचर को ही नहीं पता कि भाई स्कॉलरली राइटिंग क्या है, उसको बताया ही नहीं गया. मैं आप नहीं बोलना चाह रहा, मतलब कि ऐसे लोग कहते हैं अरे रेफरेंस को कौन पेपर पीएचडी में चेक करेगा, जो मर्जी लिख दो ईयर, अगर नहीं पता लग रहा तो लिख दो. अरे भाई तुम्हारा दिमाग को तो पता है, खाली छोड़ दो, एनडी लिख दो, नो डेट, मेरे को नहीं पता लगी. कौन सी गोली चल जाएगी जब जो आदमी ने ईयर नहीं चेक करना वो एनडी चेक करेगा. प्रेशर फ्रॉम सीनियर्स, पब्लिश और पेरिश सिस्टम, पब्लिश करो नहीं तो खत्म हो जाओगे. ओबेशन, अनड्यू ओबेशन. अरे भाई अच्छा टीचर होना बहुत बड़ी बात है, स्कूल लेवल का टीचर होना बहुत बड़ी बात है. अनड्यू ओबेशन. फास्टर, वो चल पड़ा, जो जैसे कि मैं बता रहा था कि एग्जांपल, फास्ट बन गए, जल्दी जल्दी सब कुछ करना है, पहले सीधी टॉप पे चढ़ जाना है सीधा ही. चांसेस ऑफ गेटिंग कोर्ट और एक्शन बीइंग टेकन इज स्लिम. आपको चोरी करी पता है, कुछ होना नहीं. रिसर्च डाटा मैनेजमेंट सिस्टम है ही नहीं, आपका रिसर्च वैलिडेट होनी नहीं. अगर आपके रिसर्च डाटा मैनेजमेंट की बड़ी बात हो रही है आजकल, आप लोग सब लोग लाइब्रेरियन हैं. People are talking about research data. What is research data management? Research data management is that everything related to your research that should be preserved. Where are your questionnaires? Show us. Because अगर आपकी कहीं चोरी पकड़ी जाती है, that can be validated that you have visited the school. Everything related to your research should be preserved. That is research data management. These are the university grant commissions. ये 2018 के हैं. इनको पढ़िए, ये बहुत अच्छे हैं. इसमें अलग अलग यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, प्रमोशन ऑफ एकेडमिक इंटीग्रिटी एंड प्रिवेंशन, इसमें क्या है, व्हाट आर डिटेक्शन बताया हुआ है कि किस तरह का प्लेजरिज्म है. सब लोग इसको पढ़ करके इसको पढ़िए कि भी हाँ, इसके अंदर डिफाइन किया है कि माइनर प्लेजरिज्म क्या होता है. मान लिया कि किसी ने छोटी मोटी प्लेजरिज्म कर दिया 10% ये वो, तो उसकी क्या सजा होनी चाहिए. अगर 20% किया तो क्या है, अगर एक गलती करके दोबारा दोहराता है तो फिर क्या है, और उसके लिए किस तरह की कमेटी होनी चाहिए. यूनिवर्सिटी लेवल कमेटी शुड बी देयर, इंस्टीट्यूशन लेवल कमेटी शुड बी देयर, देयर शुड बी वन एक्सटर्नल एक्सपर्ट, देयर शुड बी वन एक्सपर्ट who knows how to check the plagiarism, who has the knowledge of plagiarism softwares. In India, these plagiarism softwares, in India, these are very successful these days. They have made a threat to the academic community. Now people are feel threat from these plagiarism softwares, because Indian academic level is not so high that, so these plagiarism softwares have made a sufficient threat in the Indian society that we should not do plagiarism. You know, Urkund is there, you know, Parentin is there, there are many other softwares there are some free, and the strength of this software is that this repository base behind them. Jitni strong repository hogi, because they do check the similarity index, and jitni wo
उसके अंदर दूसरी रिपोजिटरी में डॉक्यूमेंट होंगे, जितना उनका कोलैबोरेशन होगा, जितने पब्लिशर्स है, जितने उनके पास मैन्युस्क्रिप्ट, जितने लोकल डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो सारा का सारा, क्योंकि वो हिंदी पंजाबी में क्यों नहीं है प्लेजिज्म चेकिंग, क्योंकि हिंदी पंजाबी में रिपोजिटरीज हमारे, क्योंकि हिंदी क्या है, हमारी इंडियन लैंग्वेज है, पंजाबी, उर्दू, ये क्या नाम है, हमारी मराठी, जो भी है हमारी रीजनल लैंग्वेजेस, बिकॉज क्योंकि इनमें क्या है कि हमारा जो लिटरेचर है वो पूरा डिजिटाइज नहीं हुआ, और इसीलिए लोकल सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, वैसे 2 आए हैं, परंतु इंग्लिश जो लिटरेचर है, टोरेंट इज ए गुड नेम, उरकुंड, क्योंकि उरकुंड जो है, मतलब कि उरकुंड इज आल्सो, ये यूजीसी हैज गिवन द ऑप्शंस टू यूज उरकुंड, बिकॉज आई एम अगेन सेइंग the purpose is just to aware the community. Once I discussed with a person from the InflibNet, why you have taken in, not taken Turnitin, why you opted because Turnitin has some more strength than that Urkund. He has given me the valid answer. He has said to me, I am telling you the name, Manoj Kumar K, that our purpose is just to aware, because Turnitin is so much expensive that we can't give it to all the institutions, to all the academic institutions. It is so much expensive. We can't give it to all the institutions. Our purpose is not to, because to bring awareness. First thing is awareness. I have awared you. You are not a kid. You can very well download this document and read it, because this document has released in 2018. 1 year before, I also don't know about this document. So what I will, so this is a simple English language document. You are all well aware. So this is nothing. I have told you the importance of this document. What is this document? What is the relevance of this document? Why this document has been made? I have clarified that. So now you will automatically have an interest that we will download this document and we will study that. This is my purpose to give you lecture. I think I should now take rest, and thank you for patience learning. And again, we will meet, we will discuss some more things. And thank you for patience learning, listening to me. Thank you so much, Jivesh sir. We do have a couple of questions from the participants. One participant has made an observation that some universities, private universities, are even selling degrees and certificates, and there's not much focus on learning outcome, but especially in private setups, I mean, the education is more like a commercial thing. Yeah. Mohit, I understand your question. Now I will give the answer. Yes, sir, please. If we will talk about the selling of degrees, these are, we can say, the low standard of higher education. This is in both in private sector as well as in public sector. This is in both the sectors. Okay. Because the private sector, there is two kind of private sector. One private sector is much higher than the public sector. If we will talk about the Shiv Nadar University, that private sector is run by HCL Group. If you will see the standard of that private sector, it will be much higher than many public sector. Another side is a local engineering college in comparison to NIT. That private sector will be much lower than that NIT, because वो लाला की दुकान है. लाला की दुकान समझते ही हैं, उसने जिसने चिन्नी तेल बेचना था, वो पैसे कमा करके जिस देश में जो होता है वो इंजीनियरिंग कॉलेज खोल के बैठ गया. जी, समझ गए ना. मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ. आई बिलोंग टू हरियाणा. तो मैं कई बिजनेसमैनों से बात करता था. वो कहते यार आजकल इंजीनियरिंग कॉलेज का बिजनेस बहुत चला हुआ है, एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना है कहते. तो लाला जी को तो अब यही है कि उसको तो अपनी डिग्री, उसको क्या पता, जो 10वीं पास बंदे को क्या पता, मतलब कि वो क्या है. एक पर्पज है HCL ग्रुप का कि भाई हाँ, हमें एक जो कंपनी होती है, जब रेफरीड एक इतनी बड़ी कंपनी बन जाएगी, तो रेफरीड कहेगी कि मैं पब्लिक सोशल एक कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. मोहित जी. जी सर होती है कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. जी सर. तो सोसाइटी के लिए कुछ करूं. जी सर. रेफरीड को सोसाइटी के लिए करे. जी. तो जब खैर हम अभी भी बहुत छोटी खोल लेगी ना, अभी भी हमारा मिशन तो प्रॉफिट से कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो लोग कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत काम कर रहे हैं ना, वो तो अच्छा काम कर रहे हैं. जी. और जो लोग काम कर रहे हैं लाला की दुकान की तरह, वो नकली काम कर रहे हैं.
जी, बट सर मैं एक ये भी जानता हूँ कि अभी जैसे पिछले 5-6 साल में आप शायद मुझसे अग्री करेंगे कि ये थोड़ी कंसोलिडेशन हो गई है। जैसे ये जो लाला की दुकानें जितनी आप हरियाणा या पंजाब की बात करेंगे हाँ, वो बंद बंद हुई हो हुई रही है, बंद हो रही है, जैसे जैसे चीजें आ रही है ना, जी जैसे जैसे हम प्रीडेटरी जर्नल्स की बात करने लगे हैं, जैसे जैसे हम और चीजों की बात कर रहे हैं, तो चीजें कम होने लगी हैं। कुछ क्वालिटी चेक्स बढ़ गए हैं। वो स्कूल बन रहे हैं। अब बेसिकली हमें स्कूल अच्छे चाहिए, हमारे देश में स्कूल एजुकेशन बड़ी पुअर है, वो स्कूल बन जी रहे हैं, वो बीएड कॉलेजेस हैं, जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, वो स्कूल बन रहे हैं। जी सर They are एक turning in, they are because that they those lalas are changing their business from engineering college to the school. अच्छा, अरे सर ये बताइए कि पंजाब यूनिवर्सिटी में ये टू कीप अ चेक ऑन एकेडमिक इंटेग्रिटी जो गाइड्स हैं वो तो अपना रोल करते ही होंगे, बट लाइब्रेरी क्या रोल अदा कर रही है और क्या क्या इनिशिएटिव्स आप लाइब्रेरी लेते हैं? कई बार हमें देखो लेक्चर के लिए बुलाया जाता है, वी डिलीवर लेक्चर्स टू द रिसर्च स्कॉलर्स, वी अवेयर देम अबाउट दिस प्रेसिडेंट सॉफ्टवेयर्स, and sometimes because this topic I have prepared, Department of Education called me, the topic I have shared with the participants of today. जी सर I have prepared this topic just 1 year before when Department of Education called me, and I was this I came to know that there is some document has came from the UGC and about the academic integrity. So I should, and one department has invited me that Jivesh, please speak to our students, research scholars about this academic integrity. So that I have prepared myself for speaking on this topic. So सर एक पूनम बाजपेयी ये जो जी लिखा है ना, ये यूजीसी रेगुलेशन 2018 है, जी इसमें सर लिखा है कि जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, हिंदी सबको समझ आ रही है ना? आई नीड अरे नो, सर आई थिंक। जिस बेबाक तरीके से आप बात कर रहे हैं कि मतलब हाँ, बस 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 यही बस चाहिए था सर, बस हाँ इस हाँ सेशन हाँ, में बस 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 मेरे को मतलब कि वो मैं नेचुरल फ्लो से बोल रहा हूँ, मतलब कि ना, बस सर यही चाहिए नेचुरल था। फ्लो से नहीं बोल रहा। जी हाँ, सर जी तो बेसिकली क्या है कि मतलब कि वो जब हमें बुलाया, जी तो ये जब यूजीसी रेगुलेशन आई है ना, इस पे लिखा हुआ है कि आप जब इसको पढ़ेंगे ना, इस पे लिखा है कि सारा का सारा, ये मेरे पास में कागज है, इसको पढ़ोगे 3 पेज 5-6 पेज का ही डॉक्यूमेंट है कि भाई बच्चों जी को लेक्चर देना है, ग्रेजुएट लेवल पे लेक्चर देना है, और जो जी बच्चों का कोर्स वर्क है पीएचडी स्कॉलर्स का, उनको एक कोर्स कराना है इसके ऊपर। ओ ओके ओके, तो मतलब हाँ, इसमें अब सारा कुछ डिफाइन है। गवर्नमेंट की जैसे तरफ हमने से भी एमआईटी का एकेडमिक वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एमआईटी ना, जी that सर they have to done one online course on this, and they have to submit the one certificate of doing one online course, and they have to participate in training program, etc. So such kind of things have been documented in this document. जी 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 जी, तो सर Everyone who is attending this workshop, who has not gone through, many of you, I think many, there may be learned librarians than me here, they already know much better than me. I hope so. And there may, but I think who the persons who are not have gone through this policy document which is released by UGC, they will all read this document carefully. sir, can you please tell the title of this policy document, please? Everyone know, Dr. Saab, everyone know, Mohit ji, this is a University Grant Commission. University Grant Commission promotion. I am sharing my slide. Just I am saying. This is I have written one. University Grant Commission promotion of academic integrity and prevention of plagiarism in higher educational institutions. Regulations 2018. Librarians are search engine, Dr. Mr. Mohit. Librarians are search engine. They know how to search a document. भावना से मैं फिर भी अपनी कुलीग से अनुरोध करूंगा कि वो इसका एक बार अभी लिंक चैट बॉक्स में डाल दे निकाल के पार्टिसिपेंट्स के लिए। UGC regulations, University Grant Commission, promotion of academic integrity and prevention of plagiarism in higher education institution, regulation 2018। सर ये बताइए, पूनम बाजपेयी जी का क्वेश्चन है कि आपके पर्सनल एक्सपीरियंस में मतलब बहुत कॉमन क्वेश्चन हो गया है ये आजकल, बट फिर भी उरकुंड आपके हिसाब से सफिशिएंट है एंटी प्लेजरिज्म के लिए टू स्टार्ट? I don't think so. ओके ओके, आपने दोनों कंपेयर किए होंगे तो आपका I पर्सनल don't think एक्सपीरियंस so. थोड़ा बताइए। In my view, Turnitin is much better than Urkund. ओके ओके सर, ठीक है। अगर और भी किसी पार्टिसिपेंट का कोई But क्वेश्चन है I am again saying that this plagiarism detection software doesn't check the plagiarism. They check the similarity only. सिमिलैरिटी Our purpose is just to bring the knowledge. In 1 hour I can't give knowledge to the participants. My purpose is just to have an insight about this topic. I can't teach you this academic integrity in 1 hour. जी जी But my purpose is just to
जैसे कि वो माचिस की तिल्ली जलाने वाला काम होता है ना, माचिस वो तिल्ली लगाने वाला काम है, मतलब वो जो प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर है वो बस एक स्टार्ट हो सकता है, वो एंड नहीं है। बस 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 एक किस्म से, जब जैसे कि ना ये कि हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय है सागर के अंदर, उसकी जी वो, जी जी हाँ जी। यहाँ पे मध्य प्रदेश में ही है कुछ लोगों को। लाइब्रेरी साइंस के लिए हाँ, काफी। उसमें एक बार 5-6 साल पहले न्यूज आई थी कि 82% थीसिस उसके ना, जबकि मैं कह रहा हूँ कि प्लेजरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर प्लेजरिज्म नहीं चेक करता, तो परंतु उस प्लेजरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर ने ही 82% लोगों के थीसिस रिजेक्ट कर दिए। ओ, कितनी ओ, सिमिलैरिटी थी उनके अंदर। जी जी जी। तो ठीक है ना? अभी हाँ, हमने एक लिंक भी शेयर कर दिया है पार्टिसिपेंट्स के लिए। सर ने जिस पॉलिसी डॉक्यूमेंट की बात करी, आप देख सकते हैं उसे। और हमने फीडबैक लिंक डाला है डॉक्टर जीवेश सर के, बांसल सर के टॉक पर। आप प्लीज उस फीडबैक लिंक को भरिए, उसको ही अटेंडेंस ट्रीट करेंगे। और सर, काफी लोग आपका कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस मांग रहे हैं आपसे आगे। मेरा ईमेल एड्रेस है लाइब्रेरियन, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 98, वो गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं वैसे, 9815440621। 98554। 9815440621। जी सर। हाँ गूगल पे डालिए जीवेश बंसल, आ जाएगा वो, हाँ। और सर पंजाब बहुत ही डिस्ट्रिक्ट वेब पेज पे आ अप्रोचेबल जाएगा है। वो। और अगर सर का समय रहता है तो मैं खुद भी उनसे काफी गाइडेंस आजकल लेता मैं हूँ। प्लेजरिज्म में जी बेसिकली क्या है कि दिल्ली में एक बार क्या हुए थे, सड़क छाप पब्लिशर बन गए थे, और जी सड़क छाप ही ऑथर आ गए थे। जी तो हम सब, सड़क छाप ऑथर का मतलब होता है कि जैसे कि पैसे लेकर करके सड़क छाप पब्लिशर, पब्लिशर ने क्या किया कि किसी स्टूडेंट से कर लिया, और उसने क्या किया कि 5-5 घर में बैठ करके 5-6 चैप्टर इधर उधर से कॉपी करके किताब छपवा ली। उनको जी हम सर। सड़क छाप ऑथर कहते हैं, मतलब की। जी तो तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो जिस ऑथर ने किताब लिखी है उसकी उसकी वो कौन है, वो किस यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, कौन है वो बहुत कुछ लिखेगा, मैं ये किया, मैंने लेक्चर किया, पर ये नहीं लिखेगा कि मैं इस यूनिवर्सिटी का आदमी हूँ। परंतु मेरी जी वेबसाइट पे मेरा नाम लिखा हुआ है, जीवेश बंसल, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। हाँ। तो धन्यवाद सर इस ठीक है टॉक के सर, लिए। ओके ओके सर, ओके ये ओके। बहुत इंफॉर्मेटिव रहा। आरजीपीवी, एआईसीटी और मेरे अपने पर्सनल सर, थैंक यू सो मच Okay, sir. फॉर No, thank टेकिंग you, आउट द thank you, टाइम thank सर। you, thank you. Okay, I am leaving the meeting now. थैंक यू सर, थैंक यू। तो पार्टिसिपेंट्स, मैं आपको अगेन ये बता दूं कि हमने ऑलरेडी एक शेयर करा हुआ है फीडबैक लिंक इस टॉक का। आप प्लीज इसको भरिए और मेक श्योर कि आपकी अटेंडेंस इसमें रिकॉर्ड हो। हम इस फॉर्म को ओपन रखेंगे, फॉर अनदर 2 आवर्स और सो। और अब हम लंच ब्रेक लेंगे। वी विल असेंबल बैक एट 1:45। नेक्स्ट सेशन इज एट 1:45। टिल देन ये चैनल ओपन रहेगा आपके पास। फीडबैक फॉर डॉक्टर जीवेश बांसल भी है, और सेशन 10 का फीडबैक लिंक भी है आपके पास। आप दोनों फॉर्म्स को जरूर भर दीजिए। हम कनेक्ट करेंगे फिर से 1:45 पे। टिल देन प्लीज हैव अ गुड लंच कर लीजिए, ब्रेक ले लीजिए। वी विल कनेक्ट अगेन एट 1:45 ऑन दिस सेम जूम मीटिंग। वी विल कीप दिस ओपन। थैंक यू।
बंद कर दो अभी. Good afternoon, Bhairappa sir. Welcome to all the participants back. I hope you had a great lunch. And we will start the next session now. And next in line, we have Dr. Anand Bhairappa. And he's going to present his very relevant talk on ebook content providers. Dr. Anand Bhairappa is from Indian Institute of Sciences, Bangalore. And before we give the control to Anand sir, Dr. Choksi has a few announcements to make. Sir, please. Thanks to join. I welcome to Bhairappa Saab, librarian IISc at Bangalore. He is a most knowledgeable person in the field of library and information science. Before starting that talk, I will talk to all the participants. Dear participants, there is some issues is there. The conditions of your certification is that AICTE must कि आपको मिनिमम 80% अटेंडेंस होना ही है. आपका 80% अटेंडेंस के बाद ही आपको एग्जाम में अपीयर करने की कंडीशंस है. सेकंड, आपको 60% मार्क्स आपके ऑनलाइन एग्जाम्स में आना ही चाहिए. थर्ड, आपका जो टोटल क्वेश्चंस होंगे मल्टीपल चॉइस में 50 क्वेश्चंस का है. 50 क्वेश्चंस और every questions having a 2 numbers, 2 marking is there. It means 100 numbers मार्क्स का टोटल क्वेश्चन पेपर होगा और मल्टीपल चॉइस का होगा. हर सेशन में आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे. हर सेशन से 2 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, 2 या 3. It means total we have a 25 lectures is there and total marking is 100 and every session has 2 questions और इन क्वेश्चंस पे आपको 2 नंबर की मार्किंग होगी जिसके बेसिस पे आपको पासिंग मार्क्स. लास्ट डे आप इट मींस 23rd the examination will be held at 1:45 to 2:45 and इसमें सभी को अपीयर होना. देन AICTE will provide the certification to you, otherwise you will not certified by the RGPV or AICTE. Third, in the schedule there is some little bit change is there. In 29th Jan, session 21st 11:45 to 12:45 there is a handouts training for Urkund anti-plagiarism software. The influminate persons and UGC and eGalaxy persons are given a training for anti-plagiarism software. तो आपको सभी को शुभकामनाएं. आप जो भी सेशंस हो रहे हैं काफी सीनियर पर्सन्स आ रहे हैं, काफी अच्छे एक्सपर्ट्स आ रहे हैं और आप उनको जरूर सुने और उनको आप नोट डाउन करें क्योंकि क्वेश्चंस इन्हीं में से पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन हर सेशन पे 2 क्वेश्चंस होंगे और मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस. ओके, थैंक यू Bhairappa साहब. वेलकम टू that STTP training programs. May I over to Mohit? Thank you, sir. So, Dr. Anand Bhairappa ji, he is one of the most renowned library science professionals in the country, and those who are fortunate enough to listen to him for the first time, Dr. Anand Bhairappa has a PhD in information sciences. He has done his information and knowledge management course from Indian Institute of Science, Bangalore. He's a GE certified 6 Sigma black belt. Anand
Sir has spent over 20 years in top multinational corporates. He has experience in leading global operations in various areas covering digital libraries, business information services, corporate communications, research services, and knowledge management. He has served at Deutsche Bank Group, Z Media Group, and General Electric. So these are really, really impressive corporates to work with. Anand sir has joined Indian Institute of Science in the year 2017, and he's currently heading the JRD Tata Memorial Library at IISc. Anand sir has co-edited a book and 5 conference volumes, written 4 book chapters, and published papers in journals and conferences. He has been invited by many national and international conferences and delivered invited lectures, plenary talks, and chaired technical sessions and panel discussions. Anand sir has served as Scopus Content Selection and Advisory Board. He's the recipient of a Global Knowledge Management Leadership Award. He has been honored by listing his name in 50 most influential knowledge management professionals. That's a big feat. Government of Karnataka has honored him with Best Librarian Award. He's also the winner of Vikram Sarabhai Operational Excellence Award. Anand's area of interest include knowledge management, digital libraries, Six Sigma, intellectual property, scholarly content, and of course, publishing. Today, Anand sir will be giving us an insight into ebooks content providers, a very hot and relevant topic given the fact that most of the students are now looking for ebooks as they don't have access to print collections. So I request Anand sir to please enlighten the audience with your thoughts. Over to you, sir. Thank you, Mohit. That was a nice introduction. So thank you very much. So am I audible? Yes, sir. We can see you. We can hear you loud and clear. Okay. Please allow me to share my screen. It may take a minute. You can do it, sir. No problem. Yeah. There is a green button, sir. Share screen. Yeah, I clicked on that. I'm looking for desktop. I'm not finding. Yeah. Wait, where can I find the desktop? Sir, I mean, when you click on the share button, usually it is the first icon in the basic. Oh, basic, right? Okay. Yeah, go to basic and the desktop one should be. Okay, let me go to basic and share. Yep, we can see your screen now. Wonderful. We have Microsoft Teams currently visible to us. This is not the one, right? Yeah. Click, yeah. Close this one. I'll close this. Okay. And We cannot see your presentation right now. okay, 1 second. Let me open that. I have it here. You might have to share your screen again because. Yeah, I'm opening it. Yeah. You see it now? Not yet. We are on Microsoft Teams. We can Still? see Microsoft Teams right now. How about now? Just a second. Try to share it again, sir, and this time select the Microsoft presentation. Yeah. Share the screen once again. Okay, let me share screen again.
Yeah, we see the presentation now, sir. If you'll be kind enough also to disable participant annotations, you will see a more button next to share screen. A more button next to share screen with 3 dots. The Okay. zoom control. Yeah. Share screen. Next to that, you will find more button with 3 dots. I see stop share. No, no, Oh, no, no. I see it now. Yeah, yeah. Click So on more and you will see disable annotation from others or disable participant annotations. One of these two options. Third or fourth option, it should be there. Disable annotation from others. disable annotations. Okay. Yeah. Thank you, sir. We are all set. Okay. So thank you very much. I hope all of you had a good lunch. So if you had a good lunch, I think I'll have a tough time to really make you, awake and tell you something about ebooks. And coming back to this topic, this is not my topic. I chose to speak here. I got this topic from Dr. Chokshi, and so he asked me to talk about ebooks content providers. So I recoined the title ebooks publishers, access models, and libraries. Um, so what I have today is for you for next 45 minutes is this is my presentation plan. So very quickly to set the context, we look at ebooks and also compare that with the print books to basically understand what is the one or two differences we have to notice when it comes to looking at ebooks compared to print books. Then once we look at that, though we are all from academic institutions, we are generally interested in textbooks and scientific technology and management books. We'll quickly look at general books as well, because in the domain of ebooks, general books are really leading the trend. So we look at that and we look at quickly who are the content providers, what are the access models we have there and all. Then once we look at the general books, similarly, we'll also explore the content providers, access models, and the issues and challenges when it comes to buying scientific books, textbooks, and all of that. That is specifically for us LIS professionals. And recently, we did a big exercise about building ebook collection at IISc, and I'll take you through some slides giving a case study about how we went about building ebook collection. Hopefully that should be able to help participants, whoever is interested, to involve in uh, developing e-content. And then I have one slide at end to talk about our learnings and insights. I hope this will give you some learnings at the end of the session. Now, coming back to the books and ebooks, if you look at all of us, most of us, when we studied in LIS schools, we were all trained to really handle only print books. I don't think many of us really got a chance to really learn from our teachers or from LIS schools to really deal with the ebooks, how to procure them, how it happens, and all kind of a thing. I know we don't have much time to really talk in detail about how ebooks is getting produced, what are the things we need to do and all. But to set the context right, I just wanted to show this slide. If we really so if you really look at the print books, here is a simple flow chart which will explain the workflow of publishing a print book. And so as an author, you give a content to publisher or aggregator, and he will produce the content. And once he produces the content and he publishes the book, he will market it, and through distributors and booksellers, and he distributes that, then he sells it, and then consumer will get the content. It's a very simple, straightforward thing. But if you look at print and compare that with the ebook, what is the difference? There are 2-3 areas where we have a difference. Everything else, all steps and processes remain same. But when it comes to production, here in the print world, we print a book. Here we don't print a book. In fact, we here instead of printing,
we really do the digital production. So this is where a lot of, things will happen. We do digitally produce a book, and also most of the publishers today, they apply DRM. They may not really implement that when they sell books to libraries, but generally when publisher is coming out with an ebook, DRM is an inbuilt. That's one change. And then when it comes to distribution, in the print world, distribution happens through suppliers, agencies, but here distribution happens through a content platform. So generally you have a content platform, so we do all of that. So this is the generally difference. So the point I wanted to make is, when you want to talk about ebooks, when you deal with ebooks, we need to understand that we need to understand how digital production happens, and we need to also understand, is there a DRM in the process of digital production, and there will be a surely content management software when it comes to ebooks, because you can't get ebook without being it on content management software. So you need to understand that. We'll talk about that in detail. Generally, publishers host ebooks on their journal platforms, but there are some aggregators who are really gone forward and developed their own content management softwares for ebooks. So it's important to understand that, because there will be DRM, there will be access rights, there will be a lot of features in that. And then the most important thing is, when it comes to ebooks, you need to have a device to access it. It's very obvious thing. It could be a PC, a computer, a reader, whatever is that. So that is the difference. So when it comes to ebooks, the production happens in digital format. When production happens, you will have a generally DRM in that. And then you always have a content management software or a platform to host the ebook. And then you need a device. So that's basically what ebook is. And if you look at generally, books, I look at ebooks both from general books point of view and also science and technology books point of view. So here, when I say general books, so we look at quickly who are the content providers, what are the access models, and how libraries can get general books when it comes to ebooks. So if you really look at ebooks global market share, the key players in general books are very interesting actually. So if you look at the developed countries, North America, Europe is really leading, and Asia Pacific is next, is a global trend, and Latin America and Middle East are also players in this. And the key players in general ebooks are, interestingly, Amazon, Apple, Kobo, and Barnes and Noble. So generally, if you go to public libraries and you see Amazon, Apple, Kobo, and Barnes and Noble, so these are the 4 players. And very interestingly, if you look at each player, I have also put there in the parentheses the kind of reader they have developed. Amazon has its own reader Kindle. Apple came out with e-readers. Kobo has their own ebook device, reading device Kobo. Barnes and Noble came out with Nook. So the point here I'm trying to say is, these are the more major players in the world when it comes to ebooks. In fact, the US market, at least about 10 years back, all the public libraries in US, most of them rather, they really rolled out ebooks for public. So in India, we are yet to see those kind of trends, but in US, public libraries really, introduced ebooks in a big time 10 years back by using these players. So the readers are also there. As I said, Amazon has a Kindle, e-reader from Apple. Kobo is more or less, they look similar, but they are all proprietary softwares. They came out with these, readers specifically because of a couple of reasons. One is, so as I said in my previous slide, ebook always needs a thermal gadget, and you need to really have a reader to really do. At the same time, e-format is always vulnerable when it comes to really sharing, copying and all. They also wanted to protect their content. So from protection point of view and reading point of view, and also from giving a good experience to users,
all of them, they came out with ebook readers. And because of this, new initiative of coming out with ebook, they all became very successful. And so you may ask one question. See, Amazon is very popular, big player. Apple is a big. Kobo is very big. Barnes and Noble is very big name in fiction, general books. But why we don't see them in libraries and and institutions? Even if you want to really introduce Amazon platform or Apple platform or Barnes and Noble platforms in institutions, it's not possible now, because I mean, all of you know that why it's not possible. If you look at all these four players, Amazon, Apple, Kobo, Barnes and Noble, these are major commercial players. They are not the publishers, they are the aggregators. In the sense, they buy books from different publishers, authors, and they host them on their platform. For example, Amazon has few lakhs of books, and their model is, since they are aggregators, they will not be able to sell to institutions. Their model is, business to customer. I mean, they directly sell to end customer. I, as an individual, can go to Amazon and buy a book, and I can use in my laptop, in my desktop, in my iPhone, whatever is that. But I will not be able to really buy books from Amazon to my institute, Indian Institute of Science, because Amazon as a company and all these aggregators have positioned themselves as a B2C players and not B2B players, because they don't publish books. They are governed by the content owners like publishers and authors for giving rights, access rights and all. So that's why it's very, in fact, there is a lot of push at international level that Amazon has a lot of content. Many libraries are really insisting them to roll out a model in such a way that, in a compliant way, we can have some ebook collection for institutions on Amazon platform. If that comes, I think, that's going to be a trendsetter. If Amazon can really go back to authors, publishers, and they can negotiate rights to give access to ebooks to institutions, that is B2B, and that's going to change everything in the world. For example, biggest libraries like IIC, if you come to IIC, our total collection is about total altogether we have about 6 lakhs. I think Amazon has more than 15 lakhs of books already in their collection. So if Amazon kind of a player can come in and introduce ebooks to the institutions, that's going to really change the trend, and it can become bigger than any other library in the world when it comes to collection. But they do have some issues, and it's not going to be easy to get rights and all the required copyright permissions from publishers to do that. But knowing Amazon, and they may really do that, so that's interesting. So we need to really understand all these things. As I said, all these aggregators have a limited rights. They don't have a copyright, and since they don't have a copyright from the publishers and authors, so they'll have a limited limitations in giving license permissions to buyers. So this is what I wanted to really give you. And very soon, my guess is, the way business models are changing, and the way innovations are happening, the way disruptions are happening, and all these players may come out and introduce some general books. The moment Amazon or Google or Apple or any of these people introduce general books, and that will become bigger than any other library in the world. So that's the point I wanted to really try. And also, most of us, we think that in the general book segment, the data is little old here, but still I wanted to give you a perspective about what percentage of general books are available in e-format. If you look at the first point, is the old data, but 51% of the total books getting published in the fiction, in novels, are available in e-format. That was in 14. That's a big thing. For example, in India, if you look at regional languages and all, I don't think any regional language in the area of fiction, we really see books getting published in e-format. But in the developed countries like US and all, in 14 itself, there was about 51% of the total fiction type of content was available in e-format.
Similarly, any other format, there was a 62% there. So it's very interesting. Developed countries are really, because their digital infrastructure is, very high, and also everybody is digitally, connected. E-formats are really becoming very popular, and very soon it's going to be the leading format when it comes to any kind of a book, whether general book or a fiction or a textbook, anything kind of a thing. So I just wanted to give you that. And I talked about in this slide that any of these things are not really helping libraries to really get books, because as I said, they are B2C players, and unless they plan to become B2B players, and we will not be able to really utilize their services for libraries. But there is an aggregator by name Overdrive, and he is again very popular US based ebooks aggregator, and most of the public libraries in US, they use Overdrive aggregator. He's someone similar to our aggregators like EBSCO, ProQuest, Informatics, these kind of players, and he aggregates all the books, and he gives he negotiates rights and licensing terms according to the public library needs, and they gave. In fact, it's very, very popular in US, and US public libraries implemented this, as I said earlier. And in India, many corporates are being, are exploring this. In fact, I know that TCS is really experimenting, exploring Overdrive after, COVID. A lot of libraries are being closed everywhere in corporates, and they're really moving from physical libraries to online. So Overdrive kind of players are really becoming very relevant now, and for general books. Of course, Overdrive is not that good in terms of getting books in science and technology and all. But if somebody wants to really build ebooks in the general collection area, and if you're really looking for an aggregator, so solution is Overdrive. You can explore that. I think they are also providing service for the Indian organizations now. Now, so that's briefly about the general books. Any questions on any general books? I know it may not be that relevant to librarians because we don't deal much with fiction and all, but still, from a totality point of view, I just thought of giving an overview about that. So if you don't have any questions, then I'll move to the next segment, which is our domain, scientific and technical ebooks. And since most of us, at least I am from Science and Technology Institute, and so we thought of really looking at scientific and technical ebooks. Again, we look at who are the content providers, what are the access models, and how libraries can really get access to scientific and technical ebooks as and when we need. Now, if you look at, if you want to really look at major players in scientific books, we all know that Springer Nature, I believe, is the highest publisher of science and technology books in the world today. And then Pearson is a big name in coming out with the textbooks. I think in India also Pearson is very, very popular when it comes to textbooks. And McGraw-Hill is another player, and Wiley, we have seen them publishing a lot of books. Elsevier is also a major player, and a lot of societies like American Chemical Society, Cambridge University Press, Oxford University Press, IEEE, and all these players are there. So now the trend is most of the major publishers, more or less, they have really transformed the way they publish books. Earlier, they were publishing books in print. Now, I heard from various publishers during my discussions that every publisher, whatever they publish today, they are publishing in e-format. So all the books that are getting published of late, at least since last 3-4 years, are all of them are available in e-format. So that way, getting latest books from major publishers is not going to be difficult, because all publishers are really making all their books in the e-format as well. So
the points here, again, I have to repeat is these are the major STM publishers, and almost all titles are in the ebook format they're publishing, at least since last 4-5 years. And generally, we expected publishers, major publishers, to really come out with some specific ebook platform, but none of them really came out with a specific ebook platform. So most of them are hosting the ebooks on their journal platforms. For example, if you take, if you go to Science Direct, that is Elsewhere's common platform for both for books and also e-journals. Wiley InterScience, again, a single platform, both for books and journals. In one of the advisory meetings I happened to attend with the Cambridge University Press, they are coming out with one special ebook platform. I think this year they got influenced by COVID, and they are coming out with a new ebook platform. That will be interesting to see. But globally, at this point of time, we don't see any specific ebook platform, designed or implemented or rolled out by any of the publishers. But I believe that we definitely need a specific platform for ebooks, because the ebook as a content, an ebook as a format is very different compared to ebook as a e-journal. Compared to e-journal, because the way people access and use journal content is very different from the way users use ebooks. So that's there. And then rights negotiable compared to aggregators in the area of general books. As I said, in the general books area, most of them were aggregators. They had limited rights when it comes to getting copyright and all. But here, since these are the publishers, and we can really negotiate the rights the way we want. Though they are, it'll be little difficult, but you have an option to really negotiate the rights you want when you buy books from these major publishers. And price also is very flexible. It depends on various things. For example, number of users you have, or the size of the organization, and the years of access you need, and the number of copies you need. So it really changes according to your requirements, but you can really look at this. So that's basically about major publishers. Now, if you look at the way they operate, actually, I wanted to tell you that the COVID has, great influence on major ebook publishers. In fact, all across the world, we know that majority of the universities, both in India and abroad, are really, moved from classroom teaching to the online classes. The moment universities across the world shifted from classroom-based teaching to the online classes, every publisher came out with a new models to sell their ebooks. And when we wanted to buy, same way, IISc also, we took a call that our current semester is happening online, and we don't have students in campus, and all our students are at home. They're logging into online classes, and we help faculty and students by procuring all the required ebooks for the first semester, and we have hosted on that. So that is the case study I'm going to really share with all of you how we went about that and what are our experiences, and in terms of building ebooks for supporting online classrooms. Now, so if you look at, as I said, like any other university, IISc also decided to go only for online classes for first semester. And the moment IISc decided to go for online classes, the faculty approached library, and they said they need, from library, all the ebooks prescribed for the first semester. So what we did very quickly, we requested all the faculty members across the institute to do needs mapping. In the sense, let us know what are the books you really need to support the online class teaching in the first semester. So we also gave some advice saying that if you have, prescribed a book which got published 20 years back, 25 years back,
that may not be really, available, and so it may be difficult to buy. So we requested them, look at the books, see if you can really recommend some books from major publishers, because generally major publishers will have e-copies. At the same time, we also suggested that see if you can really come out and suggest some new books which are really updated and the latest editions, so that we can really have a very relevant kind of a books. So we gave advice, and our faculty members really gave a list of about 500 books for first semester. And then the moment we got all those books, we started contacting the publishers, a typical book procurement process, and we checked the availability of their books. And then also we asked them to send the price quotes. And then we got into licensing terms. In fact, we were very serious about licensing terms. And in the ebook world, if you don't really negotiate the licensing terms, you will be compromising a lot. So I share some details about what all we did in the licensing area. And then once we talked about licensing terms first, and then talked about price later. Generally, librarians will talk price first and then licensing terms, but we did the other way around, because I believe personally that licensing terms are more important than the price, particularly in the ebook market. So I'll share some experiences there. Then once we negotiated the price, once we agreed with publishers, and then we gave a purchase order, we enabled access, and then we conducted some training programs to our faculty and students. And then once the usage starts, we do monitoring. So this is broadly what we did, but I'll tell you the process steps in detail now. Now, summary of the needs mapping. So IIC faculty members, we have about 500 faculty members. In fact, all of them got into this exercise, they responded. So we got a total about 526 books recommended by all our faculty for first semester. And that was about spreading to 526 books were coming from 50 different publishers. That was a lot of work. Imagine, so we need to contact 50 different publishers and see if 526 books are available. And if they're available, are they available in e-format? If they're available in e-format, are they, can we have a perpetual rights? And what is the price? And all those details, we started really, interacting with publishers. And then the recommended titles were sorted by publishers, and we contacted all of them. And then, so this is the exercise we did. Now, some observations we had when we contacted those major publishers. You see the first point here in the observation, though I said major publishers are really publishing all their books in the e-format, in the process of doing needs mapping for IIC, we realized that not all required books are available in the digital format, particularly in the case of McGraw-Hill. So McGraw-Hill also being a major textbook publisher, publishers have their own way of dealing with ebooks. For example, if some ebooks are prescribed as a textbooks for some branches, somehow they are reluctant to really make it as an ebook, because still publishers perceive that the moment you make a book ebook, they may lose some business because of because people may access, download and keep that book, they may not come back and buy. That perception is still there. And so that I've seen with many publishers. Then the second bullet point, access models are really no uniform access models with publishers. In fact, if you think all publishers give perpetual access, that's not right. Perpetual access and one-time payment is available only with Wiley, CUP, Cambridge University Press, Oxford University Press, Elsevier and Springer. Again, in each publisher, when we went and looked at all the titles, some titles from Wiley, for example, they were not available for perpetual access. They have their own reasons once again. So if you specifically ask them, they say that they are the prescribed textbooks, and as a publisher, they don't have any plan to make it as an e-copy.
So my point here is, as a librarian, if you want to really, if you're thinking that you can make all the textbooks required available in the e-format, that's not going to be possible because industry is not ready yet. But they're scaling up. But now, so not everything can be made available in the e-format. That's our experience at IISc. And then annual license and subscription models. Wiley and CUP, we negotiated annual license and subscription models. In fact, there are also subscription models. It's very interesting to see some publishers are really not selling annual license, and some publishers are not really giving the perpetual access. For example, if you take Pearson, it's a classic example. I can share something. In fact, we got about 40 plus books recommended from Pearson. I mean, we got about 40 plus books from Pearson we wanted. But Pearson is one publisher who has remodeled their access terms last year in 2020, and they came out with a multi-year subscription model. Pearson is the only publisher I have seen so far who has a multi-year subscription model. Say, for example, if you want to have 50 books to buy from Pearson, they come back and give you a price quote for 4-year subscription, 7-year subscription, 10-year subscription, like that. It's a very unique kind of a thing. When we asked them, they said because of the COVID, there are a lot of requirements coming up, so they changed the model. So the point here is, as I said in my previous slide, COVID situation has really pushed publishers to be innovative and change their models and all kind of a thing. And I also wanted to share with Pearson, though we had a budget and recommended books recommended by faculty, and we did not buy Pearson books because from library we rejected the Pearson deal because Pearson license agreement was one-sided, and Pearson license agreement was not at all looking at the library requirements, and there are a lot of restrictions. If we had signed up the Pearson, and we wouldn't have got the required rights for IISc. So we explained to our leadership that Pearson is a good publisher, but their licensing terms are really one-sided, and that will not allow us to get access to the ebooks of Pearson the way we want to get access if we sign that license agreement. And we really cancelled the Pearson subscription agreement because of the licensing terms. That is the level of importance we gave when it comes to negotiating licensing terms. But however, Pearson came back and they said that, these are the agreement terms basically designed for schools, and they said they will go back to their the leadership and they renegotiate the terms and come back to IISc. They have not come back. So my insight here is for librarians, if you want to really build ebooks, particularly from Pearson, look at their license agreement carefully. In fact, if you carefully read their license agreement, they will ask every user, every faculty, every researcher to take a written permission to quote something from their book, which is practically impossible to do kind of a thing. So we highlighted all such things, and so we decided not to go with Pearson at this point of time until they really change their licensing terms in such a way that they are mutual. So these are very, very important now, particularly when you deal with ebooks. If you don't really, you can pay, a couple of dollars, a couple of percentage more, that's not going to hurt institutions and libraries. But if you don't really look at the licensing terms, if you don't safeguard the interest of the content for the organization, you will be losing a lot. So my sincere suggestion is be very, very careful with licensing terms when you particularly buy ebooks and all of that of late now. Every publisher is changing their license agreement, and you need to carefully read all of them before you really sign up the agreement. Now, publisher-driven access rights for IISc users. And for example, we obviously insisted publishers to give us IP-based campus-wide access, and we got all those rights from Elsevier, Wiley, and Springer. And though they have IP-based unlimited access,
but some publishers have a limitation saying that not more than 20% of the book can be downloaded. And some publishers have read-only access in the sense, so you will not be able to download, print. There are some clauses like that. And Pearson also came out with a app-based offline reading. So they'll have their own apps, and basically to safeguard their security, content, and all. So you need to understand all of them and evaluate carefully how they are really beneficial to your end users, and is that going to really help, and things like that. So it's going to be very, very different exercise, and all of us should really get into and understand all of that before we really go and enable access to content through apps and all. Now, so coming back to IISc, as I said, we got a lot of books, book request, and this is the actual, finance and all I'm showing. I have masked the price details here, IISc, because of confidentiality kind of thing. Say, for example, when we got those books, we contacted these 10 different publishers, and you also see individual title request we got from each publisher. And so we got quotations. And look at here, Wiley, IISc wanted 100 books, but Wiley had only 32 books available on a perpetual model. That's interesting. Wiley being a big publisher, though we wanted to have 100 titles in ebook format, out of 100, they had only 32. Similarly, CUP, 63 we wanted, and they quoted only for 40. And Pearson, look at that, 57 we wanted, we had only 23. And then Elsevier. So my point here is, it's not going to be easy to get all the books in electronic format. Particularly, you are very specific, if you are specific about the books prescribed for syllabus. But it's a very different ball game that the way in India publishers are selling ebooks are, they push librarians and institutions to buy books on a yearly basis. Okay, you take these books which are published in 2020 or 2019, 2017. That's where you get a lot of books. But in my opinion, that may not be the right way to really build a book collection. In the book world, many of you may know that, take any publisher, whether it's a Springer, Elsevier, Wiley, whoever is that, generally only 10% of the total books will be successful, 90% of the books will not be successful. They don't make money, they don't become popular. So when you as a librarian or an institution, when you go and buy bundles by year, by subject, you will be, building 90% junk collection, only 10% relevant collection. You need to be very careful about that. But you may get a price advantage. But in my opinion, generally you'll be filling the library with unwanted content than what is really useful. So you need to be very careful. But if you really want to follow the old model of buying books, what we wanted, the industry is not ready yet. As you see here, not all publishers are really able to give all the books in the e-format. So that's the point I wanted to share with you. Now, so this is the other slide. We did some exercise and subscription basis. For example, Wiley, as a publisher, he has both the models. Some books he has on perpetual model, some books he has only on subscription. That's very interesting. Similarly, CUP has some books on perpetual model, some books on the subscription model. So these are the things I wanted to highlight. And so total summary here, as I said, we got about 500 books from our faculty, asking library to buy those books and enable access for the first semester. And so out of 500 plus, we got only 213 books. In spite of we trying our best, we have a contact with every publisher. We approached everybody. Because of various limitations at the publisher end, we could able to get only about 45% of the books what faculty asked to have in e-format. So we need to understand these limitations. The reality is in the world, if you want to really enable institutions for online classes, and if you think that you can buy every book in the ebook format, that's not going to be reality. And even major publishers are really struggling, and not just that. And so everything is changing, and so it's going to change, continuously. I think it's very, very important, and
that we monitor all those changes if you want to really involve yourself in building ebook collection. Now, some learnings, so those are the things. I talked about ebooks in general, and I talked about general books and who are the players in that, and how the general players are really dominating the developed countries. And we also talked about the readers, what each major player came out with, and why they really became successful. And then we moved to the science and technology books. We looked at the ebook procurement collection from libraries point of view by giving case study, and I shared some of our learnings, and now I will summarize our learnings in one slide or two slides. So as I said, not all books are available in e-format right now, irrespective of the type of the publisher. Even in the latest books, not all books are available in e-format. That's our learning while building the ebooks for the first semester at IISc. Now, every publisher has a different access models, and there is no common, access models. We have also seen the same publisher offering different access models. For example, you have seen in Wiley case, some books they offer on perpetual model, but for some books they don't have rights to really give perpetual model. So you need to get ready to handle different access models. That's a big challenge for you as a librarian when you really integrate that book catalog into opaque, or when you host that book into ebook CMS content management software. So you need to really understand how they can throw up some difficulties for end users to really access. So that's a issue we need to handle. That's exactly the reason why I was telling that it'll be nice if somebody can really come out with a publisher independent ebook platform, so that they understand all these access methods, and the platform should really help libraries and users to have uniform access by having a single publisher independent ebook platform. Now, different price points. So everybody has their own price listing. There is no there is no fixed price for ebooks. We all know that unlike in the print world, for ebooks, I mean, whatever you negotiate, that is a price, and there is no fixed price. Now, there is no guarantee of perpetual rights. I told you about that. And then COVID has influenced ebook access and pricing models. I gave an example about Pearson, how Pearson came out with, earlier they were selling books on perpetual model, but COVID has really influenced them to come out with a limited number of years license, 4 years, 5 years, 6 years, 7 years, like that. Many of them are really doing that. In fact, during my negotiations, I noticed that major publishers like Elsevier, Wiley, and all of them, they have really increased the prices for their ebooks, and it's gone up now. I remember in my previous organization, we used to negotiate a price for less than the print price of the book. Now, when you talk to them about ebooks, they come out with 2 to 3 times of the pricing models of the ebooks. That's our experience while building the ebooks thing. Now, we should also explore aggregators. Say, for example, in the industry, both globally and in India, since we don't have a publisher independent platform to host ebooks, we can explore aggregators like Overdrive, EBSCO, ProQuest, and JGate. They may not have a ready to use kind of a platform, but I think one of them can really customize their platforms to suit the library requirements, particularly to handle multiple licensing terms, multiple access models, and all of that. I think that's really important. So we have to really understand, make ebooks part of this. This slide talks about how we can really promote ebooks. I think it's simple. Many libraries do the subject guides. I think see if ebooks are limited number, in the limited number, we should be really make them part of the subject guides and integrate ebook titles to course papers, and then add book titles to respective department websites. So basically the idea is, see, when you buy a new resource
source, new book, give them multiple access points so that the reach will be faster and they will come to know about that as quickly as possible. Of course, update OPAC as well. Now, last, one message I want to say is understand the changing trends. Changes are really happening. Big transformation is happening in terms of ebooks, and models and are really changing. I explained about that. Almost every publisher is changing their model, and you need to negotiate long-term access rights and most importantly licensing terms, and talk licensing terms first and then come to the price. I think so that's really important to retain all the required rights to the organizations. So that's broadly what I had on ebooks. So basically, my idea was I wanted to really share something which is practical, which you can go back and really, apply. And I did not want to really give a lot of theory and all. I hope it was useful. And so that's broadly what I had. Now open for questions. Hello. Yep. Yep. Thank you, sir. It was nice to see a comprehensive PPT on ebook models, and I understand I've been involved in acquisition process for a couple of universities. It's a chaotic world out there, and to say the least, I think like any other industry, I mean, publishers are also uh, finding it difficult to come up with this new model because they have an existing business which was predominantly based on print collections, and thus they are finding it a little difficult to set up a pricing matrix, to have an access formula which suits them commercially. So I think things will standardize in next 2 to 3 years. Demand will drive those decisions, and since because of this COVID period, since the demand has abruptly increased, I believe the industry will respond to it. Let's see if we have some questions from users. एक question है that most of these books, most of these platforms that you also discussed in the PPT, they are predominantly international publishers or even Indian publishers. They feature content 95% of the time in English. And for states like Madhya Pradesh, where polytechnic education is also in Hindi, and most of the higher secondary education is in Hindi. Dr. Anuradha is asking if you have come across a portal, if you have come across a publisher which is producing ebook content in Hindi for technical education, if you have come across any publisher like that. Yeah, that's a good question. See, as I said, I do agree that I covered only the international level trends, and even in India, getting colloquial, getting local languages and creating that as an online content is a challenge. And I haven't at least come across with any platform, in that domain for regional languages. So can you also please switch on your video? I personally switched it off because there was some disturbance in the audio. So I thought it would be better if we now. So I came across, not just came across, we are now the exclusive representatives for this platform in India. I came across a platform called Perlego last year, Perlego. Okay. And they are now, they have about 3.25 lakh ebooks. So 3,25,000 ebooks, and all of them are paid for books. Not even a single title is open access. And these ebooks are coming from 3,200 publishers. Includes Taylor and Francis, Wiley, McGraw-Hill, Macmillan, mostly international publishers. But the only problem that I saw in their pricing formula is that they do not have
they have a single pricing, which is 3,200 rupees per user per year. So that's the only challenge, and which becomes very difficult to entertain for bigger campuses who have, let's say, 3,000 users or 4,000 users. So pricing is an issue, but the collection is rich. Do you think aggregators are the way to go ahead in solving this problem of having ebooks? Yeah, that's an excellent question. In fact, I'm observing these ebook trends since last 15, 20 years. When Okay. I was in GE, I was also involved in building ebooks for worldwide technology centers. In fact, Yes. I remember Net Library as the first successful experiment from OCLC Yes. as an aggregator of ebooks. But my observation is uh, publishers are not really encouraging the aggregators to be successful. That's my statement. Because when an aggregator or when a newcomer comes and tries to do some experiment to help industry and also libraries to get access, they just experiment with them, and the moment they see some success, publishers take back the content and they try to put content on their platforms. You have seen that. Similar thing happened with Novel. For example, Novel, one of the ebook platform, which Yes. really came out very well, and they were doing, all publishers were doing very popular data driven books, and they also novelized all books that became very popular, at least in corporates. But Yes. Elsevier took over that. Yes. So And even in Indian examples, sir, if you have come across a very good aggregator called Copy Kitab, and they were okay, yeah, copy kitab, yeah. So textbooks, Indian publishers textbooks, and I see last year some of the bigger Indian publishers like Eschan, correct, they left correct. that platform after experimenting and seeing the adoption building, and now they have come up with their own platform for Eschan book. Uh, Absolutely, yeah. so I second you on your observation that yeah, that's one reason that publishers want to have some autonomy, and thus they first try with the aggregators, and once these Correct, aggregators correct. give them the exposure in market, they try to Yeah, build their own platform. Yeah, yeah. that's. So one question from Pradeep Das. He might have faced this issue. Is that publishers are not willing to give us access to new edition of the book, even though we have an agreement for perpetual membership, for perpetual license. Could there be could something be done to resolve this? See, end of the day, at the back end, as a publisher, it all boils down to your revenue sharing model with the content user and the publisher. And so, uh, publishers, as I said, publishing industry is not really, they're not really supporting the aggregators and the newcomers to experiment the content access models. That's my thought. I would like to repeat. Yeah. So in IISc, sir, you have procured so many ebook titles from multiple publishers. How are you providing simplified access? Like in RGPV, we have ebooks coming from about 12 publishers, a couple of hundred of titles. I mean, close to 1,000 titles now. And we are providing them service through RGPV e-library remotely. It has an inbuilt remote access engine. So what are you using in IISc? See, right now, as I said, since we don't have in the industry a publisher independent ebook platform, you need to explore all other options. If you have a e-content management software, put it. Yeah. If you have a OPAC, integrate it. If you have a library guides, integrate it. Put it on the respective department website. Give as many access points as possible until we get an integrated platform. But I don't have one yet. That's why I said maybe we should partner with or explore with the existing aggregators like ProQuest, EBSCO, JA, these kind of stuff. And we need to. I hope industry will come out with something. Yeah, so we my own startup Refereed. I mean, we have done that job for about 300 campuses now in India, wherein Okay. all these campuses are procuring ebooks or e-journals from hundreds of publishers, and then we give them a fully branded platform That's of the great. library. We don't promote our platform. If you allow me, I know. I hope this doesn't
come across as something very promotional, but just to give you an insight. Got it. So this is RGPV So e-library. what we need is, we need something like Magster. See, Magster is an amazing platform for magazines. But again, Maxter is an aggregator like you have EBSCO or Yeah. right? I mean, see, that also gives a very, very attractive price. Pay 1,000 rupees, you get free user license for 1 year. At this point of time, that's a very attractive price. Yeah, so a counterpart to Come up with Maxter an ebook is for it. let's say Press Reader, which does both news and magazines. Yeah. So those are the two platforms. What Correct. we are doing is we are building customized e-library platform for universities and colleges. If you see RGPV e-library right now on my screen, you can find that users can now access ebooks or any other thing which is subscribed by the university at a single click. Of course, I have to log in. So this is publisher independent and fully aggregated collection. And we don't even promote our company. We are promoting the library brand as such. And this, you'll be happy to see that this content is not just accessible within campus, but from anywhere across the globe. It just requires a single click on the book. The platform does the authentication on the publisher platform, and you have full text access. And not just on the web front, but also through a mobile app. So RGPV e-library is available as an Android app and also as an iOS app. So if you see here, I just wanted to give you. No, absolutely. So what I meant by publisher independent platform, also, in the backend, content organization should be uniform, not just linking, respective publisher website may not really give that, experience what end user needs. So when I say publisher independent platform, it has to be, uniform look and feel, features, everything. It's basically not connecting to content. So a reader application which can actually open content from any of these publishers in a consistent environment. Correct. I agree with you. Anyway, it's a good platform. Thank you for sharing. Yeah. So we request you to also join us for a detailed demo of RGPV library. We'll be doing it tomorrow, and we'll be sharing with you the meeting link, and we'll be happy to have your guidance on how can we take this further for our end users. Yeah, tomorrow I am in another conference, so I'll be tied up. So probably we'll connect separately, and I'll take a demo of it. Sure, sir. I have sent a link for the feedback to all the participants in the chat box for Dr. Anand's talk here. Please note that your feedback is important for the speaker and for RGPV and for AICTE, but also it serves the most important function of, that's the way we are taking your attendance also. So please do fill out the form, and Dr. Anand Bhairappa is always accessible to librarians in case you need further assistance, if you have any queries, if you want any guidance on how to procure ebooks. I'm sure you can find his contact details on the ISC website. Some users are asking for your contact details, but I'm sure you can find it on the website. If you'll be happy, you can also share with them, sir, over chat if you want to. Okay, it's back now. Yeah, so you have the feedback link, participants. On behalf of AICTE, RGPV, and me personally, I thank Dr. Anand Bhairappa for taking out the time today, giving us an overview of the ecosystem of these ebooks and how they can be procured and what are the things to be looked at while choosing a publisher or a title. I'm thankful to you, sir, again, and we look forward to having you back in this program. Thank you very much, and thank you for your attention. I hope it was useful, and thanks for the opportunity to be with you and to share my thoughts. Thank you so much, sir. Can I log out? Yes, sir. Yes, sir. Thank you so much. Thank you. Participants, please note, we have already shared the link for attendance for Dr. Bhairappa's session, and it will stay open for another hour.
हमने ऑलरेडी फीडबैक लिंक और अटेंडेंस लिंक शेयर कर दिया है चैट बॉक्स में, प्लीज उसे भर दीजिए. I cannot stress, I mean, more than this on the fact that this is mandatory. ये आपको भरना अनिवार्य है, प्लीज भर दीजिए. चैट बॉक्स में डाला हुआ है लिंक, और ये लिंक अब से लगभग एक घंटे तक एक्टिव रहेगा. सो प्लीज इस लिंक को जरूर भरें. नाउ विदाउट फर्दर अडू, we will move on to our next session. Let me connect with the speaker of the next session. Just give me a second, guys. जी सर. Okay. Good afternoon, all of you. Myself, Dr. Chokse, coordinator, AICTE-RGPV. Now, next session will be taken by Professor Senior Librarian Nabi Hassan, IIT New Delhi. Hassan sir has taken the 2 sessions continue, and the questionnaire hours is after the completion of both the lectures. All the participants is also request, you must fill the attendance sheet, attendance link, which is available in all time at your chat box. And according to AICTE norms, there is a 80% attendance must. If you are getting 80% attendance, then you will appear in the examination. And the examination having a 100 numbers marks, and we are taking the 50 questions. 50 questions, multiple choice is there, and every and each question having a 2 number. And every session having a 2 questions, and जो आपके क्वेश्चंस हैं, हर सेशन से आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे. साथ ही साथ आपको 50% मार्क्स लेना कंपल्सरी, 60% मार्क्स लेना जरूरी. नेक्स्ट आपका जो सेशन है, प्रोफेसर नबी हसन, लाइब्रेरियन, IIT गांधीनगर. Mohit, continue with the, I think so, Nabi Hassan sir is connected to now. Sir, I'm just checking. Give me a second. मैं देख लेता हूँ. Okay, he is connected now. Unmuted to them. जी सर. Welcome to Nabi Hassan sahab. Good morning and good afternoon.
We are very eager to listen you. Okay, continue with it. Nabi Hasan. Navi sir, can you please unmute your system once? Yeah, I could unmute now. I was not able to unmute myself. Yeah. Good afternoon, sir. Welcome. Good afternoon. Thank you very much for this opportunity. So I how? hope you are doing well. Okay. Delhi's climate, both politically and weather-wise, is tough to endure these days. I hope you are doing well, sir. Yeah, we are great. Yeah. I mean, Okay. this is So, capital city, so we are used to of all these things. yeah, of course, sir. Participants, we all are honored to have Nabi sir with us today, and I heard Dr. Nabi. I've heard him a couple of times. Last time I heard him in Benin University, and mark my words, this simplicity with which he is able to communicate tough concepts and basically shows how good a librarian he is. He's always in service mode. That's one thing from a personal experience that I can say for Dr. Nabi. Those who, although he is one of the most prominent librarians, but those who are seeing him, hearing him for the first time, he is the librarian and head of Central Library, IIT Delhi. Earlier, he has served as the university librarian of Aligarh Muslim University, one of India's leading multidisciplinary institutions. He is the first Norman E. Borlaug Fellow from India in Library Information Systems. He's trained in Electronic Library Resources Management at Cornell University, New York, USA. He has won the Bonnie Hilditch International Librarian Award 2018 USA and has also been conferred with the SLP SLA Asian Fellow Award 2019. He has recently been conferred with the Royal Society of Chemistry's Librarian's Choice Award for Dynamic Librarian 2019. Dr. Hassan is also the recipient of the Vice Chancellor Appreciation Award 2003 for exemplary work and conduct, appreciation from the Chairman, Board of Governors, IIT Delhi in 2012, appreciations from the Vice Chancellor of the Aligarh Muslim University 2018, Lifetime Achievement Award 2015, appreciation certificate from IEEE 2 times, and other recognitions from reputed organizations. Dr. Hassan is the member of many reputed external committees, including National Steering and National Advisory Committees of Ishod Sindhu, Ministry of HRD, Government of India. He's also serving as the member of Project Approval Board of the National Digital Library of India. What a wonderful initiative that is. He is currently the president, Special Libraries Association, Asian chapter, founder of joint secretary for the Asian Library Association, joint secretary, Information and Communication Society of India. He has also served as the vice president of Indian Association of Special Libraries and Information Centers. Dr. Hassan has an experience of over 25 years of active library services and postgraduate teaching, and has published 16 books and 136 papers and articles. I don't know how he finds time to author so much of books and articles given his schedule. He has successfully implemented many innovative library projects, including 3 World Bank ICAR assisted library projects. He is the PI of the project on strengthening of Central Library. He has also created a wonderful library museum for the manuscripts, artifacts of MA Library as the University Librarian of AMU in 2017. He is currently also the visiting faculty and member of Jamia Millia Islamia Central University. The profile is very, very impressive, and you will now hear directly from him and understand and recognize why he is one of the most prominent librarians in the country today. Dr. Nabi Hassan, off to you. Thank you, Mohit ji. I think you have spoken a lot about me, and whatever I could
deliver in my life, it was because of my colleagues at different places. Like in AMU, I was having a team of 300, 400 people, having 120, 130 libraries. Then in IIT Delhi, we all are dynamic. Like the officers in the IIT Delhi are extraordinary because the selection process is very rigorous. Like Dr. Neeraj, Vijay Kumar Verma ji, Banita Kanchandani, Shankar Chauhan ji, all these officers are, I am the oldest in the library, so you can imagine. And we have people in the central library with BTech in computer science and also with MLIS. So our selection process is very, very rigorous. We are not honoring any recommendations, any approach, okay, any neta, any other things. So because of the system being very rigorous, I mean, things are becoming very easy for us, and we are automatically able to deliver. Like Dr. Chokse is having very good team here, and he's able to conduct this very good, wonderful workshop. So before I start my presentation, I would like to thank Dr. Chokse for giving me this opportunity, and perhaps Sandeep Patak may also be a reason behind inviting me. So I would also like to thank Dr. Sandeep Patak. I don't know whether he's here or not, but he's a good friend from IT system. So, and I'm a regular visitor to Bhopal. I used to come to NIT. I used to come to SPA Bhopal, and I mean, many times to MP Bhoj and other institutions. So for me, Bhopal is like another home, and I love this city, especially the coffee of a restaurant which is close to, I mean, that Bada Talao is really very good. That's a perhaps government restaurant. So I love all of you. Good afternoon, Bhopal, I should say. And let's start with this presentation. मुझे हिंदी भी बहुत अच्छी आती है, और संस्कृत में मैं मेरिट स्कॉलरशिप होल्डर था एमयू में, तो मैं हर लैंग्वेज में कंफर्टेबल हूँ। अगर आप हिंदी का उपयोग करें तो पार्टिसिपेंट्स के लिए बहुत सहायता रहेगी। हमारे ज्यादातर पार्टिसिपेंट्स हिंदी भाषी पार्टिसिपेंट्स हैं। अच्छी बात है, हिंदी मेरी मातृभाषा है, तो मैं कोशिश करूंगा दोनों लैंग्वेज यूज करूं। अंग्रेजी तो हमें मजबूरी में बोलनी पड़ती है, विदेशियों के साथ मजा नहीं आता कभी भी। तो अगर आप लोग कंफर्टेबल अगर हिंदी में हैं तो मुझे हिंदी में ज्यादा खुशी होगी बोलने में। जी सर, हिंदी में ही शुरू करते हैं। तो मैं अपना प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा अभी आप लोगों के साथ। तो मेरे आज दो टॉपिक हैं। पहला टॉपिक जो मैं अभी शुरू करने जा रहा हूं वो है लाइब्रेरीज एंड लाइब्रेरी प्रोफेशनल इन द न्यू नॉर्मल एंड इंडियन पर्सपेक्टिव। सो ये जो मेरा प्रेजेंटेशन है इसका जो बेस है, आपने लाइब्रेरी एसोसिएशन का नाम सुना होगा, यूके की जो LA कहलाती है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम अभी स्लिप हो गया है, चार्टर्ड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन लाइब्रेरियंस एसोसिएशन ऑफ यूके। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे इज लाइक ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक हम लोगों ने एज एन इंडियन हम लोगों ने क्या क्या एक्सपीरियंस किया, हम लोगों ने क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की, और इंडिया में किस तरह से लोगों ने नए नए तरह के एफर्ट्स किए जिसकी वजह से सर्विसेज दी गई। तो बेसिकली ये मैंने अपना एक्सपीरियंस ऑलरेडी 2 इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे शेयर किया है। दोनों ही दुनिया के टॉप प्लेटफॉर्म है। एक तो यूके की जो ऑफिशियल लाइब्रेरी एसोसिएशन है, उनका जो एनुअल कॉन्फ्रेंस था अभी 2 महीने पहले, और इससे पहले स्पेशल लाइब्रेरीज एसोसिएशन में भी मैंने शेयर किया है। तो मैंने उसमें थोड़े स्पेशलाइज कंटेंट शेयर किए थे क्योंकि उसमें 3 से 5 मिनट का टाइम होता है। इसमें मेरे पास काफ़ी टाइम है, तो हम लोग आराम से बात करेंगे। तो या तो हम ऐसा करेंगे कि मैं अपना एक लेक्चर पूरा कर लूँगा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, या फिर दोनों लेक्चर में अपना पूरा कर लूँगा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि मैं थोड़ा सा 5 बजे तक फ्री होना चाहता हूँ ताकि मैं दूसरी एक मीटिंग अटेंड कर पाऊँ, क्योंकि 31 जनवरी हमारा फाइनेंशियल जो कमिटीज होती हैं उनको बनाने का लास्ट वर्किंग डे है, और वो कल ही है। उसके बाद फिर हमारे मतलब छुट्टी सैटरडे संडे हॉलीडे है, तो वो थोड़ा सा एक प्रेशर है। अगर आप लोग इसी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं तो कोई एक यस कर दें, नहीं तो
अगर कुछ ऐसे पार्टिसिपेंट ऑलरेडी बहुत अप्रिसिएशन ये हिंदी के लिए आ रखी है ऑलरेडी, तो ठीक है, उसमें काफी तो लोगों ने यस लिख दिया है, प्लीज। थैंक यू ऑल। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। आई होप आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे। जी सर, बिल्कुल। ओके सर एक बार पार्टिसिपेंट एनोटेशन बंद कर देंगे तो अच्छा रहेगा। वो शेयर स्क्रीन के साथ में एक मोर का बटन है, हाँ जी, उस पर क्लिक करेंगे तो सर डिसेबल पार्टिसिपेंट एनोटेशन या डिसेबल एनोटेशन फ्रॉम अदर एक ऑप्शन मिलेगा। ओके, उसको डिसेबल एनोटेशन फॉर अदर्स। हाँ, ये कर दीजिए एक बार बस। ठीक है, धन्यवाद सर जी। ओके फ्रेंड्स, सो ये आप लोग देख ही सकते हैं इस स्क्रीन में मैंने एक जो कुछ स्क्रीनशॉट्स लगाए हुए हैं। ये मैंने काफी हद तक गूगल से इमेजेस लिए, मैंने एक्नॉलेज भी किया है। आप राइट कॉर्नर में देखेंगे मैंने गूगल इमेजेस लिखा हुआ है। आई होप कि आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं, आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं प्रॉपरली? जी बिल्कुल क्लियर है सर, विजिबल भी है और हम आपको सुन भी पा रहे हैं। थैंक यू। तो आप देख पा रहे हैं जैसा कि एक स्क्रीन, एक पिक्चर है जिसमें मैंने वर्क फ्रॉम होम दिखाया है, एक आपकी यूनिवर्सिटी की पिक्चर है जो मैंने गूगल से ली है, और एक मैंने लाइब्रेरी की पिक्चर ली है जिसमें बहुत सारे क्रॉस लगे हुए हैं जो आमतौर से आपको रेस्टोरेंट में या रेलवे स्टेशन पे या एयरपोर्ट पे दिखेंगे कि आपको कुछ सीट्स पे बैठना है, कुछ पे नहीं बैठना है। तो ये एक जो पिक्चर है ये लाइब्रेरी की पिक्चर है, किसी लाइब्रेरी की, कि न्यू नॉर्मल में जो करंट सिचुएशन है उस पर हम लोग किस तरह से बैठ रहे हैं। तो मैं अपने आईआईटी दिल्ली का भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा कि हम लोग किस तरह से सर्विसेज चला रहे हैं। तो इससे पहले कि मैं आगे अपने डोमेन की बात करूं, आप भी जानते हैं कि हमारे दिमाग में जो ख्याल आते हैं आजकल वो ये है कि लाइब्रेरीज आर चेंजिंग, क्योंकि यूजर नीड्स आर ऑल्सो चेंजिंग। यूजर्स की नीड बदल रही है, इसलिए लाइब्रेरी भी बदल रही है। लाइब्रेरीज आर यूजफुल फॉर एवरीवन इंक्लूडिंग रेफ्यूज, इंडिजिनस, डिसेबल्ड पीपल। चाहे वो पेंडेमिक हो या नॉर्मल टाइम हो, लाइब्रेरी सबके लिए काम की साबित हो रही हैं। और इस पेंडेमिक में तो बहुत ही यूजफुल है लाइब्रेरी, हमारी टेंशन को रिलीज करने के लिए, हमें स्ट्रेसफुल सिचुएशन से निकालने के लिए। अगर आप लोगों में से किसी ने एक लेक्चर सुना हो प्रोफेसर सहस्त्र बुद्धि का, जो कि AICTE के चेयरमैन हैं करेंटली, उन्होंने कभी हाल ही में एक लेक्चर दिया था कनूर साहब की जो एक एसोसिएशन है उसके बैनर के नीचे। उसमें उन्होंने लाइब्रेरी प्रोफेशनल को कोरोना वॉरियर कहा था। उन्होंने एक बहुत बड़ा रिस्पेक्ट दिया लाइब्रेरी प्रोफेशनल को कि लाइब्रेरी प्रोफेशनल भी कोरोना वॉरियर हैं, सिर्फ डॉक्टर और नर्सेस या फिर टेक्नीशियन या लैब स्टाफ ही नहीं है या पुलिस वाले ही नहीं है, बल्कि हम लोग भी कोरोना वॉरियर हैं। क्यों हम लोग कोरोना वॉरियर हैं? क्योंकि हम लोग कोरोना के टाइम में भी लाइब्रेरी आ रहे हैं। हार्डली हम लोग करीब 1 महीना बंद थे अप्रैल के महीने में आईआईटी दिल्ली में, इसके अलावा हम आते रहे। पहले हम लोग 50% बेसिस पे आ रहे थे, ऑफिसर्स तो बेचारे डेली आते ही थे, और उसके बाद हम लोग अभी इस मंडे से 100% स्टाफ के साथ आना शुरू हो गए लाइब्रेरी। हमारी सारी लाइब्रेरी सर्विसेज चल रही हैं, टाइमिंग्स थोड़े से रिस्ट्रिक्ट हो गए। हमने बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में आईआईटी दिल्ली में काम किया है, और यू विल बी सरप्राइज कि हमारे 5 साथी यहाँ पे सीवियरली इन्फेक्टेड हुए कोविड से। लकीली मतलब सब अच्छे से ठीक हो गए, क्योंकि हम इंडियंस की थोड़ी इम्यूनिटी बेहतर होती है दूसरों से। तो इसीलिए इन सब फैक्टर्स को देखते हुए लाइब्रेरियंस को कोरोना वॉरियर कहा गया, और वो भी एक मामूली आदमी ने नहीं, AICTE के चेयरमैन ने कहा। सो देयरफॉर द रोल ऑफ लाइब्रेरीज एंड लाइब्रेरियंस इज आल्सो चेंजिंग। तो सिचुएशन चेंज हो रही है, आईसीटी का इम्पैक्ट काफी ज्यादा पड़ रहा है, और इसके अलावा आप देख रहे हैं कि कोरोना में हमें डिफरेंट टाइप की सर्विसेज, चैलेंजिंग सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ रही है। लाइक आपके यूजर कैंपस में नहीं आ पा रहे हैं, आपके फैकल्टी कैंपस में नहीं आ पा रही है, लेकिन आपको सारी सर्विसेज देनी पड़ रही है। तो आपने नई नई चीजें सीखी। फॉर एग्जांपल जिस प्लेटफॉर्म पे अभी हम लेक्चर दे रहे हैं, जिसको आप जूम कह रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता आप लोगों में से किसी ने जूम के बारे में कभी सुना होगा, लेकिन
इस सिचुएशन में हमें ये सब भी सिखा दिया। अब हम जूम के बारे में भी जानते हैं, वेबएक्स के बारे में भी जानते हैं, गो टू वेबिनार के बारे में भी जानते हैं, गो टू मीट के बारे में भी जानते हैं, और ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये सारी सिचुएशन जब चेंज हो रही तो लाइब्रेरीज और लाइब्रेरियंस के रोल भी चेंज हो रहे हैं, क्योंकि हम अभी नॉलेज सोसाइटी में हैं, और ये कह सकते हैं आप हम डिजिटल सोसाइटी में हैं। और कोविड-19 ने हमारे सारे सीनेरियो को, जो हम सर्विस डिलीवर करते थे, उसको चेंज कर दिया है। अब सिंपल इशू रिटर्न नहीं होता है, बल्कि अगर कोई बुक लाइब्रेरी खुली हुई है, बुक वापस आई है, उसको क्वारंटीन भी करना पड़ता है। हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि हमने सर्विसेज भी प्रोवाइड करनी है, प्लस हमें ये भी देखना है कि हमारे साथी इन्फेक्टेड ना हो जाएं। तो हमें हर चीज का थोड़ा सा ख्याल रखना है। अगर कोविड-19 की आप बात करें तो इससे हर कोई, एवरीवन हैज बीन अफेक्टेड बाय कोविड-19, और हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि ये इस तरह की बीमारी 100 साल में एक बार आती ही आती है। मतलब एक गॉड का अपना सिस्टम है सोसाइटी को बैलेंस करने का। जब हम लोग, शायद मैं गलत हूं, लेकिन मैं गॉड फेयरिंग आदमी हूं, तो मेरा ये भरोसा है, और लोग बुजुर्ग कहते हैं कि जब हम लोग थोड़ा सा बुरे कामों की तरफ बढ़ जाते हैं, धर्म से दूर हो जाते हैं, किसी भी धर्म को फॉलो करें, तो ऊपर वाला एक मैसेज देता है हमें, जब हम ज्यादा घमंडी हो जाते हैं, कि भाई अल्टीमेटली रिमोट कंट्रोल मेरे पास है, रिमोट कंट्रोल तुम्हारे पास नहीं है। मुझे मानो, सही से चलो, अपनी चीजें ठीक करो, नहीं तो मैं बता दूंगा कि कैसे करके सृष्टि चलती है, कैसे करके संसार चलता है। तो अभी जो कोविड की सिचुएशन आपने देख रहे हैं, कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा है। इवन अमेरिका जैसा इतना पावरफुल कंट्री कुछ नहीं कर पा रहा है। ठीक है, आपको अभी तक पता ही नहीं चल रहा है कि स्प्रेड कैसे हो रहा है ये वायरस। एक वैक्सीन निकल गई है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आपको अभी तक ये नहीं पता कितना किस चीज का असर है, चाहे वो फाइजर की वैक्सीन हो या कुछ भी। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि ये जो कोविड-19 आया है, इससे हर कोई इफेक्टेड हुआ है। और पिछली जो पेंडेमिक आई थी, आप अगर ये पिक्चर देख पाए, या अगर आप ये पिक्चर देख पाए, 1918 की है। जो लास्ट पेंडेमिक थी इस तरह की खतरनाक, वो 1918 में थी, जिसका नाम था स्पेनिश फ्लू। और ये पिक्चर स्पेनिश फ्लू की है, जो शुरू की सारी पिक्चर देख रहे हैं, लास्ट की 2 छोड़ के। इसमें बहुत ज्यादा लोग इफेक्टेड हुए थे। लोग तो बताते हैं ऑलमोस्ट 20% ऑफ द पॉपुलेशन दुनिया की, 20% लोग मर गए थे। उस वक्त लॉस बहुत ज्यादा था, उस वक्त डेथ रेट बहुत ज्यादा था। पूरे के पूरे गली, पूरे के पूरे मोहल्ले, पूरे के पूरे शहर खत्म हो गए थे। इंडिया में भी बहुत ज्यादा डेथ हुई थी। मैं नंबर आपको नहीं बोलना चाहता, लेकिन अगर आप सर्च करेंगे विकिपीडिया या दूसरे सोर्सेस पे, आपको ये नंबर मिल जाएगा। So everyone has been affected with this pandemic, like every walk of life, every profession. कोई जिंदगी का कोई हिस्सा नहीं है, कोई प्रोफेशन नहीं है जो अफेक्टेड नहीं हुआ हो। इकोनॉमी हमारी इफेक्टेड हुई है बहुत बुरी तरह, हमारी एग्रीकल्चर इफेक्टेड हुई है, हमारा हेल्थ सेक्टर इफेक्टेड हुआ है, हमारा एजुकेशन सेक्टर इफेक्टेड हुआ। आप देखिए आपके बच्चे, मेरा भी बच्चा पिछले 7-8 महीने से ऑनलाइन क्लास अटेंड करा। ऑनलाइन क्लास का कोई खास मतलब नहीं है बच्चों के लिए। टीचर आते हैं, उन्होंने जो बोलना होता है बोल के चले जाते हैं, कोई इंटरेक्शन नहीं होता, कुछ ढंग से समझ में नहीं आता, जैसे फिजिकल इंटरेक्शन होता था स्कूल में या बात होती थी, तो बड़ा वो यूजफुल सब डिस्कशन होता था, तो वो सब नहीं हो पा रहा है। तो हर सेक्टर, मार्केट्स इफेक्टेड हुई हैं। आप देखो जो मार्केट है उसमें जो लोग काम करते थे, जो डिफरेंट बिजनेसेस थे, वो इफेक्टेड हुए। गवर्नमेंट की सारी पॉलिसी, सारी स्कीम्स इफेक्टेड हुई हैं, इंस्टीट्यूशंस इफेक्टेड हुई हैं, जो उसमें लोग काम करते हैं, हम आप जैसे लोग, सब इफेक्टेड हुए हैं। जो प्राइवेट वाले उनकी तो हालत खराब है, गवर्नमेंट वालों का भी आप देखिए डीए फ्रीज हो गया है, हमारी नॉर्मल लाइफ सफर हो रही है, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री सफर हुई है, कितनी बड़ी रेस्टोरेंट होटल इंडस्ट्री है, पूरी सफर हुई है। उसके अलावा टीवी एंड फिल्म इंडस्ट्री बहुत बुरी तरह सफर हुई है। बहुत अभी कुछ शूटिंग्स होने लगी हैं, लेकिन वो लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हो रही है, पॉसिबल नहीं है, बूढ़े लोगों को अलाउ नहीं किया जा रहा है। स्पोर्ट्स एंड फिटनेस इंडस्ट्री पूरी की पूरी अफेक्टेड हुई है, गेम्स नहीं हो पा रहे हैं। भी आपका ओलंपिक भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिम्स भी नहीं प्रॉपरली खुल पा रहे हैं, पूरी एकेडमियां अफेक्टेड हुई है।
आपका ऑयल सेक्टर अफेक्टेड हुआ, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, एयरलाइन इंडस्ट्री, हमारे आपस में रिलेशंस खराब हो गए। आप देखो जो हमारे फ्रेंड्स थे, हमारे रिश्तेदार थे, हम जा नहीं पा रहे हैं, उनको बुला नहीं पा रहे हैं, हमें हेजिटेशन होता है किसी को इनवाइट करने में। तो इवन विद इन फैमिली भी हमारे रिलेशन काफ़ी इफेक्टेड हुए, चूँकि हम लोग सब इकट्ठे रह रहे हैं, हमें बाहर निकलने का मौका नहीं मिल पा रहा है। तो कुछ लोग कह सकते हैं कि हमें फैमिली के लिए टाइम मिल गया, वो एक प्लस पॉइंट है। लेकिन ऑन दी अदर साइड आप देखो, जब आप लगातार घर में ही रह रहे हैं तो जो पर्सनल स्पेस था वो नहीं मिल पा रहा है, बच्चों को फ्रीडम नहीं मिल पा रही है, हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे के साथ फुल टाइम रहना पड़ रहा है, तो कई बार नेगेटिविटी में रिलेशन इफेक्टेड हो रहे हैं। तो लाइब्रेरीज और म्यूजियम्स भी बहुत बुरी तरह इफेक्टेड हुए। हम लोग सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, अभी भी हमारे कैंपस में बच्चे नहीं है। हर लाइब्रेरी ऐसी नहीं है कि वो आपको रिमोट लॉगिन और रिमोट एक्सेस जैसी फैसिलिटी दे पाए। तो कुल मिला के कि these industries are mostly labor intensive industries, but library profession is IT supported. हमें हमारा जो प्रोफेशन है, जो लाइब्रेरियनशिप है, उसमें आईसीटी का काफ़ी रोल है। सो हमारे प्रोफेशन में काफ़ी होप है, इन सिचुएशंस में भी हम अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। और इनफैक्ट हम लोगों ने अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। अगर आईआईटी दिल्ली का आप एग्जांपल लें तो हमने अपनी सारी सर्विसेज क्लाउड पे माइग्रेट कर दी। लाइक इवन हम लोग लिप्सिस यूज़ करते हैं, लिप्सिस लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, वो भी बादल क्लाउड पे माइग्रेट कर दिया। तो अभी हमारी लाइब्रेरी अगर बंद भी होती है तो हमारी कोई सर्विस अफेक्टेड नहीं हो रही है। पहले हम लोग वीपीएन यूज़ करते थे, अभी हमने शेवोले भी यूज़ करना शुरू कर दिया, और इतना ये रोबस्ट है कि तकरीबन हमारी कोई भी कंप्लेंट आनी बंद हो गई कि हमें एक्सेस नहीं मिल रहा बाहर से। सारी रिसोर्सेज, चाहे हमारे यूज़र नाइजीरिया में हों, चाहे अमेरिका में बैठे हों या जर्मनी में हों, हमारे यहाँ हर जगह के स्टूडेंट्स हैं, उनको सबको हमारा जो ऑफिशियल लॉगिन है, जिसको हम करबोरोस लॉगिन बोलते हैं, जो हमारा आईआईटी दिल्ली का क्रेडेंशियल्स है, उससे हमारी सारी सपोर्ट सर्विसेज वो एक्सेस कर पा रहे हैं। तो जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ मार्च में, तो उसका रिस्पांस क्या था? लाइब्रेरीज का रिस्पांस क्या था इन इंडिया? सो लाइब्रेरीज एंड लाइब्रेरियन फाउंड इट चैलेंजिंग। उनको मतलब शुरू में जो ये लॉकडाउन शुरू हुआ करीब 20 मार्च के आसपास से, तो ये हमारे सबके लाइब्रेरियंस के लिए या लाइब्रेरीज के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। बड़ी डिफरेंट सिचुएशन थी, और अलग अलग लाइब्रेरीज ने, अलग अलग लाइब्रेरियंस ने अपनी सिचुएशंस के हिसाब से अलग अलग स्ट्रेटेजी अपनाई। कुछ लोगों ने अपनी लाइब्रेरीज को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके सर्विस देना जारी रखा, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द लाइब्रेरी। लाइक बड़ी लाइब्रेरी जो थी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज होती हैं, उनको तो गवर्नमेंट के डायरेक्टिव के हिसाब से उनको बंद करना पड़ा। बट जो छोटी लाइब्रेरीज थी या जहाँ पॉसिबल था सर्विस दे पाना, तो उन्होंने सर्विस देना जारी रखा गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल के हिसाब से। कुछ और लाइब्रेरीज थी जिन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा लगाए और सर्विसेज जारी रखी। ज़्यादातर लाइब्रेरीज पूरी तरह बंद हो गई पेंडेमिक के पीरियड में, और अब आज की डेट में अच्छी खासी लाइब्रेरीज खुल गई हैं या कुछ लाइब्रेरी खोलने की तैयारी में, लेकिन लिमिटेशंस हैं। लाइक आईआईटी दिल्ली लाइब्रेरी 24/7 खुलती थी, हर वक्त हमारे यहाँ पूरा एक मेले जैसा माहौल रहता था। आसपास में काफ़ी हमारे यहाँ टी स्टॉल्स और कैफ़ेज़ हैं, उन पे लोग रहते थे, चाय की चुस्कियों का मज़ा लेते थे और साथ साथ लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते थे, पूरी पूरी रात पढ़ते थे। हमारी लाइब्रेरी कभी बंद नहीं होती थी। तो बहुत सारी लिमिटेशंस हो गई हैं। तो टीचिंग एंड लर्निंग पे क्या असर पड़ा? जब ये पेंडेमिक शुरू हुआ, कोविड-19 आया, टीचिंग लर्निंग पे क्या असर पड़ा? आपने देखा है टीचिंग लर्निंग मोस्टली अब ऑनलाइन हो गई। जैसे आप ये एक तरह से फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो अटेंड कर रहे हैं, जनरली ये जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर्स हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के या एकेडमिक स्टाफ कॉलेजेस हैं, वो होस्ट करते थे या यूनिवर्सिटीज़ होस्ट करती थी। तो एक फिजिकल इंटरेक्शन होता था, फिजिकली आप जाते थे, लोगों को मिलते थे। लेकिन अभी क्या हुआ? अभी मोस्टली आपका सब ऑनलाइन हो गया, फिजिकली सब बंद हो गया। तो ये बहुत बड़ा एक चेंज आया हमारा टीचिंग लर्निंग पे।
इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी बहुत हैं। वो आई थिंक हमारा डिस्कस करने का अभी यहाँ पे कोई प्लान नहीं है। डिसएडवांटेजेस यही है कि ऑनलाइन टीचिंग मैं आपको अभी लेक्चर दे रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आप बहुत अच्छे से कन्वे नहीं कर पाओगे। एक साथ बहुत सारे लोग जो बोलने लगते थे फिजिकल इंटरेक्शन में, वो नहीं हो पा रहा है। इनफैक्ट मैं तो मेरे ख्याल से हफ्ते में एक आध इंटरव्यू भी कहीं ना कहीं का लेता हूँ, चाहे वो लाइब्रेरियन, डिप्टी लाइब्रेरियन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन हो। मैं देख रहा हूँ ऑनलाइन इंटरव्यू में कैंडिडेट भी ढंग से असेस नहीं हो पाता। कैंडिडेट ने कुछ बोला, फिर एक्सपर्ट ने कोई क्वेश्चन किया, दूसरा एक्सपर्ट अगर क्रॉस क्वेश्चन करना चाह रहा है तो वो ढंग से नहीं हो पाता। कोई म्यूट है, कोई अनम्यूट है, कहीं से नॉइज आ रहा है। तो यही टीचिंग एंड लर्निंग का असर हो रहा है। आपका घर में बच्चा पढ़ रहा है, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहा है, उसको दूसरे तरह के कई डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, फैमिली से डिस्टर्बेंस हो रहा है, उसकी कनेक्टिविटी पुअर है, उसके यहाँ लाइट चली गई, उसके पास बेचारे के लैपटॉप और डेस्कटॉप नहीं है, मोबाइल में कितना कैसे मैनेज करेगा। तो बहुत सारी चीजें, ये स्क्रीनशॉट मैंने वही जो स्लिप जो यूके की लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन है ऑफिशियली, उसका स्क्रीनशॉट है जब मैं व्हेन आई वाज डिलीवरिंग दिस प्रेजेंटेशन ऑन देयर प्लेटफॉर्म 2 months back. So what I'm trying to say is that like everything is becoming IT oriented, or there is an involvement of internet as well. तो अभी टीचिंग लर्निंग सब कुछ ऑनलाइन हो गई है। हम लोग पूरी तरह माइग्रेट कर रहे हैं, फिजिकल इवेंट्स हो नहीं पा रहे हैं, फिजिकल कॉन्फ्रेंसेस नहीं हो पा रहे हैं, नेटवर्किंग इफेक्टेड हो रही है, पर्सनल रिलेशंस इफेक्टेड हो रहे हैं। इनफैक्ट हमारे कंट्री में तो थोड़ी सी बेहतर सिचुएशन है, दूसरे कंट्रीज में आप देखोगे लोग सुसाइड बहुत ज्यादा कर रहे हैं। उनको आदत ही नहीं है घर में बंद रहने की, 7-8 महीने से घर से निकले नहीं, लोग सुसाइड कर रहे हैं। लोगों के पास सेविंग का वहाँ कंसेप्ट नहीं है। लाइक हमारे यहाँ है, हम लोग कुछ पैसा बचा के रखते हैं अपने बच्चों के लिए, प्रॉपर्टी कुछ रखते हैं। अमेरिका जैसे कंट्री में सेविंग का बहुत ज्यादा कंसेप्ट नहीं है। वो लोग मंडे टू फ्राइडे कमाते हैं बहुत सारे लोग, और सैटरडे संडे को पूरा आराम से खर्च करते हैं, मजा करके खत्म कर देते हैं। तो बहुत ज्यादा ओवरऑल फर्क पड़ा है हर चीज पे, और किलोमीटरों लंबी लाइन लग रही है खाने के लिए वहां पे। तो our country is still better because our immunity is better and we can manage in minimum resources as well. तो पूरा का पूरा हमारा टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस है वो माइग्रेट कर गया ऑनलाइन पे, और अकॉर्डिंगली हम अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप भी जानते हैं कि ऑनलाइन उतना इफेक्टिव नहीं साबित हो रहा है। सो जब ये सारी चीजें बंद हैं, बुक की सप्लाई नहीं आ रही है, वेंडर बुक्स नहीं अवेलेबल करा पा रहे हैं, फैकल्टी किताबें रिकमेंड नहीं कर पा रही है, ठीक है, आप लोग कई चीजें ऑडिट की वजह से, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स की वजह से अपने प्रपोजल पास नहीं करा पा रहे हैं, फंडिंग की लिमिटेशन है, तो आपके कलेक्शन मैनेजमेंट पे काफी ज्यादा असर पड़ा है ड्यूरिंग कोविड। लाइक इन IIT Delhi as well, we are not able to add those many books in our collection as earlier we were adding. हम लोग प्रिंटेड किताबें भी ऐड नहीं कर पा रहे हैं ढंग से। और जहां तक ई बुक्स की बात है, ई बुक्स कहने के लिए ई बुक्स है, अदरवाइज आप टेक्स्ट बुक या जो पॉपुलर बुक्स हैं जो हमारे बच्चों को किताबें चाहिए वो ई फॉर्मेट में अवेलेबल ही नहीं है। ये उनके ऐसे टर्म्स कंडीशन हैं जो कि हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हैं। सप्लाई बहुत बुरी तरह अफेक्टेड हुई है, GST भी अब 5% लग गया है, ठीक है, लाइक नॉट ऑन प्रिंटेड बुक्स। तो ई फॉर्मेट में भी इतना इजी नहीं रह गया। तो कुल मिला के कलेक्शन मैनेजमेंट का मतलब ये हुआ, जो हमारा एक्विजिशन ऑफ बुक्स है या अदर रिसोर्सेस है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि फंडिंग भी कम है और प्रोसीजरल डिलेज भी हो रहे हैं। और अगर फिजिकल कोई चीज हमें चाहिए तो वो इम्पोर्टेड बुक्स या दूसरी चीज सप्लाई भी नहीं हो पा रही है प्रॉपरली। इन सारी दिक्कतों के बावजूद हम लोगों ने लाइब्रेरीज खोली हुई हैं, हम लोग सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं और सर्विसेज दे भी रही हैं। स्क्रीनशॉट्स हैं, कुछ आप देख सकते हैं। एक लाइब्रेरी है, यहाँ पे काफी सारे क्रॉस लगे हुए हैं और बहुत कम लोगों को यहाँ देखिए बैठने को अलाउ किया हुआ है। तो ये हालत हो गई है लाइब्रेरीज की। लाइब्रेरीज जहाँ पे नेटवर्किंग होती थी, जहाँ पे जोड़ियां बनती थी, जहाँ पे प्यार मोहब्बत और किताबों की बातें होती थी, तो वो अब वीरान हो गई हैं। बहुत कम लोग अलाउ किए गए हैं
लाइक आईटी दिल्ली में भी हमने एक टेबल पे एक चेयर छोड़ी हुई है। तो मान लिया 100 टेबल्स हमने अगर लगाए हुए तो 100 चेयर्स छोड़ी हुई हैं, उतने ही लोग बैठ पाएंगे। ठीक है, आप देखिए दूर दूर लोग बैठ रहे हैं, दूर दूर उनको स्पेस दिया गया है, मास्क लगा के बैठ रहे हैं। अब मास्क लगा के बैठने में आप कंफर्टेबल तो फील नहीं करेंगे, आपके कान में दर्द हो जाता है। ये अगर आप स्पेक्ट्स लगाते हैं, चश्मा लगाते हैं, और अगर चश्मा लगा के आप मास्क लगा के अगर बोलते हैं तो आपको भी पता है आपके चश्मे पे धुंधलापन आ जाता है, आपको ठीक से दिखाई नहीं देता। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइजेशन है, ठीक है, टेम्परेचर को नोट करना है जब कोई लाइब्रेरी में आ रहा है, ऐप है जैसे आरोग्य सेतु ऐप है इंडिया में, तो वो सबको आपको ऑन रखना है कि आपके कांटेक्ट में नियर बाई तो कोई नहीं आ गया। और इसके अलावा बुक्स को क्वारंटीन भी करना है। जो किताबें वापस आ रही हैं, इशू रिटर्न, जैसे हम लोग भी इशू रिटर्न ने कभी बंद नहीं हुआ, अच्छा खासा इशू रिटर्न हमें हो रहा है अभी भी। तो बुक्स जो वापस आ रही हैं उनको हमने एक पीरियड के लिए क्वारंटीन भी करना है। तो इतना आसान नहीं रह गया, हम लोग खुल तो गए, बट दिस इज न्यू नॉर्मल और नेक्स्ट नॉर्मल, इसमें ही हमने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। तो जब हमारे पास बुक्स, लाइक आईटी दिल्ली हैज ए RFID सिस्टम, so when people are coming and returning the books in the book drop box, हम लोग ideally we are not touching those books for 72 hours. कुछ लोग बोलते हैं 24 आवर्स के बाद वायरस इनफेक्टिव हो जाता है, लेकिन as far as the general guidelines from various authoritative agencies are concerned, like WHO, World Health Organization और अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन और कुछ और ऑर्गेनाइजेशन है, उन लोगों ने कहा कि कम से कम 72 आवर्स को आप किताब को छूइए मत। तो जो भी किताबें हमारी वापस आती हैं, हम कोशिश करते हैं उनको बुक ड्रॉप बॉक्स में डलवाया जाए, ठीक है, और उसके बाद 72 घंटे के बाद उन किताबों को हम वापस दूसरे को, किसी को देने के लिए एग्री होते हैं। क्योंकि हमारा RFID सिस्टम है तो हमारी किताबें तो ऑटोमेटिकली रिटर्न हो जाती हैं बुक ड्रॉप बॉक्स के थ्रू, लेकिन जैसे ज़्यादातर लाइब्रेरी में RFID नहीं है तो उनको किताबों को बिना रिटर्न किए हुए किसी एक जगह पे रखना पड़ता है, टेबल पे रख देते हैं। उसके बाद उनको 72 आवर्स के बाद उनको देखते हैं कि उन पे फाइन है नहीं है, रिटर्न करते हैं, और उस बुक की अगर किसी और को डिमांड होती है तो वो प्रोवाइड करते हैं। तो 72 आवर्स इज द आइडियली स्पीकिंग गुड टाइम टू कंसीडर दैट द बुक हैज बीन क्वारंटीन्ड। इसके अलावा सोशल मीडिया एंड फेक न्यूज़ भी बहुत बड़ा चैलेंज है जिसमें लाइब्रेरियंस हेल्प कर रहे हैं इस पेंडेमिक के टाइम में, क्योंकि व्हाट्सएप जैसी यूनिवर्सिटीज पे कुछ भी सर्कुलेट हो जाता है, कोई इंफॉर्मेशन किस तरह से भी सर्कुलेट होती है। तो ये हम लाइब्रेरियंस की ड्यूटी है कि हम हेल्प करें कि लोगों को सही इंफॉर्मेशन पहुंचे, उनको गलत इंफॉर्मेशन ना पहुंचे, मिनिमाइज करने की कोशिश करें। अगर उनको कोई क्लैरिफिकेशन है रिगार्डिंग कोविड और कुछ अदर चीजें, तो कोशिश करें उनको सही इंफॉर्मेशन पहुंचे। कोई बोलता है कि नहीं भाई 12 घंटे में वो क्वारंटीन हो जाती है, या दूसरी रिसोर्सेस कैसे आप पा सकते हो, ठीक है। और इस सिचुएशन में आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा फिशिंग मेल्स, ओके, ठगी, साइबर ठगी बहुत हो रही है, ठीक है। हमें भी कई बार बहुत नॉक करते हैं लोग, हमारे नाम से भी मेल्स जाती हैं, हो सकता है आप लोगों में से भी किसी को मेरे नाम से मेल गई हो, लेकिन जब आप मेल का हेडर देखेंगे तो वो बेसिकली वहाँ हो सकता है नेविगेशन लिखा हो फ्रॉम, लेकिन मेल आईडी मेरा नहीं होगा, मेल आईडी किसी और का होगा। एंड आई थिंक मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि जूम का प्लेटफॉर्म यूज होने से काफी ज्यादा रिस्क हो रहा है, हमारा डेटा जो है इधर उधर हो जा रहा है। तो एज ए लाइब्रेरियन हमारी भी ड्यूटी, एज ए लाइब्रेरी हमारी भी ड्यूटी है, हम लोगों को हेल्प करें कि किस तरह से हम ये प्रॉब्लम्स मिनिमाइज कर देते हैं। तो जब अभी सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है, अभी पेंडेमिक है, लेकिन स्टिल हमें कहा गया कि वी आर ओपन फॉर आवर सर्विसेज, वी आर हेयर टू हेल्प यू। तो हमें कुछ प्रोटोकॉल्स बनाने पड़े, हमें कुछ रूल्स बनाने पड़े, कुछ नियम बनाने पड़े अपनी लाइब्रेरी सर्विसेज को चलाने के लिए। तो उसी तरह से आईटी दिल्ली क्या सारी लाइब्रेरीज ने कुछ स्टैंडर्ड रूल्स बनाए कि अगर कोई लाइब्रेरी में आता है तो उसको हम सर्विसेज किस तरह से प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये ओपन कर देता हूँ साइट का
presenter वो like the work library working hours have been reduced. हमने अपना समय कम कर दिया है. पहले हम like 24/7 खुले हुए थे और रात को 9 बजे तक हमारा स्टाफ भी रहता था सारा सेक्शंस का, और उसके बाद गार्ड्स भी रहते थे और लाइब्रेरी खुली रहती थी. 24 घंटे पूरी लाइब्रेरी खुली रहती थी, कुछ सेक्शंस को छोड़ के वो लॉक कर दिए जाते थे. अभी क्या है, हम लोग वी आर ओपन फ्रॉम 9 to 5:30 ओनली. ठीक है, एज ए लाइब्रेरियन हमें कुछ काम होता है, हम 1-2 लोग 3 लोग शाम को बैठ के काम करते हैं, बट लाइब्रेरी वर्किंग आवर्स हैव बीन रिड्यूस. उसके अलावा पहले हम लोग गेस्ट को भी अलाउ कर देते थे, स्टाफ के बच्चों को भी अलाउ कर देते थे. नाउ ओनली करंटली एनरोल्ड स्टूडेंट्स, फैकल्टी, स्टाफ इज अलाउड. उसके अलावा जब आप लाइब्रेरी में आते हैं तो IR सेंसिंग इज एसेंशियल. आपका टेम्परेचर अगर 98 को क्रॉस कर रहा है या 99 के आसपास है तो हम आपको रोकेंगे, हम आपको लाइब्रेरी के अंदर नहीं जाने देंगे, क्योंकि यू माइट बी हैविंग फीवर, और उस केस में हम नहीं आने देंगे. तो IR सेंसिंग, मास्क बेयरिंग, सैनिटाइजेशन, फिजिकल डिस्टेंसिंग, यूज ऑफ आरोग्य सेतु ऐप इज मैंडेटरी. यू आर डिस्करेज टू कम विद बैग्स. बड़े बड़े बैग्स के साथ लड़के लड़कियां आते तो उनको हम डिस्करेज करते हैं कि बैग लेके ना आए. जो हमारा ऑफिस का स्टाफ है उसको कहा गया है एक सिस्टम एक ही पर्सन यूज करे. पहले तो किसी के कंप्यूटर पे कोई भी बैठ जाता था, ठीक है, लेकिन अभी स्टाफ नीड टू यूज डेजिग्नेटेड ऑफिस स्पेस ताकि इन्फेक्शन ना फैले. सरफेस जो है, किसी चीज को हमें सरफेस की चीज को कम से कम टच करना है, और जो एरियाज फ्रीक्वेंटली विजिट करते हैं लोग, उनको हमें रेगुलरली डिसइंफेक्ट करते रहना है. इसके अलावा एम्प्लॉय रिजाइडिंग इन द कंटेनमेंट एरिया और हैविंग सिम्टम्स ऑफ कोविड, उनको ऑफिस नहीं आना. मैंने बताया IIT दिल्ली में भी अब तक 5 लोग इन्फेक्टेड हुए मेरे साथी, लेकिन सारे यंग थे. लकीली सब ठीक हो गए, लेकिन 1-2 लोगों की बड़ी हालत खराब थी, मतलब उनको बहुत सीवियर सिम्टम थे और सारे सिम्टम आए उनको. ऐसा नहीं है कि सिम्टम नहीं आया, हर चीज. उनके मुंह का टेस्ट भी चला गया, उनको बुखार भी हुआ, उनको सांस लेने में भी दिक्कत हुई, उनको बॉडी पेन भी हुआ, उनको वीकनेस भी हुई, सब कुछ हुआ. तो ऐसा नहीं है कि कोविड बहुत सिंपल चीज है और उससे डरना नहीं चाहिए. डरना चाहिए, कॉशन लेना चाहिए, अपना ख्याल रखना चाहिए. इसके अलावा हम लोगों ने जो हमारा यूजर है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो लोग बैठने के लिए आते हैं, उनके लिए सेपरेट एंट्री और एग्जिट बनाया. उनका टॉयलेट अलग अलग है, उनका रास्ता अलग है, उसी रास्ते से वो बाहर जाते हैं. इसके अलावा यूजर्स को हम लोगों ने बुक स्टैक एरिया में अलाउ नहीं किया हुआ है. अगर उनको किताब चाहिए, कुछ इशू करना है, रिटर्न करना है, या फिर उनको कंसल्ट करना है, तो हमें वो क्लास नंबर अपने मोबाइल में ओपेक में देख के बता दें, या हमारे रिसेप्शन और सर्कुलेशन काउंटर पे आके हमें डिटेल जो उनको आती बता दें, और हम उसको वो सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं. तो हम लोग बेसिक उसी तरह से हमारा जो लाइब्रेरी का कंप्यूटर लैब था, ये ओपेक के लिए टर्मिनल्स रखे हैं हमने, वो भी आजकल हम लोगों ने अलाउ नहीं किए हुए, उनको यूज करना अलाउ नहीं किया हुआ है. सो और किताबें जैसा मैंने बताया, स्ट्रिक्टली हम लोग बुक ड्रॉप बॉक्स में ले रहे हैं, 72 आवर्स क्वारंटीन कर रहे हैं. जो भी ये पेंडेमिक का पीरियड है, इसमें कोई फाइन नहीं लगाया जा रहा है. अगर कोई किताब रिटर्न नहीं कर पा रहा है तो उसको कोई फाइन नहीं लगा रहा है, लेकिन अगर उसको नोटिस चाहिए तो उसको किताब रिटर्न करनी पड़ेगी. अगर हमें कोई बीमार आदमी नजर आता है, चाहे वो यूजर हो, स्टाफ हो, तो हम उसका हालचाल पूछते हैं और उसको घर भेज देते हैं. बीमार आदमी को ऑफिस आना अलाउड नहीं है. उसी तरह से जैसे हमारा प्रिंट फॉर्म में रिकमेंडेशन आता था, ऑनलाइन रिकमेंडेशन सिस्टम पहले भी था, हम लोग उसको और भी ज्यादा पॉपुलर करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, परचेज कमेटी की जो मीटिंग्स होती थी हमारी ज्यादातर ऑनलाइन हो रही हैं या बाई सर्कुलेशन कर लेते हैं. और ई रिसोर्सेज जो हमारी थी, वो एक एडवांटेज हुआ कि हमारा ई रिसोर्सेज का जो एक्सेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया. हमारी ई रिसोर्सेज अब बहुत इजीली एक्सेस हो जाती हैं. जो पहले BPN फैकल्टी एक्सेस कर पाती थी, अभी वो शिवोले के थ्रू सारे लोग, हमारे स्टूडेंट्स एक्सेस कर पा रहे हैं अपने ऑफिशियल लॉगिन से एंट्री करके. अभी कुछ दिन पहले तक हमारी लाइब्रेरी 50% और 100% पे चल रही थी. लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम लोग फॉलो करते हैं. DOPT का एक सर्कुलर था कि भाई
अंडर सेक्रेटरी एंड उससे आगे के लोग जो हैं 50% आएंगे, 100% आएंगे और बाकी साथी अल्टरनेट डे पे। तो आप ये देख सकते हैं, ये सर्कुलर बहुत रिसेंट सर्कुलर है, 18 to 22 जनवरी तक अप्लाइड था ये। इसी मंडे से हम लोग 100% हुए, रोस्टर सिस्टम खत्म हुआ है। तो आप देखो सारे ऑफिसर्स डेली आ रहे थे इन डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी, और बाकी आप देखो सारा स्टाफ जो है हमारा अल्टरनेट डे पे आ रहा था। हम लोग इस तरह से ड्यूटी रोस्टर निकालते थे हर हफ्ते, जो हमारे लिए काफी चैलेंज था। लेकिन अभी जैसे दिल्ली गवर्नमेंट का सर्कुलर आया 22 जनवरी को, अब हम लोग 100% आ रहे हैं और रोस्टर सिस्टम नहीं फॉलो हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो भी कोविड के नॉर्म्स हैं फॉलो करते हुए अच्छी सर्विसेज दें। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज होती है वो होती है आपकी लाइब्रेरी वेबसाइट। अगर आपकी लाइब्रेरी की वेबसाइट नहीं है तो आपकी लाइब्रेरी की वेबसाइट बनी होनी चाहिए, और लाइब्रेरी की वेबसाइट अगर बनी हुई है तो डायनामिक होनी चाहिए, क्योंकि सारी सर्विसेज आपकी लाइब्रेरी की वेबसाइट के थ्रू ही प्रोवाइड की जाती हैं। लाइक ये हमारी जो आईटी दिल्ली की लाइब्रेरी की वेबसाइट है, हमने इन हाउस बनाई, ये ड्रिपल में बनी हुई है। तो इसका प्लस पॉइंट ये है कि एक तो ये ओपन सोर्स है, दूसरा इसमें आपको एक सर्च बॉक्स मिल जाता है। लाइक आप मेरा अगर मुझे ढूंढना चाहते कि नवी हसन इज वर्किंग इन आईटी दिल्ली, तो मेरा नाम तो यहाँ दिख नहीं रहा, मेरी कॉन्टेक्ट डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ अगर हसन या नवी टाइप करके सर्च मारोगे तो आपको सारी डिटेल्स मेरी मिल जाएंगी। तो ये बहुत अच्छा इंटरफेस है। सो लाइब्रेरी वेबसाइट्स आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज फार एज सर्विसेज टू द क्लाइंटेल इन दिस पैंडेमिक इज कंसर्न। इसके अलावा सब लोग नीड बेस्ड वेबिनार्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। लाइक ये डॉक्टर चौकसे का नीड बेस्ड वेबिनार है रेलेवेंट टॉपिक पे। तो हर लाइब्रेरी की ड्यूटी है वो अपने यूजर की रिक्वायरमेंट का ख्याल रखते हुए तरह तरह की एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करें। लाइक हम लोग जो हैं अपार्ट फ्रॉम होस्टिंग वेबिनार्स फ्रॉम लाइक इंटरनेशनल पब्लिशर्स, हम लोग स्टाफ रिचार्ज प्रोग्राम भी करते हैं। लाइक कोई ना कोई हम लोगों में से स्टाफ का एक साथी एक लेक्चर देता है प्रेजेंटेशन के साथ, हमारे इंटर्न्स लेक्चर्स देते हैं, हमारे कोलीग्स लेक्चर्स देते हैं। सो लाइक आईटी दिल्ली ने अभी 100% तो इसी मंडे से किया है, बट वी वर वर्किंग और मैनेजिंग दी सर्विसेज रिमोटली एज वेल। तो रिमोटली भी हम लोगों ने अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की डिफरेंट तरह से। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ लाइक ईआरपी सिस्टम है और ये कैंपस बेस्ड नेटवर्क सिस्टम है, तो उसका हम लोगों ने एक्सेस देके जो हमारा रिमोट एक्सेस सिस्टम है उसके थ्रू हमने सर्विसेज प्रोवाइड की। लाइक लिप्सिस क्लाइंट का एक्सेस दे दिया, लाइक और दूसरी तरह के एक्सेस दे दिए जो लोग कैंपस से बाहर रहते हैं। हम लोग जैसे कैंपस में रहते हैं हमें तो सारी फैसिलिटी, तो हमें बहुत सारी फाइन ट्यूनिंग, बहुत सारी चीज़ों को मॉडिफाई करना पड़ा न्यू नॉर्मल में। अब फॉर एग्जांपल आपका कोई अगर सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट है तो कई बार ये बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है कि उसको आप घर से क्या काम दोगे। तो कुछ नहीं, हमने उनको यही कहा कि हम लाइक 5000 एंट्री आप चेक करो, उसमें जो जो एंट्री में कमी है ओपेक के थ्रू आप उसको नोट करके लाओ, उसको हम ठीक करेंगे। ये हमारे जो थीसिस अपलोडेड हैं सर रिपोजिटरी पे, उनको चेक करो। तो हमने कुछ ना कुछ अपने साथियों को काम में लगा के रखा, उनको बिजी रखा, वो भी कंफर्टेबल रहे, एंगेज रहे, और हमारी लाइब्रेरी का क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट भी हुआ। हमने तरह तरह के रिसोर्सेस को अपनी लाइब्रेरी की वेबसाइट से लिंक प्रदान किए ताकि वो रिसोर्सेस एक्सेस हो पाए। आप देख सकते हैं कि हमने ये एल्सवेयर की रिसोर्सेस को यहाँ से लिंक प्रोवाइड किए, कुछ दूसरी और रिसोर्सेस को लिंक प्रोवाइड किए। हमने अपने जो ऑनलाइन लेक्चर थे अर्पित मूक्स कोर्स के, वो प्रोवाइड किए। इसके अलावा आप देख रहे हैं हमने लाइब्रेरी के लिए एक वर्चुअल टूर भी तैयार किया। हमने एक प्रेजेंटेशन विद वीडियो तैयार किया। मेरे सारे साथियों ने, जो भी ऑफिसर्स थे, उन्होंने अपना थोड़ा थोड़ा वीडियो कंपोनेंट इसमें ऐड किया। और जो हमारा ओरिएंटेशन ऑफलाइन होता था नए बच्चों के एडमिशन के लिए, बीटेक, एमटेक, पीएचडी, वो सब हमने इसके थ्रू किया। तो बच्चे हमारे कैंपस में नहीं आए, लेकिन एक्चुअली उनकी क्लासेस भी शुरू हुई, उनको एडमिशन भी हुआ, ठीक है। और ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ हमने उनको कंटेंट भी प्रोवाइड किया एज ए लाइब्रेरी की, वो क्या कंटेंट उनको मिल सकते हैं। तो ये काम सिर्फ हम नहीं कर रहे हैं, आईटी दिल्ली में सभी कर रहे हैं, चाहे वो आपके डॉक्टर चौक से हो या दूसरे लोग हों, सभी कर, या डॉक्टर संदीप हों।
लाइक MPLA ने भी आपने देखा होगा बहुत अच्छे अच्छे वेबिनार, अच्छे अच्छे रिसोर्स पर्सन्स को बुला के इस पीरियड में फ्री ऑफ कॉस्ट किया, आप लोगों को सर्टिफिकेट भी दिया, कंटेंट भी प्रोवाइड किए। तो ये स्क्रीनशॉट IIM बेंगलोर लाइब्रेरी का है। तो IIM बेंगलोर लाइब्रेरी की ने देखो पैंडेमिक में बहुत अच्छी सर्विसेज दी, इसलिए मैंने उनका स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। डॉक्टर रमा है वहाँ पे, रमा पटनायक, उन्होंने वर्चुअल रेफरेंस डेस्क की सर्विस दी, उन्होंने रिमोट एक्सेस के थ्रू, उन्होंने माई लाइब्रेरी अकाउंट करके एक लिंक दिया जिसमें आप जाके अपनी पूरी डिटेल देख सकते हैं, या फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं या न्यू रिसोर्सेस हैं। तो उन्होंने बहुत सारी सर्विसेज दी। सेम वाज द केस विद अदर लाइब्रेरीज एज वेल। लाइक IIT दिल्ली में पहले हम लोग वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू रिमोट एक्सेस देते थे सिर्फ फैकल्टी को। स्टूडेंट्स वर नॉट अलाउड टू यूज आवर रिसोर्सेज remotely from outside of the campus. Okay, but now with the help of InfinityNet, we have implemented InfinityNet access management system, and all our resources are now accessible through this InfinityNet management system. और बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आती, वो कोई भी एक लिंक क्लिक करेंगे, जो भी रिसोर्स यहाँ दी गई हैं, एक लिंक क्लिक करेंगे, जैसे वो लिंक क्लिक करेंगे वो नेक्स्ट स्क्रीन पे ले जाएगा जहां वो IIT दिल्ली का लॉगिन एंड पासवर्ड पूछेगा। वो लॉगिन एंड पासवर्ड जैसे आप डालेंगे, कोई भी रिसोर्सेज आप इस तरह से एक्सेस कर पाएंगे जैसे आप IIT दिल्ली के कैंपस से ही देख रहे हैं उस रिसोर्सेज को। और इन केस कुछ प्रॉब्लम आती है तो हमने बहुत कुछ डाला हुआ है, लाइक देखिए लाइब्रेरी ओरिएंटेशन वीडियो डाला हुआ है फॉर न्यू स्टूडेंट्स, हाउ टू एक्सेस ई बुक्स, हाउ टू एक्सेस ई जर्नल डेटाबेसेस, फोन नंबर हम लोगों ने अपने यहाँ दिए हुए हैं। इसके अलावा हम लोगों ने ईमेल आईडी दी हुई है, अपनी दी हुई है मैंने, या कंप्यूटर सेक्शन के इंचार्ज, या ई रिसोर्सेज के इंचार्ज, या InfinityNet। तो हर तरह से हमने सपोर्ट प्रोवाइड किया और हमें बहुत अच्छा इसका रेस्पॉन्स मिला। तो इस पीरियड में जो पेंडेमिक का पीरियड था, इसमें रिसोर्सेस, वही लाइब्रेरी ज़्यादा पॉपुलर हो पाई, वही लाइब्रेरी ज़्यादा कामयाब हुई जिन्होंने स्मार्ट लाइब्रेरी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं या सर्विसेज स्मार्टनेस से प्रोवाइड की। लाइक आप देख रहे हो ऑफ कैंपस सर्विसेज दी, फ्री रिसोर्सेज दी, चैट नाउ और आस्क द लाइब्रेरियन, जैसे आपका चैट बोर्ड वगैरह होता है, आप अमेजोन से कुछ खरीदते हो, आप रेलवे से टिकट बुक करते हो, आप मेक माई ट्रिप से कुछ लेते हो, तो वहाँ पे चैट करने का प्रोविजन होता है। तो ये चैट वगैरह वाली सर्विसेज काफ़ी पॉपुलर हुई। उसी तरह से RFID का हमारा बुक ड्रॉप सिस्टम काफ़ी चला इसमें या चल रहा है। प्लस जो हमारी IIT दिल्ली की लाइब्रेरी की सिंगल विंडो सर्च ऐप थी फॉर iPhone एंड एंड्रॉयड यूजर, दैट हैज़ ऑल्सो बीन यूज्ड। क्योंकि लाइब्रेरी की जो ये सारी रिसोर्सेज हैं, ये स्मार्ट लाइब्रेरी सर्विसेज हैं, इसमें अपने लाइब्रेरी में आने की जरूरत नहीं है until you require the physical document। ठीक है, उसी तरह से हमने लाइब्रेरी का हमारा ट्विटर हैंडल है, और हम जितने भी नोटिफिकेशन, जितना भी कम्युनिकेशन अपने ऑफिशियल या स्टाफ के साथ करते हैं, हम अपने जो हमारा व्हाट्सएप अकाउंट है IIT दिल्ली सेंट्रल लाइब्रेरी का, ITD लिबनेट, उसके थ्रू करते हैं। तो इस तरह से हमने ट्विटर है, हमारा फेसबुक अकाउंट है, और हमारा ये फैकल्टी प्रोफाइलिंग सिस्टम है, इसको हमने काफ़ी स्ट्रेंथन किया और अच्छी खासी लाइब्रेरीज ने यही किया। तो जैसा कि मैं बता रहा था, RFID काफ़ी पॉपुलर हुआ इस पेंडेमिक में, लोगों ने बुक ड्रॉप बॉक्सेस को काफ़ी यूज़ किया, और जो उनको किताबें चाहिए थी, अगर सेल्फ चेकआउट नहीं करना चाहते तो हम लोगों ने उनको किताबें निकाल के दी, क्योंकि इनको इस टैक्स के अंदर हमने अलाउ नहीं किया। जैसा मैं आपको बता रहा था कि IIT दिल्ली की लाइब्रेरी ऐप है, जो कि एंड्रॉयड और iPhone यूजर दो आप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। सिंगल विंडो सर्च फॉर IIT दिल्ली नाम से है, तो आप भी इसको अपने iPhone या एंड्रॉयड में इंस्टॉल कर सकते हैं। हालांकि आप फुल टेक्स्ट रिसोर्सेज हमारी एक्सेस नहीं कर पाओगे। फुल टेक्स्ट रिसोर्सेज एक्सेस करने के लिए आपको हमारा रिमोट लॉगिन सिस्टम या हमारे IP को यूज करना पड़ेगा। तो ये हमारी सिंगल विंडो सर्च जो वेबसाइट के थ्रू भी है, काफ़ी अच्छे से यूज़ किया और इसको इम्प्रूव भी किया, जो उनकी यूज़र की रिक्वायरमेंट थी इसमें। और सोशल नेटवर्किंग वैसे तो काफ़ी डिस्ट्रैक्टिंग एंड डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है, लेकिन पेंडेमिक में काफ़ी यूज़फुल रही, और स्पेशली अगर आप उसको
जुडिशियस यूज करते हैं सोशल नेटवर्किंग को तो कोई बुरी बात नहीं है। लाइक मैंने बताया आईटी दिल्ली सेंट्रल लाइब्रेरी का ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है ITD लिवनेट, आप देख सकते हैं ये। तो हमने इसको जो भी हमने कम्युनिकेशन किया इसके थ्रू किया। ओनली ऑफिसर्स आर अलाउड टू पोस्ट मैसेजेस, देख सब सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पर्सनल मैसेज भेज सकता है, ताकि कोई गुड मॉर्निंग का कोई इररिलेवेंट मैसेज ना चला जाए। उसी तरह से सेंट्रल लाइब्रेरी IIT दिल्ली का हम लोगों ने ट्विटर हैंडल है, हमारा फेसबुक अकाउंट है, हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे से फ्रूटफुली यूज किया। ये हमने फैकल्टी प्रोफाइलिंग सिस्टम जो है IRNS जो इम्प्लीमेंट की हेल्प से चल रहा है जो प्रोजेक्ट, उसको काफी हमने डेटा अपना स्ट्रेंथन किया, फैकल्टी के रिकॉर्ड अपडेट किए, और इसमें व्यू बहुत अच्छा आता है। लाइक दिस इज माय फैकल्टी प्रोफाइलिंग यूजिंग दिस IRNS और विद्वान डेटाबेस। तो इसमें बड़ा अच्छा आपको को ऑथरशिप आपके और आपका और सीट, स्कोपस, रिसर्चर ID, गूगल स्कॉलर और माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक, ये सब इंटीग्रेट हो जाते हैं। एक बार आपने इंटीग्रेट कर दिया, जो भी आपके पेपर्स, साइटेशन जो भी आएंगे वो आपको ऑटोमेटिकली इसमें रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह से जो लाइब्रेरी की फुल टेक्स्ट रिसोर्सेज को हमने अपने ओपेक्स से लिंक दिया हुआ है मल्टीमीडिया फोल्डर के थ्रू, उससे काफी बच्चों को फायदा है। वो हमारी जो रिसोर्सेज हैं जिनको लिंक दिया हुआ है उसको उतने कंटेंट अपलोड डाउनलोड कर सकते हैं। या जो हमारा ऑनलाइन बुक रिकमेंडेशन सिस्टम है वो पेंडेमिक में मेरे ख्याल से काफ़ी यूजफुल है फैकल्टी के लिए। अगर वो प्रिंटेड फॉर्म नहीं भरना चाहते तो ऑनलाइन बुक रिकमेंडेशन सिस्टम के थ्रू बुक, ई बुक या प्रिंटेड बुक रिकमेंड कर सकते हैं। इवन हमने ईमेल से भी लोगों को ऑब्लाइज किया। उसी तरह से बहुत सारे हमारे बच्चे या फैकल्टी हैं जो बाहर हैं, कैंपस में नहीं है, उनको इंटरेस्ट रहता है कि कैंपस या IIT दिल्ली से रिलेटेड क्या डेवलपमेंट हो रहा है। तो हम लोग सेंट्रल लाइब्रेरी हम लोग न्यूज़ क्लिपिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हमारी एक कोलीग हैं जो ये देखती हैं, तो आप लोग भी ये सर्विस शुरू कर सकते हो। इसमें आपका कोई 5 पैसा खर्च नहीं होना है। आपको अच्छे अच्छे जो न्यूज़ सोर्सेस हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, गूगल न्यूज़ है, दूसरी साइट्स हैं, वहाँ आप RSS फीड अगर सब्सक्राइब कर लें अगर आप अपनी मेल पे और कीवर्ड दे दें लाइक भोपाल या IIT दिल्ली, तो आपको डेली सुबह में एक मेल आ जाएगा कि ये कंटेंट अवेलेबल है इस पेपर में। तो आप देख सकते हैं वो आपके काम के हैं नहीं। अगर वो काम के हैं तो आप उसको कॉपी पेस्ट करके एक वर्ड की फाइल को सेव एज PDF करके पूरी की पूरी एक न्यूज़ क्लिपिंग निकाल सकते हैं डेली बेसिस पे भी। उसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया था, चैट नाउ और आस्क द लाइब्रेरी इंटरफेस भी आप लोग शुरू कर सकते हैं पेंडेमिक में या दूसरे टाइम भी। ये आपके पास अच्छा टाइम है अपने टाइम को यूटिलाइज करने का। इसी तरह से जो आपके पास डॉक्यूमेंट डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल है उसको आप वेबसाइट्स पे अपलोड कर सकते हैं। बच्चों को ईजी होगा यूज करने में। लाइक हमने लाइब्रेरी की पूरी हैंडबुक ये अपलोड की हुई है। इसके अलावा जो हमारे क्वेश्चन पेपर्स हैं बच्चों के, वो भी किसी साइट पे अपलोड है BSW की, उसको हमने IIT दिल्ली सेंट्रल लाइब्रेरी की साइट से लिंक कर दिया है। इसके अलावा रिसर्च सपोर्ट सर्विसेज भी आप लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। इस पेंडेमिक में आपसे डिफरेंट तरह की लोग सजेशंस लेते हैं, लाइक चाहे उनको प्लेजरिज्म से रिलेटेड है, चाहे उनको एनालिसिस कुछ करना है, उनको कुछ डेटा चाहिए रैंकिंग के लिए दूसरी सर्विसेज के लिए, तो उसमें आप काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। तो मैं देख रहा था इस पेंडेमिक में हमारा यूसेज कुछ चीज़ों का बड़ा है। लाइक ये साइंस डायरेक्ट का प्लेटफॉर्म है जिसने फ्री टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल कराई थी इस पेंडेमिक में। तो IIT दिल्ली की लोगों ने बहुत ज़्यादा उसका यूज़ किया, एंड वी वर फाउंड टू बी एट नंबर 7 as far as the usage of Elsevier Science Direct free books are concerned. एंड हमने ईयर बाई ईयर प्रोग्रेस की और 31% हमने यूसेज में जंप किया है। और आप देख सकते हो कि जो ग्लोबल एवरेज है पूरे वर्ल्ड की वो करीब 33.4% है को यूसेज एनालिसिस में। को यूसेज का मतलब एक ही प्लेटफॉर्म से साइंस डायरेक्ट के प्लेटफॉर्म पे बुक्स और जर्नल्स को सर्च करना। इंडिया की एवरेज 34% है, लेकिन IIT दिल्ली ने 40% यूसेज अचीव किया। ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये इसलिए पॉसिबल हुआ कि जो हमारे यहाँ साथी हैं जो डिफरेंट सेक्शंस देख रहे हैं वो रेगुलर बहुत ही फ्रीक्वेंटली वेबिनार करते रहे, वो वर्कशॉप्स करते रहे, वो ईमेल भेजते रहे,
वो कंटेंट बना के अपलोड करते रहे, वो लोगों को इमीडिएट रेस्पॉन्स करते रहे, चाहे व्हाट्सएप से, फोन से। तो ये एक टीम एफर्ट था जिसमें हम लोग काफी सफल रहे। और जैसा मैंने आपको बताया, हमारी ऑलरेडी काफी सर्विसेज क्लाउड पे थी। बादल जिसका नाम है, बादल ये हमारा कोई आईटी दिल्ली का क्लाउड नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का क्लाउड है। और जो सरकारी संस्थान हैं वो फ्री बादल को यूज करने के लिए अप्रोच भी कर सकते हैं बादल की टीम को। तो अच्छी बात ये हुई कि इस पेंडेमिक पीरियड में हमारी सारी सर्विसेज बादल पे स्विच ओवर कर गई। अभी हम लोग लाइब्रेरी में कोई भी सर्वर मेंटेन नहीं करते, हमें कोई कूलिंग नहीं मेंटेन करनी, सब कुछ हमारा बादल पे है। तो उसकी वजह से क्या है, सर्विसेज देना बहुत आसान है। अगर लाइब्रेरी बंद भी है तो आपको ओपेक और हर चीज का एक्सेस लगातार मिल रहा है, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे अच्छा काम आप जो कर सकते हैं इस पेंडेमिक के पीरियड में, आप अपनी फैकल्टी को, अपने लोगों को हेल्प करें कि वो डिफरेंट साइट्स पे जाके अपनी प्रोफाइल क्रिएट करें। अगर वो अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हैं डिफरेंट साइट्स पे, तो उससे उनकी विजिबिलिटी बढ़ेगी। उनकी विजिबिलिटी बढ़ेगी तो उनके कॉलेज, उनकी इंस्टीट्यूशन की विजिबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। और उससे क्या होगा, आपकी रैंकिंग भी अच्छी हो जाएगी, आपको लोग सर्च कर पाएंगे। तो मैंने बहुत सारे आइकन्स यहाँ दिए हुए हैं, कुछ चीजें 2-4 स्लाइड मेरी नेक्स्ट लेक्चर में रिपीट होंगी, उसमें ये भी है। तो आप डिफरेंट साइट पे प्रोफाइल बनाने की, जैसे अपनी इंस्टीट्यूट की साइट पे एक छोटी प्रोफाइल बना लें, रिसर्च गेट पे बना लें, ऑर्सिट पे बना लें, विद्वान पे बना लें, ठीक है। उसी तरह से एकेडमिया, IRNS, स्लाइड शेयर पे अपनी स्लाइड अपलोड कर दें, लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाएं। और फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जो है, ये भी कोई बुरी चीज है नहीं, अगर आप इनको फ्रूटफुली यूज करेंगे तो भी एक अच्छी चीज हो सकती है। तो इस पीरियड में हमारे नेशनल लेवल की जो एजेंसीज हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा रोल प्ले किया। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया ने काफ़ी रिसोर्सेज फैसिलिटेट किए, काफ़ी सारी इवेंट्स की। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता ने भी काफ़ी सारे वेबिनार सीरीज किए। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी ने भी हेल्प की लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने में। इसके अलावा नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया और राजा राम मोहन लाइब्रेरी फाउंडेशन ने भी काफ़ी लोगों को फैसिलिटेट किया पेंडेमिक में कि उनको सर्विसेज मिलती रहे। ये सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि मेरे ख्याल से दुनिया की पहली ट्राम लाइब्रेरी सर्विस है। कलकत्ता का जो ट्राम है उसमें एक रनिंग लाइब्रेरी शुरू की गई, और कोविड में ये लाइब्रेरी काफी पॉपुलर है। पैसेंजर्स बोर्डिंग दिस ट्राम आर बीइंग गिवन फ्री वाईफाई एंड अपॉर्चुनिटी बुक को लीव थ्रू करने की, बुक्स को कंसल्ट करने की इनसाइड दी ट्राम। इन्होंने कोविड के प्रोटोकॉल का भी पूरा ख्याल रखा। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो ट्राम लाइब्रेरी और लाइब्रेरी ऑन दी व्हील्स शुरू की गई है, ये उस रूट से गुजरती है जहाँ पे सारी इंस्टीट्यूशनल एरियाज हैं, लाइक प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी है और बहुत सारी आप अगर देखना चाहें यहाँ, तो मैंने ये लिखा हुआ है कि ये रूट पूरा बहुत पॉपुलर है। करीब 30 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, स्कॉटिश चर्च और दूसरा हिंदू स्कूल, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल और प्रेसिडेंट। तो ये ऐसे रूट से गुजरती है ये सर्विस की बहुत पॉपुलर हुई है। पूरी दुनिया ने इस सर्विस को अप्रिशिएट किया है। इसके अलावा लोग भी नए नए आइडियाज के साथ आए। फॉर एग्जांपल जो पब्लिक लाइब्रेरी सर्विस है वो लोगों ने बड़े अच्छे अंदाज में शुरू की और ये वॉलंटरीली शुरू की। फॉर एग्जांपल आप देखें, ये एक भाई साहब हैं, इन्होंने इस तरह से मॉडिफाइड ये रिक्शा बनाया, इसमें किताबें रखी और एक ही मोबाइल लाइब्रेरी सर्विसेज उन्होंने फ्री शुरू की। ये दूसरे भाई साहब हैं, इन्होंने भी मोबाइल लाइब्रेरी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू की। ये हमारी देखिए एक और बहन जी हैं जिन्होंने देखो साइकिल को ही लाइब्रेरी बना लिया। इन्होंने जगह जगह जाके कोविड के टाइम में लोगों के घरों में किताबें पहुंचाई, बच्चों की मैगजीन पहुंचाई ताकि बच्चे स्ट्रेस फ्री रहें, उनका मन लगा रहे, वो एंजॉय करें। इसके अलावा आप देखो एक ये पूरे टेम्पो को लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर दिया एक भाई साहब ने और बहुत ही इनोवेटिव तरीके से सर्विस प्रोवाइड की कोविड में। ये सब कोविड की चीजें। और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी तो खैर एक सरकारी सिस्टम है, इन्होंने तो अच्छी सेवा दी ही। इसके अलावा हमारे जो कुछ कोलीग्स हैं उन्होंने बहुत अच्छी सर्विस की। लाइक ये लड़की जो है IIT रोपड़ की SLIA हैं, सीनियर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, और इन्होंने IIT रोपड़ की हैं, इन्होंने उस एरिया के बच्चों को
अपनी सैलरी से, अपने पैसों से, हरप्रीत कौर नाम है इनका, तो इन्होंने आईटी रोपड़ से, तो इन्होंने लोगों को जाके किताबें बांटी, लोगों को जाके पढ़ाती हैं, अपने पैसे खर्च करती हैं और बहुत ही डेडिकेटेड है। ऐसे लाइब्रेरियन को हम लोग सलाम करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। ये हमारी बहुत ही मशहूर हुई बहन जी अनिंदिता गोगोई, who hails from Assam, India, has developed a small roadside library for children and adults. इन्होंने एक स्मॉल रोड साइड लाइब्रेरी डेवलप की, ठीक है। इन्होंने एक छोटा सा बेंच भी यहाँ रखा हुआ है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट न्यूज़पेपर और मैगजीन्स लोगों को देती हैं पढ़ने के लिए, और ये अपनी मैगजीन्स और किताबें बदलती रहती ताकि लोगों का इंटरेस्ट बना रहे। थोड़ा सा बैठने का इन्होंने स्पेस भी दिया। और ये बहन जी तो सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई है, आपके मध्य प्रदेश की हैं। ये इनका नाम है उषा और इनको किताबों वाली दीदी ही कहते हैं। सो ये बेसिकली एक शिक्षिका हैं और ये इतनी पॉपुलर हुई, इतनी मशहूर हुई कि इनका प्राइम मिनिस्टर ने अपनी मन की बात प्रोग्राम में नाम लिया। तो थोड़ा सा अगर आपके अंदर जज्बा हो काम कर, और ये देखिए लेडी कोई लाइब्रेरियन नहीं है बेचारी, मिस उषा इज नॉट ए लाइब्रेरियन, लेकिन देखो इन्होंने कितना बढ़िया काम किया, इतनी पॉपुलर हुई। ये अपने स्कूटर पे निकलती हैं, मैगजीन किताबें लटकाती हैं और ये लोगों को फ्री स्टडी करवाती हैं। इतनी मशहूर हुई कि प्राइम मिनिस्टर को भी इनका नाम लेना पड़ा। तो इसी तरह से बहुत सारी रिसोर्सेज जो हैं दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंटरनेशनल, उन्होंने भी अवेलेबल कराए, जैसे कि स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन है। लकीली जो ये इनकी टास्क फोर्स बनाई गई थी SLA की, उसका मैं भी मेंबर था। तो हम लोगों ने पूरी दुनिया से जो भी लिटरेचर कंटेंट अवेलेबल है कोविड पे या दूसरी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, वो हमने सारी ढूंढ के हमने यहाँ लिंक दिया हुआ है, ये फ्रीली एक्सेसिबल है आपको भी। इसी तरह से इफ्ला ने भी काफ़ी रिसोर्सेज कंपाइल करके एक्सेसिबल कराई, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने भी कंपाइल कराई। और आई थिंक आप लोग जो स्मार्ट लोग हैं वो जो डिफरेंट AI बेस्ड या मशीन लर्निंग या सिमेंटिक बेस्ड एप्स हैं उनको भी यूज कर सकते हैं। और उनको बाहर में गया था, एक आध जगह मैंने देखा एक रोबोट यहाँ खड़ा हुआ है लाइब्रेरी के गेट पे, और जैसे आप लाइब्रेरी में गार्ड या किसी रिसेप्शन से क्वेश्चन करते हैं तो उसमें क्वेश्चन करने की जगह है रोबोट से क्वेश्चन। इसके स्क्रीन पे लिखा हुआ था यू कैन आस्क मी ए क्वेश्चन बाय माय आईज आर ब्लू, ठीक है। तो जब इसकी आईज ब्लू हैं तो आप इससे क्वेश्चन पूछिए, ये आपको मुंह से बोल के भी आंसर देगा और यहाँ स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हुआ। अगर आप इसको पूछेंगे कि भैया अप्लाइड केमिस्ट्री की किताबें कहाँ मिलेंगी, तो आपको ये डिस्प्ले भी कर देगा और ये भी बता देगा अप्लाइड केमिस्ट्री की किताबें आपको 2nd फ्लोर पे लास्ट वाली रैक पे इस नंबर से इस नंबर के बीच में मिलेंगी। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट पेंडेमिक में एक्सप्लोर किए जा सकते हैं। और मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आप अच्छा काम कर रहे हैं वो अच्छा काम लोगों तक पहुंचना चाहिए, लोगों को पता लगना चाहिए आप अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आपकी लाइब्रेरी कमेटी, आपके प्रिंसिपल, आपके वाइस चांसलर को पता है, आपके डीन को पता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप उनको अपने तरीके से बताएं। उससे क्या फायदा होगा, आपकी रिसोर्सेज का यूज ज्यादा होगा, आपकी पार्टनरशिप अच्छी होगी, हो सकता है आपको फंडिंग अच्छी मिल जाए, ठीक है। आपको डिसीजन लेने में लाइब्रेरी की सुनी जाएगी, आपकी लाइब्रेरी की पोजीशन बेहतर होगी, एज ए लाइब्रेरियन आपको ज्यादा इज्जत मिलेगी और आपकी अथॉरिटी आपके लिए ज्यादा सपोर्ट करेगी कि भैया चौकसे साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, भाई इनको तो फंड दे ही दो। तो इस तरह से काफी फायदा होगा। तो जब डिमांड में चेंज हो रहा है यूजर्स की और पैटर्न अलग तरह से डिमांड कर रहे हैं इस पेंडेमिक पीरियड में, तो सिर्फ हमारा नुकसान ही नहीं हुआ है बल्कि बहुत सारे हमें फायदे भी हुए। the users are asking now all the content in machine readable form including scanned images। तो यूजर्स भला से हमारे पास नहीं है, हमारी लाइब्रेरी में नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन जो वो रिसोर्सेस मांग रहे हैं मशीन रीडेबल फॉर्म में, तो हम भी कोशिश कर रहे हैं नई नई चीजें लर्न करने की और उनको सर्विसेज प्रोवाइड करने की। यूजर्स चाहते हैं उनकी सारी क्वेरीज का आंसर ऑनलाइन दिया जाए, तो हम नए नए तरीके से उनकी क्वेरीज का आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ICT का स्पेशली काफी बेहतर हो रहा है, क्योंकि यूजर की डिफरेंट क्वेरीज आ रही हैं,
तो हम लोग भी लर्न करने की कोशिश करें, हमारा नॉलेज बेस बढ़ रहा है, ऑनलाइन एजुकेशन में काफ़ी हमारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ऑनलाइन जो हम मीटिंग कर रहे हैं, जैसे कॉन्फ्रेंस हम लोग वेबिनार कर रहे हैं, इससे हमारी एप्स की नॉलेज बढ़ रही है। लाइक जूम मैं नहीं जानता था, वेबिनार मैं नहीं जानता था, लेकिन पेंडेमिक ने ये सब मुझे सिखा दिया। क्योंकि जो चीज़ ऑनलाइन होती है वो काउंटेबल होती है। लाइक अभी कितने पार्टिसिपेंट अटेंड कर रहे हैं, आपने चैट में क्या क्या लिखा, ठीक है, वो सब कहीं ना कहीं, ये पूरा लेक्चर भी हो सकता है रिकॉर्ड हो रहा हो, ठीक है। तो इससे क्या फायदा हो रहा है कि हर चीज आपकी रिकॉग्नाइज होगी, आपको लोग एक्नॉलेज करेंगे कि भाई फला साहब ने एक प्रोग्राम किया था, बहुत अच्छा था, या उन्होंने लेक्चर दिया था, बहुत अच्छा था। कुछ लोगों को अच्छा फैमिली टाइम भी मिल रहा है इससे, जिससे उनका एक दूसरे को समझने में भी वक्त मिल रहा है। खासतौर से बच्चों के लिए एक अच्छा मौका है, छोटे बच्चों के लिए, कि उनके पेरेंट्स रह पा रहे हैं, ठीक है। आपका मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड है तो आपका फ्यूल बच रहा है, माहौल साफ सुथरा हो रहा है, मेडिकल के इंफ्रास्ट्रक्चर में एक तरह से ग्रोथ हो रहा है। तो कुल मिला के ये है कि न्यू और नेक्स्ट नॉर्मल हमारा जो है, उससे सिर्फ नुकसान नहीं है बल्कि कुछ फायदे भी हैं। आपका नजरिया आपको देखने की जरूरत है। ये कुछ रेफरेंसेस हैं जो मैंने यूज किए, जहां से मैंने डिफरेंट कंटेंट लिए हैं। और आप लोगों को और चौकसे साहब को थैंक यू कहने से पहले मैं कहूंगा कि ये जो मैंने प्रेजेंटेशन तैयार किया, ये लेक्चर जो तैयार किया है, मैंने बहुत सारी रिसोर्सेज कंसल्ट की, बहुत जगह से लिटरेचर लिया हुआ है, तो उनको मैं दिल से एक्नॉलेज करना चाहता हूँ कि उनकी हेल्प से मैंने ये प्रेजेंटेशन तैयार किया। तो अब इस स्क्रीन के साथ मैं आपको अपना लेक्चर ये वाला खत्म करूंगा कि न्यू नॉर्मल का जो प्रोटोकॉल है वो है कि अवॉइड टचिंग मैन, इंस्टीड फॉलो वीमेन। मतलब इसको मजाक में मत लीजिए, आप इसके वर्ड मीनिंग देखिए कि भैया आदमियों से बचो और वीमेन को फॉलो करो। आदमियों से बचो मतलब मैन को बचना मीन्स डू नॉट टच माउथ, आईज एंड नोज। It means avoid men. And instead follow women means wash your hands. W, obey social distancing. M, mask up. E, exercise and eat well. N, no unnecessary traveling. So with this, I would like to thank you all for listening patiently. If you have any question or query, we can take up before starting the another lecture. So avoid men and follow women. So thank you for this lecture. थैंक यू सो मच नबी हसन सर, भावना दिस साइड फ्रॉम रेफरी। और जैसा कि मोहित सर ने शुरू किया था कि आप जितनी सहेजता से अपनी बातें कह जाते हैं या एक्सप्लेन करते हैं, वो मतलब बिल्कुल काबिल तारीफ है। एंड यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 95, एंड मैंने को नोटिस किया था कि 100 से भी ज़्यादा पार्टिसिपेंट हुए थे आपके लेक्चर के दौरान, एंड सभी लोगों ने इंजॉय किया आपके पूरे लेक्चर को। मैं एक छोटी सी चीज़ बोलूँगी कि हम 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, एंड उसके बाद में हम पहले आपका नेक्स्ट सेशन शुरू करेंगे, एंड सारे क्वेश्चंस हम एट द एंड मिलेंगे, ठीक है सर, इफ दिस इज ओके विद यू। नबी हसन सर, आई थिंक आप म्यूट चले गए, एक मिनट में आपको अनम्यूट की ऑप्शन देती हूँ, प्लीज एक बार अनम्यूट कर लीजिए। ओके, सो आप कह रही हैं कि अभी क्वेश्चंस ना लें, क्वेश्चन हम दूसरे लेक्चर के बाद। हाँ, मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि सर आप सभी लोगों के पास लेक्चर सेशन 13 का मैंने फीडबैक फॉर्म ऑलरेडी सेंड कर दिया है, प्लीज़ उसको भर लीजिएगा, एंड आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं कंपाइल कर रही हूँ। सर के सेकंड सेशन के बाद हम एक साथ सारे क्वेश्चंस को लेंगे, और टिल देन अगर आप सब लेना चाहें तो हम एक 5 मिनट का क्विक ब्रेक ले लेते हैं। वी विल रिज्यूम एट 4:10। ओके, ठीक है, मैं भी एक कप चाय पी लेता हूँ। श्योर सर, थैंक यू सो मच, ओके, लेट्स हैव ए Yeah. virtual tea break. ओके सर, ओके, थैंक यू सर। So we will come back after 5 minutes, 5 और minutes, मैं कोशिश करूंगा 30-35 मिनट में खत्म करूं। ठीक है सर, ठीक I है, would like to be free by 5 o'clock if possible. बिल्कुल सर, ठीक है सर, थैंक यू। Thank you.
Yes, Bhavna ji, can you hear me? Yes, sir. I am also back. We can So, hear you. can we start now? Please, sir. Please, sir. So, is there any specific issue you would like me to address? If there was any communication gap, there was any language issue or anything? No, no, sir. We are only receiving positive feedback from our participants, and they are appreciating you for explaining things in Hindi. So we request you to continue the way you have continued so far. एक क्वेश्चन हम बाद में लेंगे सर, इस सेशन के बाद हम साथ में लेंगे तो ठीक है. इस थोड़ा सा सेशन को मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ेगा बिकॉज दिस इज ए लेंथियर प्रेजेंटेशन. ठीक है, तो हम इसको सर लगभग 35 मिनट्स में इसको समाप्त करेंगे और उसके बाद हम 5 मिनट रखेंगे क्वेश्चंस के लिए. 10 मिनट रख लीजिएगा. कोई ऐसी इमरजेंसी होती है तो आई कैन डिले माय मीटिंग. मैं 5 में शुरू कर लूंगा, 5:10 तक मैक्सिमम. कोई बात, ठीक है. अदरवाइज कोशिश करेंगे कि सो is my screen visible to all of you? Yes, sir, it's visible. So friends, this topic is basically how you can improve your visibility and impact of research. Like बहुत सारी ऐसी इंस्टीट्यूशन हैं इसमें इंक्लूडिंग राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कि आप लोगों को NIRF और दूसरी जो रैंकिंग है उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ता है. आप लोगों को डिफरेंट इंटरव्यूज देने हैं. ठीक है, आपको फंडिंग के लिए अप्लाई करना, आपको प्रोजेक्ट सबमिट करने हैं. तो उस केस में क्या होता है कि आपको आपकी विजिबिलिटी बढ़िया चाहिए. आपको ये बताना पड़ता है कि आपकी विजिबिलिटी अच्छी है, आपकी इंस्टीट्यूट अच्छा काम कर रही है, आप लोगों का रिसर्च आउटपुट अच्छा है. कई बार क्या होता है, आप लोग अच्छा काम कर रहे होते हैं, आपकी फैकल्टी, आप लोग खुद, आपका कॉलेज, आपकी यूनिवर्सिटी, लेकिन उसकी विजिबिलिटी नहीं होती है. तो उससे क्या होता है, आपकी हर चीज इफेक्टेड होती है. लाइक इवन ESS भी जो फंडिंग करता है, ईशो सिंधु कंसोर्टिया, कई बार वहां भी ये डिस्कशन होते हैं कि हम लोग जो टॉप 100 रैंक्ड इंस्टीट्यूशन है, टॉप 200 रैंक्ड इंस्टीट्यूशन हैं, या जिन्होंने मान लिया 100 पेपर्स पब्लिश किए जिस इंस्टीट्यूट ने, उसको ही हम फंडिंग का सपोर्ट दें या उसको ही रिसोर्सेज प्रोवाइड करें. तो इसलिए ये आजकल बहुत ज़रूरी है कि हमें ये तरीके आने चाहिए कि हम अपनी फैकल्टी, अपने कॉलेज, अपनी इंस्टीट्यूट, जब हम इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो हम देश के लिए भी कंट्रीब्यूट करते हैं. जब हम अपनी इंस्टीट्यूट के लिए कुछ कर रहे हैं तो वो बेसिकली देश के लिए भी कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि बहुत सारी इंस्टीट्यूट जब अच्छा काम करती हैं तो हमारे पूरे देश की रैंकिंग बढ़ती है, अच्छी रैंकिंग हो जाती है, चाहे वो रिसर्च आउटपुट हो, चाहे वो एकेडमिक विजिबिलिटी हो. ठीक है, तो ये मेरा जो प्रेजेंटेशन है बेसिकली आपको ऐसी चीजों के बारे में बताएगा जिससे आप लोग 90% ऐसी रिसोर्सेज के बारे में बात करूंगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और जिसकी वजह से आप अपने कॉलेज की, अपने साथियों की, अपने बॉसेस की, उनकी विजिबिलिटी और उनकी रैंकिंग, उनका रिसर्च आउटपुट, उनका इम्पैक्ट बढ़ा सकते हैं कोई खर्चा किए बगैर. कुछ रिसोर्सेस ऐसी हैं जो पेड हैं, अगर वो आपको उन चीज़ों का एक्सेस है तो बड़ी अच्छी बात है, और उन चीज़ों का एक्सेस अगर नहीं है आपको तो फिर कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट वाली रिसोर्सेज भी यूज कर सकते हैं. आई थिंक आई एम प्रॉपरली ऑडिबल. Yes, sir. Okay. Absolutely clear, sir. Okay. So, as part of my this presentation, मैं जो चीजें कवर करने वाला हूँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊंगा आपको, और जो मैपिंग, बिब्लियोग्राफिक, साइंटोमेट्रिक जो असेसिंग टूल्स हैं जिनसे आप H-इंडेक्स, G-इंडेक्स, साइटेशन और रैंकिंग की बात करते हैं, आप कहाँ स्टैंड करते हैं इसकी बात करते हैं, उनके बारे में कुछ बात करूंगा. थोड़ी सी हम लोग साइटेशन एनालिसिस के बारे में बात कर देंगे, लाइक H-इंडेक्स, G-इंडेक्स, I-10 इंडेक्स, इम्पैक्ट फैक्टर और दूसरे पैरामीटर्स. ये सारे के सारे बड़े डिफिकल्ट कंसेप्ट हैं. अगर आप इनकी डेफिनेशन पढ़ें तो आज तक मुझे भी नहीं रटी गई वो डेफिनेशन, उनको रटना बहुत मुश्किल होता है. और मुझे लग रहा है अगर किसी अच्छी पोजीशन के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, असिस्टेंट प्रोफेसर, या इवन एंट्री लेवल की पोजीशन, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, सीनियर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, सेमी और PA, अगर
मेरा ये लेक्चर आप ढंग से देख लेंगे या इसके कंटेंट थोड़े से आप पढ़ लेंगे या फर्दर इसको एक्सप्लोर करेंगे, मुझे लगता है आजकल के ज़माने में आधे क्वेश्चंस तो आपके इन्हीं तरह के टॉपिक से होते हैं, चाहे आप रिटन टेस्ट में बैठ रहे हैं, चाहे आप इंटरव्यू दे रहे हैं। तो अगर इन कंटेंट को आप थोड़ा सा एक बार ध्यान से देख लेते हैं और थोड़ा सा हल्का सा समझने की कोशिश करते हैं, अटेंशन देते हैं आप लोग, तो एटलीस्ट इंटरव्यू में या रिटन टेस्ट में तो आप आराम से कर लोगे, क्योंकि 4 ऑप्शंस होते हैं, आप आराम से टिक कर लोगे, आपको याद आ जाएगा। इंटरव्यू में भी अगर आप बैठते हैं तो एटलीस्ट आप कुछ तो बता पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई आपको पूछता है कि एच इंडेक्स क्या होता है, तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आप इतना तो बता ही सकते हैं, सर ये एच इंडेक्स जो होता है, जो पेपर्स होते हैं उनको कितने लोगों ने यूज किया उसके बेस पे डिसाइड होता है, अगर आप साइटेशंस भूल जाएंगे। या कोई पूछता है सर आई-10 इंडेक्स क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं सर आई-10 इंडेक्स वो होता है कि हमारे वो पेपर जिनको एटलीस्ट, उसको ओपन रहने दो, क्लोज वहां लेके जाना है, ओके ठीक है फाइन, मेंटेन द प्राइवेसी। ओके, सो आप इतना बता सकते हैं कि आई-10 इंडेक्स वो इंडेक्स है, या वो पेपर्स आपके आई-10 इंडेक्स में आते हैं जिनको एटलीस्ट 10 साइटेशंस मिले। तो मैं बहुत ही सरल भाषा में कोशिश करूंगा आपको समझाने की, आपकी लैंग्वेज में, कि इन चीज़ों को आप मिनिमम वर्ड्स में कैसे बता सकते हैं, ताकि आपको इंटरव्यू फेस करना हो या रिटन टेस्ट फेस करना हो, आप किस तरह से अपनी बात कह सकते हैं। इसके अलावा मैं बहुत सारे टूल्स, साइट, रिसोर्सेस की बात करूंगा, जिससे आपकी इंस्टीट्यूट या देश की एकेडमिक और रिसर्च विजिबिलिटी बढ़ सकती है, जिससे आपकी पब्लिक में इमेज अच्छी हो सकती है, आपके साथियों में आपकी इज्जत बढ़ सकती है, आपके कॉलेज की, इंस्टीट्यूट की इज्जत बढ़ सकती है, आपका प्रिंसिपल, डायरेक्टर, वाइस चांसलर खुश हो सकता है। उसके अलावा मार्केटिंग की मैंने बात कर ली थी कि लाइक आप जो भी काम कर रहे हैं वो लोगों को पता भी होना चाहिए। कई बार आप बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, लोगों को पता भी नहीं होता, तो इसलिए मार्केटिंग करना जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ढिंढोरा पीटिए बाजार में जाके, बट मार्केटिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। लाइक वट एवर यू आर डूइंग, इट शुड बी नोन टू अदर्स एज व्हाट यू आर डूइंग। इसके अलावा आजकल ना डेटा विजुअलाइजेशन के बहुत सारे टूल्स आ गए हैं। आप लोग एक्सेल का यूज करते हुए भी आप डिफरेंट टाइप के ग्राफ, चार्ट एटसेट्रा ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन मेरा एक बड़ा सिंपल फंडा है कि अगर आप अपनी बात कहना चाहते हैं, तो अब अगर अपनी बात आप टेक्स्ट के थ्रू कहेंगे तो उतनी इफेक्टिव नहीं रहेगी। लेकिन अगर अपनी बात आप ऑडियो विजुअल या ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के थ्रू कहेंगे तो दैट विल बी मोर इफेक्टिव। सो यू कैन मेक यूज ऑफ डिफरेंट डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स। उसके अलावा अल्टीमेटली जो मैटर्स करता है वो करता है साइटेशंस। जितने अच्छे आपके साइटेशंस होंगे, जितने ज़्यादा साइटेशंस होंगे आपके कॉलेज के, आपके इंस्टीट्यूट, आपके कंट्री के, उसी से आपकी इम्पोर्टेंस पता लगती है। तो हम लोग जो मारा मारी है, जो रेस लगी हुई है ना आजकल, वो है साइटेशंस के लिए। जो एकेडमिशियन हैं, जो पेपर लिखते हैं, जो रिसर्च करते हैं, जो डिपार्टमेंट में टीचर्स हैं, उनकी जो रेस है वो साइटेशंस के लिए है। तेरे कितने साइटेशंस हो गए, तेरे कितने साइटेशन हुए, अरे मेरे को तो आज यार 2 साइटेशन और मिल गए। तेरा एच इंडेक्स कितना हुआ, तेरा आई-10 इंडेक्स कितना हुआ, तेरा जी इंडेक्स कितना हुआ। तो बहुत तरह के इंडेक्स भी आ गए। ये आप स्क्रीन देखेंगे, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग स्क्रीन। इट सेज academics and researchers are surrounded with disruptive technologies. What does this mean? मेरा रूम बंद कर दीजिए। हाँ, so academics means teachers, researchers, librarians, हमारे बच्चे। We are surrounded with disruptive technology. Disruptive technology का मतलब ये हुआ वो टेक्नोलॉजी जो हमारा ध्यान बटाती है। जैसे आपने देखा होगा आपके बच्चे गेम्स खेलते रहते हैं, या आपने देखा होगा आपके स्टूडेंट्स जो हैं क्लास में भी कई बार व्हाट्सएप खोल के बैठ जाएंगे। वो लोग फेसबुक भी देख रहे हैं, ट्विटर भी खोल के बैठे हुए हैं, गूगल सर्च भी कर रहे हैं, ठीक है, और साथ साथ दूसरे काम भी कर। इससे क्या है, उनका फुल अटेंशन नहीं आ रहा, वो डिसरप्ट हो गए। तो ये डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज कहलाती हैं। ये इससे जो है काफी नुकसान हो रहा है अगर आप इसको ढंग से यूज ना करें। व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब ये हुआ कि
ये सारी टेक्नोलॉजीज जो हैं, अगर आप इनको एज ए सपोर्टिंग टेक्नोलॉजी यूज करें, ठीक है, तो ये सारी की सारी बहुत यूजफुल हैं। लेकिन अगर आप इनको सपोर्टिंग की जगह डिस्ट्रैक्टिव हो जाएंगे, मतलब इनके एडिक्ट हो जाएंगे, इनके आदी हो जाएंगे, तो ये आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बड़ा नुकसानदेह है। सो मैपिंग, बिब्लियोग्राफिक, साइटोमेट्रिक और एसेसिंग टूल्स बहुत सारे हैं। मतलब जो आप स्क्रीन मेरी देख पा रहे हैं, ये इतने सारे टूल्स अवेलेबल हैं मार्केट में, कुछ फ्री हैं, कुछ पेड हैं, जिससे आप इम्पैक्ट फैक्टर, साइटेशन, एच इंडेक्स, जी इंडेक्स, I10 इंडेक्स देख सकते हैं, जिनमें अच्छे खासे लोग आप जानते होंगे। स्कोपस बहुत पॉपुलर है, आज की डेट में सबसे ज्यादा पॉपुलर स्कोपस है, लेकिन ये पेड है। वेब ऑफ साइंस भी बहुत पॉपुलर है, ये भी पेड है। लेकिन जो नहीं पे करना चाहते, जिनको एक्सेस नहीं है पेड टूल्स का, वो दूसरे फ्री टूल्स यूज कर सकते हैं, जो कि इक्वली पॉपुलर है। जैसे कि गूगल स्कॉलर है, फ्री है, बहुत अच्छा टूल है। उसी तरह से पब्लिश और पेरिस है, ये गूगल स्कॉलर का ही डेस्कटॉप वर्जन है। इट मीन्स इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो इससे आप बहुत अच्छा अपना सारा एसेस कर सकते हैं, आपको कितने साइटेशंस मिले, आपका एच इंडेक्स कितना है, किन किन लोगों ने आपका पेपर यूज किया, किन किन कंट्री के लोगों ने यूज किया। विद्वान आजकल बहुत पॉपुलर डेटाबेस है, आप विद्वान पे जाके अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं और आप पूरा ये सब देख सकते हैं कि किन किन के साथ आपने कोलैबोरेशन किया, ब्यूटीफुल ग्राफ जनरेट कर सकते हैं। और उसी का एक्सटेंशन है, उसी का नेक्स्ट वर्जन है IRNS, इंडियन रिसर्च इंफॉर्मेशन नेटवर्क सिस्टम, जो कि इन्फ्लुएंट के पास एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का प्रोजेक्ट है। IIT दिल्ली ने भी उसको एग्जीक्यूट किया है। मैं तो कहता हूँ जो भी आप लोग बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, वो सब IRNS प्रोफाइल अपने कॉलेज की जरूर बनाएं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक बार अपनी सारी फैकल्टी की अपनी प्रोफाइल बना ली, एकेडमिक स्टाफ की प्रोफाइल बना ली, उनका गूगल स्कॉलर का प्रोफाइल लिंक कर दिया, उनका स्कोपस का प्रोफाइल लिंक कर दिया, उनके जितने भी साइटेशन उनको रिसीव होंगे, जितने भी साइटेशन उनको मिलेंगे, वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली ऐड होते जाएंगे। आपको थोड़ा सा इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। उसी तरह से ऑर्चिड है, ऑर्चिड में जो है इट्स लाइक ए आधार कार्ड जैसे आज की डेट में आपकी लाइफलाइन बन गया है। इसी तरह से बहुत सारे जर्नल्स हैं, अगर आपका ऑर्किड नंबर नहीं होगा तो आपको पेपर ही नहीं सबमिट करने देंगे। ऑर्किड इज लाइक एकेडमिक आधार फॉर ऑल ऑफ यू। इसके अलावा बहुत सारे ऑल्टोमेट्रिक्स टूल्स हैं, लाइक जो आप लोग फेसबुक की वॉल पे लिखते हो, आप ट्विटर की वॉल पे लिखते हो, आप लिंक्डइन पे लिखते हो, आप ब्लॉग पे लिखते हो, आप अपनी वेबसाइट पे लिखते हो। तो बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो उनकी भी रेटिंग करते हैं। जरूरी तो नहीं आपने फेसबुक पे सब बकवास की हो सकता है आपने इतना बढ़िया फेसबुक पे कमेंट किया हो, इतना अच्छा लिखा हो फेसबुक पे कि वो एक अच्छी रेटिंग में आ जाए, वो एक ओरिजिनल पेपर जैसा बन जाए, ओरिजिनल कंटेंट बन जाए। तो उनकी भी आजकल रेटिंग होती है। बहुत सारे अल्टरमेटिक्स टूल हैं जो आपको एक स्कोर देते हैं, जैसे कि रिसर्च गेट है, एकेडमिया EDU है, प्लम एक्स है, इम्पैक्ट स्टोरी है। अगर इन पे आप अपनी प्रोफाइल बना लें तो ये अपने आप ही आपकी प्रोफाइल को जो आपने सोशल मीडिया पे लिखा हुआ उससे लिंक कर देंगे। आप इसको आपका स्कोर बनाते रहेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे रिसर्च गेट पे जो स्कोर होता है वो RG स्कोर कहलाता है। तो स्क्रीनशॉट की मदद से, उन पिक्चर्स की मदद से मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। मेरा जो पर्पज है यहाँ लेक्चर देने का वो ये है कि मैं आपको थोड़ा थोड़ा बहुत सारी चीजों के बारे में बता दूं। ये वो सारी चीजें हैं जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आप किसी भी ढंग के इंटरव्यू में जाएंगे, किसी भी ढंग की गैदरिंग में जाएंगे, किसी भी ढंग के रिटन टेस्ट में जाएंगे, इनसे आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। तो मैं आप में थोड़ा सा एक आग लगाना चाहता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा इग्नाइट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इन कॉन्सेप्ट को आप सुने और उसके बाद जब आपको टाइम मिले इनके बारे में पढ़ें, थोड़ा सा समझें, ताकि आप लोग कल को कोई भी कॉम्पिटिटिव चैलेंज जो लाइब्रेरी साइंस में आप लेने वाले हो वो फेस कर पाओ, या अपने बच्चों को पढ़ाने वाले हो, मतलब लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट्स को, या आप खुद एजुकेशन ले रहे हो, तो इन सब टूल्स के बारे में उनको बता पाओ, उनकी हेल्प कर पाओ, या आप आंसर दे पाओ। उसी तरह से रैंकिंग आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। ठीक है, तो रैंकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गई है। अगर
आपका कॉलेज, आपकी यूनिवर्सिटी रैंक में कहीं स्टैंड करता है तो उसका काफ़ी फायदा होता है। तो जो रैंकिंग एजेंसी हैं, चाहे क्यूएस रैंकिंग है, टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग है, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क है, NIRF है, ठीक है, तो इनमें डेटा सबमिट करना, इनमें पार्टिसिपेट करना एक आर्ट है। इसमें कोई फी नहीं लगती है, कोई खर्चा नहीं आता है। तो एज ए लाइब्रेरियन, एज ए लाइब्रेरी प्रोफेशनल, ये आपकी मोरल ड्यूटी है कि आप अपनी इंस्टीट्यूट, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, लोगों को हेल्प करें, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को हेल्प करें उनके डेटा सबमिट करने में, ठीक है। इसके अलावा कुछ पेड टूल्स भी हैं जो बहुत महंगे हैं, जैसे कि एल्सेवियर का प्योर है, साइवेल है, इनसाइट्स फ्रॉम क्लेरिवेट एनालिटिक्स है, जनरल साइटेशन रिपोर्ट है जो इम्पैक्ट फैक्टर देती है। ये सब पेड टूल्स हैं जो कि बहुत ही अच्छा आपको डेटा एनालाइज करके रेडीमेड दे देते हैं। इन सब टूल्स का नाम लेने का मेरा पर्पज यही है कि एटलीस्ट इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ऐसी भी कोई चिड़िया होती है जो ये काम करती है, ठीक है। आपने एच इंडेक्स तो सुना होगा, लेकिन इसके अलावा बहुत तरह के इंडेक्स होते हैं, उनका भी आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, जैसे कि रिलेटेडनेस इंडेक्स है, ठीक है, इंडियन एच इंडेक्स है, जी इंडेक्स है, I10 इंडेक्स है, इवन ई इंडेक्स भी होने लगा है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे पास टाइम कम है, मेरी कोशिश होगी मैं मैक्सिमम 4:50 तक अपना लेक्चर क्लोज कर दूं। इस लेक्चर में जनरली मैं 2 घंटे लेता हूं इसको कंप्लीट करने में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कितने लोग आप लोग जानते हो कि गूगल का ग्रैंडफादर कौन कहलाता है? देखिए, ये थोड़ा सा नुकसान है ऑनलाइन का। अभी अगर आप फिजिकली मेरे सामने होते तो मैं आपसे क्वेश्चन करता, आप आंसर देते। तो ये यूजीन गारफील्ड हैं जिनको गूगल का ग्रैंडफादर कहा जाता है, बाप नहीं दादा कहा जाता है। मतलब आज गूगल जो है, कहीं ना कहीं गूगल ने इनके आइडियाज को यूज किया है। सबसे पहले 1955 में साइंस मैगजीन इन्होंने निकाली, उसके बाद साइंस साइटेशन इंडेक्स 1963 में आया, मतलब जो प्रिंट फॉर्म में था, SCI प्रिंट इन 1960s। उसके बाद ऑनलाइन विद साई सर्च 1970s में ऑनलाइन आना शुरू किया, CD-ROM में 1980s में आया, और आज आप जो देख रहे हैं वेब ऑफ साइंस का जो वेब इंटरफेस है वेब ऑफ साइंस का, वो उसका जो प्रीवियस रूप था वो आपका वो प्रिंटेड वॉल्यूम होती थी, मोटी सी। तो जब हम वेब ऑफ साइंस की बात करते हैं तो वेब ऑफ साइंस एक सिंगल इंडेक्स नहीं है, इसमें बहुत सारे इंडेक्सेस हैं, जैसे सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज साइटेशन इंडेक्स। तो कुल मिला के आज की डेट में वेब ऑफ साइंस में 6 डेटाबेसेस हैं, 256 डिसिप्लिन है, और इट इज अवेलेबल फ्रॉम 1900 ऑनवर्ड, 1900 के बाद से अवेलेबल है। तो प्राइमरीली इसका पर्पस इंफॉर्मेशन रिट्रीवल है, जो डिफरेंट जगह पे पेपर पब्लिश हो रहे हैं जर्नल्स में, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स में, जो इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशंस आ रहे हैं, तो वो आपको एक इंडेक्स करके पूरा दे देता है कि भाई लाइक मेरा अगर कोई पेपर छपा, मान लिया डेसीडॉक बुलेटिन में, डेसीडॉक जर्नल ऑफ बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या लाइब्रेरी हेराल्ड में, तो इनका काम ये है कि ये उसको किसी तरह से एक मैकेनिज्म है, जिसको ये आप कह लो कि मशीन लर्निंग कह लो, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह लो, या सेमांटिक वेस्ट कह लो, उसकी हेल्प से ये इंफॉर्मेशन फैच करके आपको रिजल्ट देता है। सो जो साइटेशन वर्ड हम यूज करते हैं उसकी क्या जरूरत है, उसका क्या महत्व है, क्यों लोग साइट करते हैं, वाई डू पीपुल साइट? पीपुल सिंपली साइट, एक तो अगर आप किसी को साइट कर रहे हो तो उसकी आप बैकग्राउंड एक तरह से रीडिंग दे रहे हो, कि आप जो जिसको साइट कर रहे हो, जो आप टॉपिक पे बात कर रहे हो, उससे रिलेटेड पीछे कुछ हुआ है, तो एक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दे रहे हो। यू ट्राई टू आइडेंटिफाई मेथोडोलॉजी, लाइक अगर कोई आप लॉ लगा रहे हो अपनी रिसर्च में, पेपर में, तो एक उसकी वो और लॉ या मेथोडोलॉजी ऑलरेडी किसी ने दी होगी, तो आप उसको आइडेंटिफाई कर रहे हो। कई बार किसी बड़े आदमी का भी हम साइटेशन देते हैं उसको क्रेडिट देने के लिए। कई बार हम लोग रंगनाथन के कुछ पेपर साइट कर देते हैं, कोट साइट कर देते हैं, कि भाई हम उनको होमेज पे करना चाहते हैं कि हम आपसे इंस्पायर्ड होके हम ये पेपर लिख रहे हैं या थीसिस लिख रहे हैं।
कई बार अब जो बहुत कुछ इंपॉर्टेंट होता है उसको हम पूरा कोर्ट में दे देते हैं एज सच, ताकि लोगों को ये पता लग जाए कि कहीं से लिया हुआ, उसके बाद हम लास्ट में उसका पूरा रेफरेंस दे देते हैं। इसके अलावा जब हम कोई लॉ इम्प्लीमेंट करते हैं, अपने वर्क में लगाते हैं लॉ, तो हम डेटा को अपने ऑथेंटिकेट या रिप्रोड्यूस करने के लिए भी यूज करते हैं। कई बार हम करेक्शन और अपडेशन के लिए भी साइट करते हैं लोगों को, और कई बार इंडिया जैसे कंट्री में ऐसा भी होता है, कई बार हम किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए भी कोट करते हैं या साइट करते हैं। लाइक फला साहब ने जो काम किया था, लाइक नबी हसन ने जो ये काम किया है ब्लॉकचेन पे, मैं इससे एग्री नहीं करता, ये इस तरह से होना चाहिए था, इस तरह से नहीं होना चाहिए था। तो कई बार इस तरह से करना पड़ता है। तो citations are indicator of an article's impact and usefulness to the research community. They are the mode by which peers acknowledge each other. तो अगर हम किसी को साइट कर रहे हैं, किसी को साइटेशन दे रहे हैं, इसका मतलब हम उसके काम को एक्नॉलेज कर रहे हैं, उसकी अहमियत बता रहे हैं। तो वाई साइटेशन एनालिसिस, क्या जरूरत है साइटेशन एनालिसिस की, बिब्लियोमेट्रिक्स की, साइंटोमेट्रिक्स की? तो थ्योरेटिकल मैपिंग के लिए जरूरत पड़ती है, और साइटेशन एनालिसिस या बिब्लियोमेट्रिक और साइंटोमेट्रिक्स से हम लोग टॉप रिसर्चर, जर्नल्स, इंस्टीट्यूशन या कोलैबोरेटर्स के नाम जान सकते हैं। हमें किसी काम का महत्व पता लगता है, उसकी अहमियत पता लगती है साइटेशन एनालिसिस से। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ट्रेंड किधर जा रहा है, किस डिसिप्लिन में ज्यादा पेपर आ रहे हैं, किस में कम आ रहे हैं, वो हमें पता लग जाता है। हम कई बार उससे फ्यूचर प्रिडिक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जो नोबेल प्राइज मिलता है कई बार लोग ऑलरेडी अंदाजा लगा लेते हैं कि इस साल का नोबेल प्राइज किसको मिलने वाला है। कैसे लगा लेते हैं? वो इस तरह से लगा लेते हैं कि जब उनका कोई बहुत अच्छा रिसर्च पब्लिश होता है बहुत अच्छे जर्नल में, लाइक नेचर और अदर जर्नल, तो उसको बहुत ज्यादा साइटेशंस मिलते हैं, उसके बारे में बहुत सारे लोग बात करते हैं, तो उससे लोगों को पता लग जाता है कि भैया इसका ये काम बहुत बेहतरीन है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है, ये तो इस बार नोबेल की रेस में रहेगा। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द साइटेशन, एच इंडेक्स, द इम्पोर्टेंस दैट पीपल आर गिविंग टू दैट पेपर, तो उससे पता लग जाता है। इसके अलावा हमें साइटेशन एनालिसिस या बिब्लियोमेट्रिक से किसी ग्रुप, किसी रीजन, किसी कंट्री के काम का पता लग जाता है। लाइक इंडिया कहाँ स्टैंड करता है स्कोपस में, टॉप 3 कंट्री में, टॉप 5 कंट्री में हमने कितने पेपर पब्लिश किए, हमारे टॉप रेटेड पेपर कौन से थे, हमें कितने उन पेपर्स को साइटेशंस मिले, ये सब साइटेशन एनालिसिस और साइंटोमेट्रिक और बिब्लियोमेट्रिक से पता लगता है। आज की डेट में लाइब्रेरी साइंस में सबसे ज्यादा पीएचडी बिब्लियोमेट्रिक्स या साइंटोमेट्रिक्स में अवार्ड हो रही हैं। उसका रीजन ये है कि साइंटोमेट्रिक्स, बिब्लियोमेट्रिक्स पे पीएचडी करना बहुत आसान है, और एक कंप्यूटर पे बैठ के पूरी पीएचडी हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं करना चाहूँ लाइक scholarly contribution of the state of Madhya Pradesh to the country. Okay, scholarly contribution of the state of Madhya Pradesh to India. तो उसमें मैं क्या करूंगा, स्कोपस से सारे रेफरेंसेस डाउनलोड कर दूंगा जिसमें भोपाल कीवर्ड होगा। ओके, और उसके बाद मैं ढूंढना शुरू करूंगा कि इसमें भोपाल से रिलेटेड, मध्य प्रदेश से रिलेटेड क्या पेपर हैं, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। तो काम तो बहुत होगा, टाइम तो लगेगा इसमें सेग्रीगेट भी करना पड़ेगा, एनालिसिस भी करना पड़ेगा, एक्सेल और कई सॉफ्टवेयर एसपीएसएस या कोई दूसरे सॉफ्टवेयर भी यूज करने पड़ेंगे एनालिसिस के लिए। लेकिन एक डेस्कटॉप पे बैठ के रिसर्च हो जाएगा, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए लोग साइंटोमेट्रिक्स, बिब्लियोमेट्रिक्स में ज्यादा रिसर्च करते हैं कि उनको एक डेस्कटॉप पे बैठ के पूरा का पूरा रिसर्च हो जाता है। और इस तरह की रिसर्च में सिमिलरिटी भी नहीं आती, प्लेजरिज्म का कोई डाउट नहीं रहता, क्योंकि सारा डेटा नया होता है। एक हफ्ते बाद आप उसी टॉपिक पे लिटरेचर सर्च करोगे तो कुछ और डेटा मिलेगा। इसके अलावा हम जो है जब हमारा इतना साइटेशन ये सब हो जाता है एनालिसिस के बाद, तो ये चीजें रिवार्ड, अवार्ड और रिक्रूटमेंट में हेल्प करती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कहीं किसी पोस्ट के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरी साइंस के लिए अप्लाई करते हो, ठीक है, तो वो रिक्रूटमेंट में देखेंगे कि भाई ये लड़का मान लिया पुनीत है, तो इसके इतने पेपर्स हैं, ठीक है, पुनीत है, इसके 50 पेपर हैं, लेकिन इसको 10 साइटेशंस मिले, इसका एच इंडेक्स 3 है। दूसरा लड़का मान लिया मोहित है,
और उसके सिर्फ 2 पेपर हैं, उसके 2 पेपर्स को 200 साइटेशंस मिले हैं, ओके, और उसका साइटेशन रेट बहुत अच्छा, उसके पेपर्स का इम्पैक्ट बहुत अच्छा है। तो उसके 2 पेपर उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं दूसरे के 50 पेपर के मुकाबले। तो ये तभी पॉसिबल है जब हम साइटेशन एनालिसिस, बिब्लियोमेट्रिक और साइंटोमेट्रिक स्टडी करें। तो जैसा कि आप एच इंडेक्स के बारे में जानते हैं, एच इंडेक्स को एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है टेक्निकल लैंग्वेज में, इसलिए मैंने उसको थोड़ा आसान भाषा में यहाँ लिखने की कोशिश की है। जेई हिर्श ने 2005 में एच इंडेक्स का कंसेप्ट दिया था, तो मैंने आसान भाषा में लिखा है, द एच इंडेक्स इज ए क्वांटिटेटिव मेट्रिक बेस्ड on analysis of publication data using publications and citation to provide an estimate of the importance, significance and broad impact of scientists' cumulative research contribution. तो डेफिनेशन भूल जाइए, मैं बिल्कुल बच्चों वाली लैंग्वेज में आपको स्क्रीनशॉट की सहायता से आगे दिखाऊंगा कि एच इंडेक्स जो है बेसिकली जो आपके पेपर्स हैं उनको पिछले 2 साल में कितने साइटेशंस रिसीव हुए उसके बेस पे कैलकुलेट होता है। यानी आपने जो पेपर पब्लिश किए उन पेपर को कितने लोगों ने इस्तेमाल किया उसके बेस पे वो एच इंडेक्स आता है। तो वो मैं आपको आसानी से करके दिखाऊंगा, लेकिन आजकल रेडीमेड टूल्स अवेलेबल हैं। रेडीमेड टूल्स यही है कि स्कोपस ऑटोमेटिकली आपको कैलकुलेट करके डेटा देता है, वेब ऑफ साइंस ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके देता है, गूगल स्कॉलर भी देता है। पब्लिश और पेरिस जो गूगल स्कॉलर का एक प्रोडक्ट है जिसको आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, डेस्कटॉप में एक ऐप इंस्टॉल करनी पड़ती है, उसकी सहायता से आपको मिल जाता है। तो एच इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हाँ समझना जरूरी है कि कैसे कैलकुलेट होता है। अगर आप जैसे स्कोपस की बात करें तो स्कोपस में अगर आपको एच इंडेक्स किसी का निकालना है तो उस ऑथर का नाम क्लिक कीजिए, उसके बाद ऑथर के नाम पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसका पूरा डिटेल आ जाएगा। तो ये ऑथर आप देख रहे हैं, इसका 34 एच इंडेक्स, ठीक है, जबकि इसके टोटल पेपर 253 है, 253 है, बस एच इंडेक्स 34 है। इसको साइटेशन 6403 मिले, तो इसका एच इंडेक्स ज्यादा क्यों नहीं है? पेपर इसके बहुत ज्यादा है, साइटेशंस भी बहुत हैं इसके, ठीक है, लेकिन एच इंडेक्स 34 है। इसका मतलब ये हुआ इसके कुछ ऐसे पेपर्स होंगे थोड़े से 10-20 या 5-7 जिनको बहुत ज्यादा साइटेशंस मिले होंगे। 34 एच इंडेक्स का मतलब ये हुआ इसके कम से कम 34 पेपर्स को कम से कम 34 साइटेशंस मिले होंगे। मैं इसको और आसानी से अगली स्क्रीन में आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो एच इंडेक्स कैसे कैलकुलेट होता है? अगर कोई बोल रहा है मेरा एच इंडेक्स 34 है, 34 है, तो 34 का मतलब ये हुआ 34 of my papers have received at least 34 citations each। और आसान करने के लिए हम इनको करें, जो हमारे पेपर डॉक्यूमेंट्स हैं उनको 1 2 3 की सीक्वेंस में अरेंज कर लें ऑन वन एक्सिस, ओके, लाइक दीज आर द पेपर्स 1 2 3 4 5 6 7 34। और जो नंबर ऑफ साइटेशंस उनको रिसीव हुए उन पेपर्स को उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में, लाइक जिस पेपर को सबसे ज्यादा साइटेशंस मिले उसको टॉप पे रखेंगे, ओके। तो जहां पेपर और साइटेशन क्लैश कर जाएंगे वो आपका एच इंडेक्स बन जाएगा। इट मींस 34 ऑफ माय पेपर्स हैव रिसीव्ड एट लीस्ट 34 साइटेशन, सो दैट इज बेसिकली माय एच इंडेक्स। तो एच इंडेक्स सारे रिसोर्सेज में अलग अलग होता है। जनरली आपका गूगल स्कॉलर में सबसे ज्यादा एच इंडेक्स आता है, उसके बाद स्कोपस में आता है, उसके बाद फिर वेब ऑफ साइंस में आता है, लेकिन इस चीज की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। जैसे ये सेम आदमी है डी जोंग, इसका एच इंडेक्स स्कोपस में 34 है, वेब ऑफ साइंस में 48 है। तो वेब ऑफ साइंस में भी एच इंडेक्स कैलकुलेट करना बहुत आसान है। ऑथर का नाम डालिए, उसके नाम को क्लिक कीजिए, आपको पूरी ये डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। तो आमतौर से हमने ये सुना होगा कि एच इंडेक्स सिर्फ ऑथर का होता है, एच इंडेक्स जर्नल का भी होता है। आप जानते हो कि जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर होता है, लेकिन एच इंडेक्स भी जर्नल का होता है। तो एच इंडेक्स जर्नल का कैलकुलेट करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट ये कि इन केस ऑफ एच इंडेक्स ऑफ एन, मैं आपको थोड़ा सा अगली स्क्रीनशॉट की सहायता से और आसानी से समझाऊंगा। 2006 में वरुण एट ऑल ने ये एच इंडेक्स ऑफ जर्नल का कंसेप्ट दिया था। द प्रोसीजर टू कैलकुलेट द एच इंडेक्स in case of journal is same
as for author except for the period of time selected. Means जो समय हम ईयर सेलेक्ट करते हैं, साल सेलेक्ट करते हैं, वो डिफरेंट है. ओनली पेपर पब्लिश ड्यूरिंग सिंगल ईयर आर टेकन इनटू कंसीडरेशन इन केस ऑफ जर्नल. तो जब हम लोग ये हम अपना एच इंडेक्स ऑथर का कैलकुलेट करते हैं तो हम एक से ज्यादा ईयर कंसीडर करते हैं, जबकि हम जब जर्नल का कैलकुलेट करते हैं एच इंडेक्स तो हम एक साल कैलकुलेट करते हैं. तो जिस तरह से हम ऑथर का एच इंडेक्स निकालते हैं स्कोपस में, उसी तरह से जर्नल का भी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं. लाइक जर्नल का नाम हमने डाला, उसके बाद जर्नल के नाम पे क्लिक किया. जैसे हम जर्नल के नाम पे क्लिक करेंगे वो हमें इस तरह का ग्राफ दिखा देगा. ये स्कोपस से स्क्रीन है और वो बता देगा एच इंडेक्स जर्नल का 6 है या कितना है. कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं इसको और आसानी से कुछ एक अगली स्क्रीन में दिखाऊंगा. उसी तरह से अगर आप अपनी इंस्टीट्यूट की रैंकिंग बढ़ाना चाहते हैं, अच्छी करना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपनी इंस्टीट्यूट के लोगों को बताएं कि सब लोग अपना एड्रेस एक जैसा लिखें. लाइक फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ आईआईटी दिल्ली, आप देखिए आईआईटी दिल्ली के कितने सारे वेरिएंट हैं. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, आईआईटी दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन ए डिफरेंट वे. कुछ लोगों ने अपने डिपार्टमेंट का ही सीधे एड्रेस लिख दिया, लाइक डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और सेंटर फॉर एनर्जी स्टडीज और सेंट्रल लाइब्रेरी. सो जब तक आपकी इंस्टीट्यूट का एक सिंगल नाम नहीं जाएगा तब तक सारे के सारे साइटेशंस पेपर उस इंस्टीट्यूट के अकाउंट में नहीं जाएंगे. जब मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन था 2018 16 17 18 में, तो वहाँ एमयू की रैंकिंग हमने देखा काफी कम जा रही थी. हमारे पेपर बहुत कम रिफ्लेक्ट हो रहे थे एनआरएफ रैंकिंग में. तो हमने जब ढंग से स्टडी किया, एनालाइज किया, तो हमें पता लगा एमयू का नाम कई तरह से लिखा हुआ है. लाइक एमयू में एक बहुत फेमस मेडिकल कॉलेज है जिसकी रैंकिंग इंडिया में टॉप 10 में आती है, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज. ओके, तो कुछ लोगों ने एमयू का वहां नाम ही नहीं लिखा था, सीधे मेडिकल कॉलेज के नाम से पेपर जा रहे थे. एक वहां पे फेमस इंजीनियरिंग कॉलेज है, डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, तो उसके पेपर भी सीधे जा रहे थे. जब हमने सारे के सारे पेपर मर्ज किए तो एमयू के एकदम से पेपर बहुत ज्यादा हो गए, साइटेशन बढ़ गए, एच इंडेक्स बढ़ गया यूनिवर्सिटी का, और हमारी रैंकिंग में उससे बहुत हेल्प मिली. तो एज ए लाइब्रेरियन और लाइब्रेरी प्रोफेशनल ये आपकी ड्यूटी है कि आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन को हेल्प करें कि भैया आप किस तरह से अपने नाम को स्पेल करें, और अगर इनकेस अलग अलग नामों से लोगों ने लिखा हुआ तो इस तरह से आप मर्जिंग भी कर सकते हैं. उसी तरह से इंडिविजुअल नाम अलग अलग तरह से लिख सकते हैं. लाइक हमारे एक बहुत फेमस ऑथर हैं प्रोफेसर भीम सिंह, ही इज वन ऑफ द टॉप इंडियन ऑथर. 1728 डॉक्यूमेंट तो देखो इनके स्कोपस में ही दिख रहे हैं. अब आप समझो कितना बड़ा आदमी होगा. आपके एनआईटी भोपाल के वो चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर भी हैं, मतलब डायरेक्टर के भी बॉस हैं आपके एनआईटी भोपाल के. ओके, ही इज फ्रॉम आईआईटी दिल्ली. तो आप देखिए प्रोफेसर भीम सिंह के नाम के कितने अलग अलग वेरिएंट थे. तो अगर इनके सारे नाम के अलग अलग वेरिएंट इकट्ठे नहीं किए जाए तो इनके सारे पेपर एक साथ नहीं आएंगे और इनका एच इंडेक्स साइटेशन सब गड़बड़ हो जाएगा. आप देखिए सिंह भी मतलब प्रोफेसर भीम सिंह को 2 जगह फेंका हुआ था स्कोपस ने. तो ऐसा नहीं, स्कोपस गलती नहीं करता. एक स्कोपस दूसरे आदमी के पेपर आपके अकाउंट में भी डाल सकता है, आपके पेपर अलग जगह भी जा सकते हैं. मतलब आपके अगर 2 स्कोपस 3 स्कोपस 4 स्कोपस आईडी हो गए तो आपके सही साइटेशन और एच इंडेक्स नहीं आएगा. तो एज ए लाइब्रेरियन आपकी ड्यूटी आप लोगों की हेल्प करें ये आइडेंटिफाई करने में. ओके, तो अगर आप मतलब ये कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं एकेडमिक विजिबिलिटी में, अपनी इंस्टीट्यूट की हेल्प कर रहे हैं, तो हमारे कंट्री की भी रैंकिंग उसी तरह से जाती है. अब ये स्कोपस का लेटेस्ट डेटा है, ठीक है. आप देखिए इंडिया की रैंकिंग यहाँ 5 है, यानी कि रिसर्च कंट्रीब्यूशन में और पब्लिकेशन में जो कि स्कोपस इंडेक्स करता है उसमें हमारा कंट्री 5वें नंबर पे, बहुत हाई है. और जर्मनी और यूके हमसे थोड़ा सा ही आगे हैं. मतलब हम कभी भी तीसरे नंबर पे पहुंच सकते हैं यूएस और चाइना के बाद. तो ये कैसे पॉसिबल है? ये इसलिए पॉसिबल हो रहा है कि लोग आप जैसे लाइब्रेरियंस लोग अपने फैकल्टी को, अपने कॉलेज को, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को हेल्प कर रहे हैं उनकी विजिबिलिटी बढ़ाने में, उनकी प्रोफाइल अपडेट करने में, उनकी हेल्प कर रहे हैं आप डेटा सबमिट करने में. उसी तरह से अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग बहुत ज्यादा रिप्यूट जर्नल में पेपर नहीं पब्लिश करा पा रहे हो या कर पा रहे हो,
तो आप ओपन एक्सेस जर्नल में भी पब्लिश करना पेपर ट्राई कर सकते हो। ओपन एक्सेस जर्नल प्रीडेटरी नहीं होना चाहिए, उनके यहाँ रिव्यू, तो उसमें भी आप देखो ओपन एक्सेस का भी मोमेंटम धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब काफी लोगों, क्योंकि ओपन एक्सेस पेपर सबको एक्सेसिबल होते हैं, इसलिए वो पेपर अच्छे साइटेशन उनको रिसीव होते हैं। तो जनरल साइटेशन रिपोर्ट एक प्रोडक्ट है जो कि बेसिकली इम्पैक्ट फैक्टर आपको देता है। अगर आप बोलते हैं कि इस जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर क्या है, तो वो जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर यहाँ से आता है, जनरल साइटेशन रिपोर्ट से आता है, जो कि एक पेड प्रोडक्ट है। तो जनरल साइटेशन रिपोर्ट एक अकेला इम्पैक्ट फैक्टर या इन्फ्लुएंस करने वाला सिस्टम नहीं है, और भी दूसरे इम्पैक्ट फैक्टर जैसे पैरामीटर्स हैं, जिसमें SJR जनरल रैंक भी एक फैक्टर है। तो ये आपको इम्पैक्ट फैक्टर वर्ड नहीं यूज करता, इसको हम SJR बोलते हैं, SJR रैंक बोलते हैं। तो इसमें जिस तरह से जनरल रैंक हुए हैं, ऑलमोस्ट इस तरह से JCR में होते हैं, लेकिन इसका थोड़ा सा पैरामीटर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है। एक और रैंकिंग एफर्ट है जिसको हम CWTS बोलते हैं। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि इम्पैक्ट फैक्टर कैलकुलेट कैसे होता है, कैलकुलेट करने का देखिए बड़ा सिंपल तरीका है। अगर हम इम्पैक्ट फैक्टर कैलकुलेट करते हैं तो हम 2 साल का डेटा देखते हैं। फॉर एग्जांपल 17-18 का डेटा देखेंगे, 19 में कितने साइटेशन रिसीव हुए। उसी तरह से अगर हम एक और इंडेक्स होता है जिसको हम इमीडिएसी इंडेक्स बोलते हैं, अगर इमीडिएसी इंडेक्स कैलकुलेट करना हो तो सेम ईयर का डेटा देखेंगे। फॉर एग्जांपल 2019 में 2019 के पेपर जो पब्लिश, उनको कितने साइटेशन रिसीव हुए, उनको दूसरे लफ्जों में आप इस तरह से देख सकते हैं। वो ये है कि लाइक कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए यहाँ मैंने बड़े सिंपल तरीके से समझाया है। अगर आपको इम्पैक्ट फैक्टर कैलकुलेट करना है, तो फॉर एग्जांपल 2020 का इम्पैक्ट फैक्टर आपने कैलकुलेट करना है, तो आप देखेंगे 2019 और 18 में कितने पेपर पब्लिश हुए थे और उनको कितने साइटेशन रिसीव हुए। फॉर एग्जांपल 2019 में 21 पेपर पब्लिश हुए थे किसी जर्नल में, और 2018 में 19 पेपर पब्लिश हुए थे, तो टोटल 40 पेपर पब्लिश हुए 2018-19 2 साल में एक पार्टिकुलर जर्नल में, और उनको साइटेशन रिसीव हुए फॉर एग्जांपल 5792, 5792। So number of articles of previous 2 year is 40, that is 21 and 19, and तो impact factor क्या हो जाएगा, वेरी सिंपल, 5792 डिवाइडेड बाई 40, मतलब जो टोटल साइटेशन रिसीव हुए 2 साल में और उन 2 सालों में जो पेपर टोटल पब्लिश हुए उससे डिवाइड कर देते हैं, तो इस जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर 144.8 हो गया। बहुत सिंपल है ये। उसी तरह से अगर इमीडिएसी इंडेक्स हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो फॉर एग्जांपल हम 2020 का इमीडिएसी इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 2020 में 934 साइटेशन रिसीव हुए, 26 पेपर छपे थे, तो सिंपल 934 डिवाइडेड बाई 26 इज द इमीडिएसी इंडेक्स 35.92। तो डिफरेंस सिर्फ इतना है कि उसमें हम 2 साल का देखते हैं डेटा, इसमें हम 1 साल का देखते हैं। एक और चीज होती है रिलेटेडनेस इंडेक्स, जिसको हम ऑर्गेनाइजर थोड़ा सा 5-7 मिनट ज्यादा चल रहा है, क्योंकि मैं 20 में तो उसको नहीं छोड़ सकता, मतलब मुझे ठीक से ही बताना है, ठीक है। तो वी कैन टेक अप द क्वेश्चंस वंस आई एम डन विद माय दिस प्रेजेंटेशन। एक और रिलेटेडनेस इंडेक्स होता है जिसको आरमैक्स वैल्यू होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे सब्जेक्ट लाइब्रेरी साइंस में 2 जर्नल बहुत पॉपुलर हैं, एक डेसिडोक जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एक हमारा एनल्स ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन स्टडीज। तो एक जर्नल के पेपर दूसरे जर्नल को जो साइट करते हैं आपस में एक दूसरे को, तो वो बेसिकली रिलेटेडनेस इंडेक्स होता है। मतलब डेसिडोक जर्नल के अगर 10 पेपर एनल्स के जर्नल के जो पेपर्स हैं, ऑथर्स हैं, उन्होंने साइट किए, और एनल्स के कितने पेपर डेसिडोक जर्नल में लोगों ने साइट किए, वो एक आरमैक्स वैल्यू बन जाती है। दिस इज नोन एज रिलेटेडनेस इंडेक्स। उसी तरह से एल्सेवियर का एक प्रोडक्ट है प्योर, ये बहुत कॉस्टली प्रोडक्ट है, एक ही इंस्टीट्यूट सब्सक्राइब करती है आज की डेट में इंडिया में। सो ये आपको बहुत ही अच्छा रेडीमेड एनालिसिस दे देगा इस तरह का। इन प्रोडक्ट का नाम लेने का मतलब मेरा इन प्रोडक्ट को प्रमोट करना नहीं है, मेरा पर्पज ये है कि आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि आपके प्रोफेशन में मार्केट में क्या अवेलेबल है। उसी तरह से साइवेल करके एक एल्सेवियर का प्रोडक्ट है जो बहुत ही अच्छा आपको बेंचमार्किंग का डेटा दे सकता है। देन वेब ऑफ साइंस से एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है इनसाइट्स, ओके, तो इससे आप काफी अच्छे रेडीमेड कैलकुलेशन हासिल कर सकते हैं।
और अगर आप कुछ भी नहीं खरीद सकते तो गूगल स्कॉलर तो बढ़िया प्रोडक्ट है ही है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। गूगल स्कॉलर के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, आपकी एक जीमेल की आईडी होना चाहिए। वो जीमेल की आईडी को आप गूगल स्कॉलर पे इंटीग्रेट कर दें, दैट्स इट, 1 मिनट लगेगा। तो गूगल स्कॉलर में आपको 2 तरह से साइटेशंस मिलते हैं। एक तो साइटेशन गूगल स्कॉलर अपने आप ऐड कर देता है, दूसरा तरीका होता है आपको ईमेल आएगी, आप आइडेंटिफाई कर लो कि वो आपका ही पेपर है नहीं है। क्योंकि लाइक नबी हसन तो सैकड़ों नबी हसन हो सकते हैं पूरी दुनिया में जो पेपर लिखते हैं। मुझे ये देखना है कि जो पेपर ये ऐड हो रहा है मेरे अकाउंट में करेक्ट नबी हसन का है या नहीं है, नहीं तो आपके साइटेशंस बहुत सारे रॉन्ग हो जाते हैं। और कुछ लोग जानबूझ के ऐड होने देते हैं ताकि उनके साइटेशन ज्यादा दिखे, उनका एच इंडेक्स बढ़ जाए। सीएनआर राव का इसलिए मैंने एग्जांपल कोट किया कि ही इज परहैप्स द पर्सन हु हैज गॉट द हाईएस्ट साइटेशन एंड हाईएस्ट नंबर ऑफ पेपर्स। और ये इंडिया के तीसरे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनको अपने साइंटिफिक वर्क की वजह से भारत रत्न मिला। इससे पहले सीवी रमन और एपीजे अब्दुल कलाम को मिल चुका है। तो सीएन मैंने बताया था कि एच इंडेक्स हर प्रोडक्ट में सेम नहीं होता, सबसे ज्यादा गूगल स्कॉलर में होता है आमतौर से। जैसे एक 156 इनका एच इंडेक्स है गूगल स्कॉलर में, और 135 इनका स्कोपस में है, और 117 वेब ऑफ साइंस में है। उसी तरह से एक आई-10 इंडेक्स होता है। ये माइकल फॉकल इज द पर्सन हु हैज द हाईएस्ट एच इंडेक्स इन द वर्ल्ड एज फार एज गूगल स्कॉलर इज कंसर्न। दुनिया में सबसे ज्यादा एच इंडेक्स इस आदमी का है गूगल। और आई-10 इंडेक्स इसका आप देख रहे हैं कि 1645 है, मतलब इसके 1645 पेपर्स को एटलीस्ट 10 साइटेशंस मिले। आई-10 इंडेक्स का मतलब हमारे वो पेपर जिनको कम से कम 10 साइटेशंस मिले, तो इसलिए आपका आई-10 और एच इंडेक्स डिफरेंट होंगे। तो गूगल स्कॉलर का ही एक प्रोडक्ट है पब्लिश और पेरिश, जो कि फ्री है। आप उसका प्लस पॉइंट ये है कि उसको आपको इंस्टॉल करना है ऐप की तरह, और उसके बाद ये सारा गूगल स्कॉलर और माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक स्कोपस वेब ऑफ साइंस उसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं आप। तो इस तरह से आपके पेपर्स रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। और अब देख रहे हैं जैसे कि एक इसमें एचएस नबी भी आ गया है, ओके। और देखिए एचएस नबी के कई पेपर आ गए हैं, ठीक है। और इसमें कुछ ऐसे पेपर आ गए हैं जिसमें नबी या हसन नाम यूज हुआ है, लेकिन वो मेरे पेपर नहीं है। तो इसमें ये प्रोविजन है, बहुत आसान है कि आप उसको चेक अनचेक करके आप बता सकते हैं कि भैया ये मेरे पेपर नहीं, इनको बाहर कर। एक और जी इंडेक्स होता है जो कि गूगल स्कॉलर, ये लियो एगी ने दिया था 2006 में। बेसिकली गूगल जो जी इंडेक्स होता है जनरली आपके एच इंडेक्स से डबल हो सकता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पेपर्स को, हाईली साइटेड पेपर्स को ही कंसीडर करता है। अभी मुझे थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा, मैं डिटेल से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप लोग इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक ई इंडेक्स भी होता है जिसको कि जैंग ने दिया। द इंडेक्स वाज प्रपोज्ड बाय Chun-Ting Zhang in his paper The E-Index, complementing the H-Index for access citation। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा देख लें, थोड़ा टेक्निकल डेफिनेशन है। तो दिस इज ऑल्सो देयर। द इंडेक्स इज द बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ द surplus of citation in the S set beyond S2. So this is a technical definition, but the purpose is to tell you that there is an E index as well. Maybe next time when you are before me in an interview, I would like to ask you what is the difference between E index, G index and H index. Okay. इंस्टीट्यूट रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे क्यूएस रैंकिंग है, सबसे रिप्यूटेड है। तो एज ए लाइब्रेरियन आप हेल्प कर सकते हो। एकेडमिक और जो एकेडमिक और पब्लिक परसेप्शन और विजिबिलिटी होती है उसके काफी मार्क्स होते हैं, तो आप अपनी इंस्टीट्यूट को एज ए लाइब्रेरियन हेल्प कर सकते हो रैंकिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए और रैंकिंग अच्छी कराने के लिए। उसी तरह से टाइम्स हायर एजुकेशन की रैंकिंग है। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क। अगर हमारी इंस्टीट्यूट इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रैंकिंग है, तो हमें बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं। फंडिंग आसान होती है, प्रोजेक्ट मिलना आसान हो जाता है, कई बार रिसोर्सेज का एक्सेस भी मिल जाता है। उसी तरह से फैकल्टी प्रोफाइलिंग सिस्टम है। ये एक बेसिकली तो विद्वान में डेटा फीड किया जाता है, लेकिन फ्रंट पे आप IRNS के साथ इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, जो कि इन्फ्लिपनेट के पास प्रोजेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। और इसमें प्रोफाइलिंग बहुत खूबसूरत दिखती है। आप पूरा का पूरा डेटा आपकी सारी फैकल्टी का एनालाइज हो जाता है। और यही एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपको डिपार्टमेंट का भी एच इंडेक्स बता देता है। लाइक
लाइब्रेरी साइंस डिपार्टमेंट में 10 फैकल्टी है तो लाइब्रेरी साइंस डिपार्टमेंट का एच इंडेक्स क्या ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेता, और किसी प्रोडक्ट में ये नहीं होता। फॉर एग्जांपल यहाँ आप देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एच इंडेक्स मैंने निकाला है विच इज 100। तो मैंने सिंपली डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यहाँ से सेलेक्ट किया और मुझे रेडीमेड इंडेक्स मिल गया। उसी तरह से मैं किसी इंडिविजुअल को सर्च कर सकता हूँ यहाँ से, फॉर एग्जांपल यहाँ से, और यहाँ से क्लिक कर सकता हूँ, और इनकी अगर मैं व्यू प्रोफाइल में जाऊंगा तो बड़ी खूबसूरत इस तरह से पूरी प्रोफाइल दिख जाएगी कि ये नबी हसन है, इन्होंने 72 ऑथर्स के साथ अब तक कोलैबोरेट किया है, और इनके साथ जो काम करते हैं आईआईटी दिल्ली में वो शंकर हैं, विजय हैं, वनीता हैं, नीरज हैं। ठीक है, तो कितना आसान है देखिए, ये गूगल स्कॉलर से भी मेरी पूरी प्रोफाइल दिखा रहा है, स्कोपस से भी दिखा रहा है, और ये अपने आप ही सारा का सारा और से हर चीज से इंटीग्रेट कर लेता है, एक बार मुझे बस बनाने की जरूरत है। Vivo is another important tool for exploring scholarly works. Then आप पब्लिसिटी थ्रू इंस्टीट्यूट वेबसाइट भी कर सकते हैं, लाइक न्यूज़लेटर निकाल के फ्री ऑफ कॉस्ट। देन फैकल्टी अवार्ड्स की इंफॉर्मेशन आप लोग अपनी वेबसाइट पे शेयर कर सकते हैं, इससे इंस्टीट्यूट की विजिबिलिटी बढ़ेगी, पब्लिक परसेप्शन बढ़ेगा, रिसर्च आउटपुट की वैल्यू बढ़ेगी। देन डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूज़लेटर्स आप निकाल सकते हैं, लाइक ये हमारा इंस्टीट्यूट का न्यूज़लेटर है, एलुमनी अफेयर्स का है, ये हमारी इंटरनल वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन है, हिंदी का हमारा न्यूज़लेटर है, ये हमारी न्यूज़ क्लिपिंग सर्विस है। उसी तरह से जो डिफरेंट अचीवमेंट है फैकल्टी के, उसको हम डिफरेंट तरीके से सर्कुलेट कर सकते हैं, प्रेस रिलीज निकाल सकते हैं, ईमेल में शेयर कर सकते हैं कि भाई हमारे फला साहब को ये अवार्ड मिला, इसने ये अचीव किया। उससे के अलावा जैसे मैंने शेयर किया, डिफरेंट टाइप की स्मार्ट लाइब्रेरी सर्विसेज आप लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। और जैसे पेंडेमिक चल रहा है, अगर आप सारा का सारा क्लाउड पे माइग्रेट कर लेते हैं, बहुत सारे क्लाउड फ्री, जैसे ये बादल है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के लिए फ्री है, तो आप अपनी सर्विसेज माइग्रेट कर सकते हैं। पूरी लाइब्रेरी की रिसोर्सेज एक अच्छी वेबसाइट के थ्रू मैप कर सकते हैं, सिंगल विंडो सर्च से सारी रिसोर्सेज डिस्कवरेबल बना सकते हैं, अच्छी इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी बना सकते हैं, जैसे आईआईटी दिल्ली की हम लोगों की ये डी स्पेस पे है, जिसमें आप सारी रिसोर्सेज रख सकते हैं, तो लोग पेंडेमिक में भी देख पाएंगे। इसके अलावा इंस्टीट्यूट का जो पूरा का पूरा डेटाबेस है, लाइक आपकी सर्विस बुक है और दूसरे रिकॉर्ड है, उसको भी डिजिटाइज करके आप डी स्पेस के थ्रू एक्सेस दे सकते हैं। लाइक ये आईआईटी दिल्ली का पूरा सर्विस रिकॉर्ड सिस्टम है जो कि डी स्पेस पे बना हुआ है, और सेंट्रल लाइब्रेरी ने उसमें हेल्प की है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप अपनी इंस्टीट्यूट के थीसिस डिसर्टेशन अगर बड़ी साइट लाइक नेटवर्क डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ थीसिस इस पे अपलोड करा देते हैं तो उसकी विजिबिलिटी बढ़ जाएगी, या आप शोध गंगा में अपलोड करा दें तब भी विजिबिलिटी बढ़ेगी, या नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया से लिंक कर दें तब और अच्छी विजिबिलिटी हो जाएगी। आप अपनी प्रोफाइल को हेल्प करें कि वो अपनी प्रोफाइल बनाए रिसर्च गेट जैसे सिस्टम पे, या फिर दूसरी रिपोजिटरीज में कुछ अपलोड करें, या स्वयं पे आके अपना कुछ कोर्स ऑफर करें, या अपना यूट्यूब चैनल बना के अपने कंटेंट अपलोड करें जिससे आपकी लाइब्रेरी की इंस्टीट्यूट की विजिबिलिटी हो। Like IIT Delhi, we have given link to our all the content from our central library website. इसके अलावा वीडियो लेक्चर्स एनपीटेल के थ्रू आप डिलीवर कर रहे हैं, दोज आल्सो हेल्प यू इन पब्लिसिटी एंड पब्लिक परसेप्शन। उसके अलावा अगर विकिपीडिया पे अगर कोई आप अपनी लाइब्रेरी का पेज बना पाते हैं और वो टिक जाता है तो वो आपका एक हॉट केक हो जाता है, वो सर्च में गूगल में सबसे पहले वही आता है। लाइक मौलाना आजाद लाइब्रेरी एमयू का वेब पेज बना हुआ है, और साइटेशंस की अपनी फैकल्टी को नॉलेज बढ़ाएं, उनको बोलें कि साइटेशन बनाना कोई मुश्किल नहीं है, वर्ड में भी बन जाता है, बहुत सारे फ्री टूल्स हैं, वो घबराते हैं, तो उससे उनको पेपर लिखने में उनकी परसेप्शन में हेल्प मिलेगी, एकेडमिक विजिबिलिटी बढ़ेगी। डिफरेंट सिमिलरिटी टूल्स के बारे में अपनी फैकल्टी को बताएं, और कैसे फ्री में अपनी इंग्लिश करेक्ट कर सकते हैं वो भी आप बताएं। लाइक ये ग्रामरली है जो कि पेड है, लेकिन जिंजर है जो फ्री है, तो आप अगर गलत भी अंग्रेजी लिख रहे हैं फिर भी आप मतलब इन सॉफ्टवेयर्स के थ्रू इंग्लिश करेक्ट कर सकते हैं अपनी। उसी तरह से आर्टिकल अलर्ट सर्विस आप स्कोपस से शुरू कर सकते हैं। स्कोपस का एपीआई फ्री है, अगर स्कोपस नहीं भी आप सब्सक्राइब करते तब भी ये सर्विस आप फ्री में शुरू कर सकते हैं। रिसर्च पब्लिकेशन की डिटेल्स डाल सकते हैं आप अपनी वेबसाइट पे, डिफरेंट टाइप की रिसर्च सपोर्ट सर्विसेज शुरू कर सकते हैं। लाइक ये टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज का पेज है, इन बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइब्रेरियन। एंड जो भी आप अच्छे अच्छे प्रोग्राम करते हैं, लाइक डॉक्टर चौकसे ने इतने सारा ये प्रोग्राम किया, अगर ये कहीं अपलोड कर देते हैं उनकी पीपीटी या वीडियो,
तो वो काफी हेल्प करेंगे उन लोगों के लिए जो सुन नहीं पाए या बाद में सुनना चाहते हैं। डिफरेंट तरह के एक्सचेंज प्रोग्राम कर सकते हैं, लाइक अगर आपकी इंस्टीट्यूट में कोई डेलीगेशन आ रहा है तो उसके हेल्प से कोई कॉमन प्रोग्राम शुरू करें। यहाँ सब इन सब चीजों में लाइब्रेरियन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लाइब्रेरियन और लाइब्रेरी एक्टिव है तो बड़ी आसान हो जाती हैं चीजें फैकल्टी के लिए, कॉलेज के लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए अपनी विजिबिलिटी बढ़ाना और अपनी एकेडमिक प्रेजेंस बढ़ाना। और ये मैंने आपसे ऑलरेडी सब पहले स्क्रीन शेयर की कि आप डिफरेंट साइट पे अगर अपनी प्रोफाइल बना लेते हैं या अपनी फैकल्टी को हेल्प करते हैं तो उनकी विजिबिलिटी इमीडिएटली बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे मेरी 2 वेबसाइट्स हैं, एक तो IIT दिल्ली की ऑफिशियल साइट पे मेरी वेबसाइट है, एक मेरी पर्सनल है navihasan.in। दोनों में सेम कंटेंट है। मैं एक जगह अपडेट करता हूं अपना डेटा, दूसरी जगह मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूं। अगर मैंने इतनी जगह अपनी प्रोफाइल बनाई हुई है तो उससे क्या है, लाइक मैंने ऑर्सिट पे भी अपनी प्रोफाइल बनाई हुई है, विद्वान पे बनाई हुई है, माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक पे बनाई है, मेंडले पे बनाई है, पबलॉन्स पे बनाई है, एकेडमिया EDU, रिसर्च गेट, एनालिटिक्स आती हैं, गूगल स्कॉलर पे भी है, स्लाइड शेयर पे है, लिंक्डइन, फिक शेयर, सोशल नेटवर्किंग का भी मैं जुडिशियस यूज करता हूं। तो अगर ये सब कुछ मैंने किया हुआ है, अगर इतनी जगह मेरी प्रोफाइल अवेलेबल है, इसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता कॉपी पेस्ट करना, तो आपकी हिट्स बहुत अच्छी हो जाती है, आपकी विजिबिलिटी बहुत बढ़िया हो जाती है, आपकी प्रेजेंस ग्लोबली बहुत अच्छी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप गूगल पे नेविगेशन सर्च करोगे अभी भी तो ज्यादातर हिट्स मेरी ही आएंगी, जबकि आप भी जानते हैं मैं कोई बहुत बड़ा स्कॉलर या बहुत अच्छा लिखने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट किया हुआ है कि मेरी विजिबिलिटी काफी बढ़ गई है। तो अपने आप को प्रेजेंट करना भी एक बहुत बड़ी आर्ट है, अपने आप को शोकेस करना एकेडमिकली, जो दूसरों को बुरा भी नहीं लगे, जो दिखावा ना लगे, जिसमें घमंड ना हो, जिसमें थोड़ा सा अपनापन हो, वो भी एक इम्पोर्टेंट है। तो ये बहुत सारी रिसोर्सेस आपको ओपन एक्सेस जो रिमोट एक्सेस के थ्रू देनी पड़ती हैं, उससे वो चीज़ें हमें अपनी फैकल्टी को हेल्प करने की ज़रूरत है। और मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है, जो भी आप अच्छा काम कर रहे हैं या जो कर सकते हैं उसकी मार्केटिंग कीजिए, उससे आपको एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी खुश होगा, उससे हेल्प मिलेगी, फंडिंग में भी सपोर्ट मिलेगा। और जो भी आप काम कर रहे हैं, जिस जगह पे आप रहते हैं उस जगह के हिसाब से थोड़ा सा पब्लिसिटी भी करना पड़ती है। कहीं पे पब्लिसिटी करना बुरा माना जाता है, जैसे IIT दिल्ली में पब्लिसिटी बहुत बुरा माना जाता है, लेकिन जब मैं AMU में यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन था, आई वाज द ओनली 4th रेगुलर लाइब्रेरियन ऑफ AMU इन द 100-year हिस्ट्री। आई केम बैक फ्रॉम AMU बिकॉज ऑफ द फैमिली रीजंस, एजुकेशन ऑफ माई सन एटसेट्रा। तो वहां पे न्यूज़पेपर में ये सब निकालने का बहुत कंसेप्ट था, तो हम जो भी अच्छा काम करते थे उसको न्यूज़पेपर में देते थे और उससे अच्छी पब्लिसिटी मिलती थी। हमने बहुत अच्छे अच्छे काम किए और बहुत सारी फंडिंग मिली, लाइक वी क्रिएटेड द लाइब्रेरी म्यूजियम, और इसको जो बाराक ओबामा के एक एडवाइजर थे उन्होंने आके इनॉग्रेट किया। उसके अलावा कोई भी र्यूमर या कोई बात उड़ती थी तो हम उसको क्लैरिफाई करते थे, मीडिया भी आता था, तो हम लोग पॉजिटिव कवरेज देने की कोशिश करते थे। जो भी आप कवरेज दे रहे हैं वो पॉजिटिव होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए, और उससे आपको लाइब्रेरी को और लाइब्रेरियन को काफी अहमियत मिलती थी। मान लिया फॉर एग्जांपल अगर कोई न्यूज भी छपा तो उसमें वाइस चांसलर के साथ लाइब्रेरियन को भी अहमियत मिलती थी, क्योंकि लाइब्रेरियन एक उसमें पॉजिटिव रोल प्ले करता था। और हम लोग चाहे ट्रिप एडवाइजर हो कुछ भी हो, अपनी लाइब्रेरी की प्रेजेंस हमेशा रखते थे, हमारी हर रेटिंग हमेशा आगे रहती थी। बट द बेस्ट कम्स फ्रॉम द लाइब्रेरी रीडर्स। अगर लाइब्रेरी रीडर्स, आपकी आपकी फैकल्टी, आपके रीडर्स, आपका प्रिंसिपल, आपका एडमिनिस्ट्रेशन अगर आपकी तारीफ कर रहा है, आपके काम से खुश है, तो सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट आपके लिए वही होता है। लाइक ये लड़की वैशाली जिसने IAS क्लियर किया था मेरे टाइम में, उसने पेपर में स्टेटमेंट दिया था, आप देखिए ये हिंदुस्तान टाइम्स का न्यूज है, उसने क्रेडिट मौलाना आजाद लाइब्रेरी जो AMU की सेंट्रल लाइब्रेरी उसको दिया कि इस लाइब्रेरी की वजह से मैं IAS क्वालिफाई कर पाई। So with this, I would like to thank you that there are some data visualization tool which you can explore. और citation कैसे बढ़ते हैं, जो चीजें मैंने आपको बताई वही हैं, but I have summarized all those things in text form as well. And with this, I would like to thank you, the resources, services, and products that I have showcased you in this limited time. You can further explore it as and when you find the time. Thank you very much.
थैंक यू सो मच नबी सर। आई नो थोड़ा सा आपको रश करना पड़ा, हमारे पास टाइम आज कम था, बट आपने फिर भी एक बहुत अच्छा ओवरव्यू दे दिया सर हमारे पार्टिसिपेंट्स को, और सभी का बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है चैट पे, एंड दे आर रिक्वेस्टिंग फॉर अ कॉपी ऑफ अ प्रेजेंटेशन फॉर विच वी विल गेट इन टच विद यू। कुछ क्वेश्चंस हैं सर, ज्यादा नहीं है, फटाफट से ले लेते हैं उनको। जी 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 सर, एक तो ये कि मुझे ये क्वेश्चन इनका थोड़ा सा पेचीदा लगा कि कुछ रिमोट एरियाज में लाइब्रेरीज है जहां पर एक सिस्टम तक नहीं है, और ये कोविड टाइम पर ऐसी लाइब्रेरीज में जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट ना हो, वो कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं? बिकॉज स्टाफ का भी ध्यान रखना है, यूजर्स का भी ध्यान रखना है, और अभी वैक्सीन आ गई, पता नहीं उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, बट ऐसी सिचुएशन में जो हमने पिछले कुछ वक्त देखा, विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिससे लाइब्रेरी सुविधाएं जारी रखी जा सके? देखिए, मैं तो ये कहूंगा जहां चाह है वहां राह है। ठीक है। अब मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल दिखाए। एक तो किताबों वाली दीदी का दिखाया, वो देखिए अपने स्कूटर पे किताबें लेके, मतलब लाइव लाइब्रेरी लेके चलती हैं। वो एक टीचर हैं। मैंने आपको हरप्रीत कौर की स्टोरी सुनाई, जो आईआईटी रोपड़ में SLIE हैं, लेकिन जहां वो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं वहां कोई बहुत ही ज्यादा गरीब बच्चे हैं, उनके पास कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है उसको। तो मतलब आपको सब कुछ तो एकदम हाथ में नहीं मिल जाएगा। आपके पास जो भी मिनिमम फैसिलिटीज हैं उस उसको ध्यान में रखते हुए आप जो भी बेसिक एक सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती हैं, मोटिवेट कर सकती हैं लोगों को, वो दें। इसके अलावा देखिए बहुत सारी एजेंसीज हैं, आई डोंट नो आप कैसे अप्रोच कर पाएंगी। जैसे राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन है, वो तो मतलब दिल खोल के बैठे हुए हैं प्रोफेसर AP सिंह एंड कंपनी की। आप बताइए तो अपनी इशू, आप बताइए तो आपको किस चीज की जरूरत है। बहुत सारे सिस्टम्स हैं, तो ऐसा नहीं है। मतलब अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करें आप क्या करना चाहते हैं, तो मिनिमम रिसोर्सेज में भी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। बहुत सारी NGOs हैं जो आपकी थोड़ी सी फंडिंग नीड पूरी कर सकती हैं। और पहला ही स्टेप लेना मुश्किल होता है सर, पहला स्टेप ले लिया तो फिर लोग जुड़ते जाते हैं। भाई आप देखिए, जो IIT रोपड़ की लड़की है डॉक्टर हरप्रीत को, उसको क्या जरूरत है भाई लोगों को जाकर जाके किताबें देती है, उनका ख्याल रखती है, रिसोर्सेज देती है। उसको क्या जरूरत है? वो अपनी आराम से IIT रोपड़ में बैठ के लाइफ गुजार सकती है, लेकिन वीकेंड पे जाती है, लोगों की सेवा करती है। जी तो ये तो हमारे ऊपर है, पर्सनल परसेप्शन है कि हम किस तरह से अपनी चीजों को एडजस्ट करते हैं। सर, एक डॉक्टर राधा ने एक सवाल पूछा है कि पॉलिटेक्निक कॉलेज में ई लाइब्रेरी सेवाएं कोविड-19 के मद्देनजर किस प्रकार से रीडर्स को दे, और क्या क्या सावधानियां भी रखने की जरूरत है? देखिए, जहाँ तक पेंडेमिक का सवाल है, पॉलिटेक्निक लाइब्रेरी का सवाल है, मेरे ख्याल से इनके यहाँ मुझे लगता है कनेक्टिविटी तो होगी। अगर इनके यहाँ कनेक्टिविटी है तो मुझे लगता है कि अच्छी खासी रिसोर्सेज तो फ्री हैं। आप देखो, जो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है, उसके थ्रू साउथ एशियन आर्काइव्स जो है, लाखों किताबें, मतलब वो आपको लग रहा है फ्री है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसका पे कर रही है। ठीक है, तो वो है। बहुत सारी ऐसी रिसोर्सेस हैं। तो आप किसी तरह से, जैसे शिवोले जैसे रिमोट एक्सेस सिस्टम है, इसके थ्रू अपने यूजर को रिसोर्सेज फैसिलिटेट कर सकती हैं। ये और कोई सर, अब तो आईआईटी के माध्यम से बहुत सारी वर्चुअल लैब्स भी बन गई हैं, और अगर पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के नज़र से देखा जाए तो लैब जैसे उनके लिए ज़रूरी है, तो उसका भी एक्सेस अब वर्चुअल बनने लग गई है ये लैब्स भी। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ कि मतलब हमें जो है ना, एक कदम आगे बढ़ाना थोड़ा मुश्किल होता है। एक बार हम एक कदम आगे बढ़ा लें, उसके बाद आप देखें कि मतलब रास्ता बन जाता है। अब मुझे, अगर मैं अपने बारे में सोचूं, मान लिया मैं ऑलमोस्ट 18 घंटे काम करता हूँ, मुझे क्या जरूरत है 18 घंटे काम करने? मैं तो लाइब्रेरियन कब का बना हुआ हूँ, आगे कोई प्रमोशन नहीं है, कुछ नहीं है। तो एक भूख होनी चाहिए हमारे अंदर। हम लोग वर्कोहलिक हैं, हमें काम में हम लोग जब काम करते हैं या जो एक्टिविटी ये करते हैं, हमें इतना मजा आता है जिस तरह से आपको शोले मूवी या 3 इडियट मूवी देखने में मजा आता है। तो एक भूख होनी चाहिए, एक चाह होनी चाहिए। ठीक है, तो आपका जो अगर शौक है कुछ करने का और कुछ आप कदम बढ़ाना चाहते हैं, तो कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप सोचते ही रह जाएंगे कैसे होगा कैसे होगा, तो बड़ा मुश्किल है। जी सर। सर, एक आखिरी क्वेश्चन ले लेते हैं। सुप्रिया का है ये कि फैकल्टी प्रोफाइलिंग सिस्टम जो INS है, इसको कैसे इनिशिएट किया जाए, और क्या फैकल्टी इसमें कोऑपरेट करती है आपके एक्सपीरियंस में,
उनसे पूरा सहयोग मिलता है? हाँ, इसमें तो खैर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखिए एक विद्वान करके डेटाबेस है, ठीक है। तो या तो फैकल्टी का डेटा उतनी सबकी प्रोफाइल क्रिएट करके आप प्रोफाइल का डेटा डालें, मतलब उनका जो शॉर्ट सीवी है वो डालें, लाइक उनके पेपर्स और वो सब डिटेल, या तो वो डालें, या आप डाल लें, उसके बाद फैकल्टी को एक्सेस दे दें कि भाई आपका लॉगिन पासवर्ड सबका इंडिविजुअल होगा, ये है, आप अपना डेटा अपडेट कर दें। तो बैकएंड पे आप सारा विद्वान में डेटाबेस डेटा डाल दें, आपके पास जो भी 10 20 30 40 50 फैकल्टी है, ठीक है। उसके बाद इन्फ्लिपनेट से कम्युनिकेशन कर लें और उसके साथ इंटीग्रेट करा दें, तो आपका विद्वान में भी डिस्प्ले होगा, आईआरएनएस में भी हो जाएगा। और ये दिस ऑल इज फ्री ऑफ कॉस्ट एज ऑफ नाउ। फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेयर कर रही है, आपको 5 पैसे नहीं लगेंगे, बस आपको कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है, और आपको जील होना चाहिए। फैकल्टी क्यों नहीं कोऑपरेट करेगी भाई? फैकल्टी जो भी चीज उनके पब्लिकेशन जो भी हैं जो ठीक हैं वो तो आपके साथ शेयर करेगी, वो भी चाहेगी उनकी विजिबिलिटी बढ़े, वो भी चाहेंगे उनको साइटेशन मिले, वो भी चाहेंगे उनको सिलेक्शन में ये चीजें हेल्प करें। तो बाकी देखिए एक्सेप्शन तो हर जगह होते हैं, जो एक्सेप्शन है उनको इग्नोर कर दें थोड़े टाइम के लिए। जी सर। नबील सर, मैं AICTE RGPV और पर्सनली आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने अपने शेड्यूल में से ये 2 घंटे का वक्त निकाला हमारे लिए और हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए बहुत उपयोगी रहेगा ये। और आपसे जुड़े रहेंगे। आप उम्मीद करते हैं आने वाले सेशंस में भी आप, अगर आपको समय मिले तो आप जरूर आएंगे, अपनी पार्टिसिपेशन देंगे। और स्पेशली हम RGPV E-लाइब्रेरी पर जो सेशन करने वाले हैं हम उसके लिए लिंक आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप आए उस पर हमें अपने सुझाव दें कैसे हम उसको, उस इनिशिएटिव को आगे ले जा सकते हैं। अभी उसमें 1,80,000 बच्चे रजिस्टर्ड हैं जो यूज कर रहे हैं। आपको यूनिवर्सिटी E-लाइब्रेरी सिस्टम सबसे बड़ा बन गया है इंडिया का, और लगभग 22,000 बच्चे उसमें रोज लॉग इन करके, 22 से 23,000 बच्चे लॉग इन करके रोज पढ़ते हैं। नहीं, अमेजिंग है वो, अमेजिंग है। हमने अभी बस शुरुआत करी है। हम चाहेंगे आपका सहयोग, आपकी गाइडेंस हमें मिले। और इसी के साथ सर इस सेशन का एंड करते हैं। अगेन सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। ठीक है, चौकसे जी, RGPV आपका, मोहित जी और संदीप पाठक का मैं स्पेशली यहाँ थैंक करना चाहूँगा। संदीप शायद है नहीं जुड़े हुए अभी, क्योंकि वो जोड़ के रखते हैं सब लोगों से। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, एंड आई वुड like to continue my association with you all, and let's hope we will be together in some other event soon. Thank you. थैंक यू सो मच सर। मेरा पार्टिसिपेंट से यही अनुरोध है कि हम ऑलरेडी लिंक डाल चुके हैं इस फीडबैक सेशन के लिए, और ये फीडबैक, ये सेशन नंबर 14 था। और आप अपनी चैट में अगर देखेंगे तो मैंने फिर से एक बार ये शेयर किया है। सबसे अनुरोध है प्लीज वो इस फीडबैक को जरूर भरें। और आई विल शेयर इट अगेन, या प्लीज इस फीडबैक लिंक को जरूर भरें। और इसी लिंक के पे जो आप फीडबैक दे रहे हैं इसी को हम एज अटेंडेंस काउंट करेंगे। आप सबसे मुलाकात कल होगी। अगेन मैं ये मीटिंग को अगले 10 से 15 मिनट के लिए ऑन रखूंगा, इस उम्मीद में कि आप सब लोग इस फीडबैक लिंक को भर देंगे अगले 15 मिनट में। और उसके बाद हम इस मीटिंग को भी एंड करेंगे और फॉर्म, जो हमारे फीडबैक फॉर्म है, उनको भी क्लोज करेंगे। आप सभी से अलविदा लेता हूँ। कल हम सुबह फिर मिलेंगे 10:30 बजे। आप सबके पास मीटिंग लिंक पहुंच जाएगा 8 से 9 बजे के बीच में। जरूर जुड़िएगा। और कल भी हमारे साथ बहुत गुडी एक्सपर्ट्स हमारे टॉक्स शेड्यूल्ड है कल भी। और आप चाहे तो YouTube पर भी आज की पूरी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। मेरे से अभी एक यूजर ने मांगा है तो मैं ये लिंक शेयर कर रहा हूँ। ये YouTube पर भी आप लाइव स्ट्रीमिंग पूरे दिन का देख सकते हैं। आज के सभी 5 सेशन आप इस YouTube लिंक पर भी देख सकते हैं। आप सबसे कल मुलाकात होगी। फीडबैक लिंक को भरना मत भूलिएगा। 15 मिनट बाद हम इस मीटिंग को एंड कर देंगे। धन्यवाद।
So friends, we are now closing the meeting. Thank you all for your participation today. We will come back tomorrow. Have a good day of rest and